Welcome everyone. This is day two of Urdu Hindi Bootcamp. I am Yavar Iqbal. I have joined you from Melbourne, Australia. We have our next speaker, Lisa Crosby. Lisa just have joined us, and I will bring Lisa to stream. Hi, Lisa. You are live now. How are you doing today? Thanks. Very well. Thank you. Also from Melbourne, Australia. Lovely to be here. Lisa, I can't hear you. Maybe your mic is it mute or It shouldn't be. Is that better now? yeah, it's better. It's better now. Sorry, Lisa. It's let me see if I can unmute you. You will need to unmute yourself. How are we doing Yeah, now? it's good, beautiful. Thank you so much. Really appreciate. And before starting, I will quickly introduce Lisa. Lisa is Microsoft MVP from Melbourne, Australia. Microsoft MVP, Microsoft certified trainer, and Power Platform Dynamics 365 evangelist. And if you are a fan of podcast, you will probably aware Lisa run a podcast. So with that, I will leave stage in your hands, Lisa. Please, thank you. Thanks very much, Yoa. Hi. Good afternoon, good evening, everyone. Welcome to this session. I'm going to take you through my top 10 features. And I'm going to do something a little bit different here. If you've seen some of my YouTube things, I do quite a lot of work on top 10 highlights, but I've actually done something a little bit special here that's different from what I've done before. So strap yourselves in. We've got about half an hour to go through all this. So welcome to this amazing event. We've got tracks in different languages here. Obviously, I'm presenting in English. This is me. My name is Lisa Crosby. As Ya was saying, I was a host of the Up podcast. You'll find me on YouTube and all over various social media channels and so on. So as I said, I've done a fair bit of work in the last 6 months going through top 10 new features. So every time there's a new release wave or an event, I've gone through and summarized the top 10 features. So what I've got here for you today is my top 10 of kind of everything that I think is going on for the year. So I've stepped it back a level to say, what are the top 10 features that you can look forward to that are really those core top 10 themes that we are working with this year? So just to give you the lay of the land of where I'm coming from here, it used to be, I've followed the new releases really closely for the last couple of years, and it used to be that we would get the Wave 1 release in January and the Wave 2 release around this time of the year in July, and we still get those things. But the thing I've noticed is, especially since we've switched to the world of virtual events rather than in-person events, is that Microsoft is really saving the big announcements for the big events. So reading the release notes sometimes feels a little underwhelming, and then you go to an event and there's your big announcement. So what I've brought together today is all of these things. We had the Wave 1 release in January, which is everything that goes from April through to September. Then what we have in March is Ignite, and there are some substantial announcements out of Ignite. Number one actually came out of Ignite. In May, we had Microsoft Build and the Microsoft Business Application Summit, MBAS. And then in July, we got our Wave 2 release notes. That's only happened in the last couple of weeks. So there's some things in here that are really hot off the press, as well as Inspire, which is a partner conference that not everyone's at, and a couple of really important announcements that snuck in there too. So this is my top 10 across all of these things rather than just from the Wave 2 release. And I'll tell you as we go through where each of these things came from. All right. Now, number one, if you followed anything I've done or you've listened to the podcast or whatever, you'll know this is my favorite topic. This was one of my top picks from last year and continues to be my top pick. You'll also know that when I do a top 10, I do tend to cheat a little bit and give you a couple of bonus topics. So number one here has about 4 different subtopics in it. Don't say you don't get good value. So number one here is all about Dynamics 365 and Teams. And in bringing together all of these different events and announcements, I'm really trying to bring you those big themes. And this is absolutely a big theme for those of us who work in this space. This really changes the game. For customers in this space, you're getting a heap of extra things in terms of having a system of collaboration and a system of record in the one place. As I said, this is a little bit of a 4-for-1 here. So I'm going to talk through the announcements that we've seen and things that are forthcoming in that Dynamics 365 and Teams integration.
So the first one here is embedded chat. This was announced at Ignite. So you'll see there we have a pane down the right-hand side of Dynamics with the chat in it. This has got all of the different relevant chats, as well as suggested chats and suggested channels and relevant channels. And you can see there as well, just next to that, there's a little pop-up window which has a chat going on in Teams. Now, the other user there may not be a Dynamics 365 user. They might just be having that chat in Teams in the flow of their work. And that chat window gives you that full feature of the chat experience in Teams. So you've got your GIFs and emojis. If you're using those things, you can upload documents and have the chat in context. So this is something that really makes a huge difference for customers working with this and as consultants working with this, is that we've got that experience now of collaboration embedded in Dynamics, and also the experience of people being able to use it in Teams. The next thing, and this is a really important sort of side to this, is that we have got collaborative apps in Teams. So we looked at it from the Dynamics side. Now we go over and have a look at it from the Teams side. And this one was announced just at Inspire, which is the partner conference that happened in July. The important thing of what I'm showing you here is that you don't need to purchase Dynamics 365 licenses for people in your organization to be able to use this functionality in Teams. This is a game changer for working in this space. There's nobody else who's offering anything like this, that ability to allow other users across the whole organization to collaborate on the Dynamics 365 data from within Teams without having to be licensed. And obviously, your sellers using the full feature of the product still have to be licensed. But if you've got a seller who needs to work with, say, product specialists or marketing specialists or whatever behind the scenes, then that can happen inside Teams. So we've got a screenshot here as an example of somebody looking at a particular deal, adding in a comment. You can actually edit the data and so on in there as well. So the experience goes both ways, and this is very much part of this integration, that you can work with that Teams chat in Dynamics 365, but also from in Teams, you can work with that Dynamics 365 data. We've also got Teams calling embedded in Dynamics 365. So that ability to make that phone call in the context of the CRM and the transcription that comes through. And this starts to look a little bit like magic, because we get that automated transcription and then a report at the end which summarizes what's happened. It pulls out sentiment and key action points and all sorts of things, which really takes a heap of work off the salesperson, allows them to focus on the call rather than having to transcribe all of that. This one might almost be my favorite, and this is the fourth of the four here. I haven't got four for every top 10, don't worry. I always spend a lot more time on the bigger ones up front and a little less as we go through. But this is Teams meeting integration. This was also just recently announced. This is, you imagine you're in a Teams call, so we're doing all of this remote selling and remote sales calls. And what we've got down the side here is a Dynamics 365 pane. Think of this a little bit like when you're working in Outlook and you have the Outlook panel down the side, the Dynamics panel down the side in Outlook. So you're in Outlook and you see the Dynamics information. It's not unlike that. What we've got here is all the information about the opportunity. So imagine I've been brought into a call to help with working on an opportunity with my sales colleague. I've got all the information there about, what the close date is, what the estimated revenue is, as well as the people who are involved and their job titles. I can see relationship health, I can see activities, the next activity, and so on, and notes about what's going on, and also add notes, which will go straight back into Dynamics 365, all in the context of that meeting. All right, that's the end of number one. Let's have a look at number two here, which is a big piece that comes out of the marketing space, which is customer journey orchestration. So this was first announced back at Ignite again in about March. And this really rethinks the concept of marketing automation, but it's not just marketing. This is now going to overlap with sales and service. And this is why I put this one up very high, because it starts to reinvent that idea of this is not just a marketing space. And this is all about real-time event-based triggers rather than traditional marketing automation. We say, let's grab people who are like and put them in a segment together and then put them on a journey of particular communications. This can take particular events that happen. Someone clicks on an email, of course, or visits a website, or maybe they check in on your app, or they scan through at an event, or
come onto your Wi-Fi or whatever, pretty much all of those things you can start to enable here. So you've got this real-time triggering and then AI involved in the journey to give people that absolutely personalized experience. So this was one of the bigger announcements from earlier in the year. This is in preview at the moment, hopefully generally available fairly soon. The thing that we're seeing that came through in conjunction with this in the Wave 2 release, which is one of my top picks from the Wave 2 release, is that you will be able to use this with Flow. So if I skip back a bit here, this is the journey designer that we get. We will be able to actually trigger cloud flows using Power Automate from inside here. And this is where this starts to get much bigger than just marketing now, because you can orchestrate tasks, events, all sorts of things to happen. The screenshot I've got here is actually showing you what's going on underneath the customer journey. So when you build out that new customer journey in the customer journey orchestration tool, without you doing this, it's actually building it as a flow under the hood. And that's what's enabling what's going on there. Super clever, and heaps of things that we're going to be able to do with that one. At number 3 here, we have custom pages for model-driven apps. Now, the next 3 features are all kind of getting into the Power Apps and model-driven apps side of things. I'm covering Dynamics and Power Platform here. I should say I'm covering Dynamics sort of from the customer engagement point of view, rather than the F&O side, which I will leave to people who know far more about that than me. So what we've got here is custom pages for model-driven apps. Now, this one was announced at the Microsoft Business Application Summit, and there's just been a blog about this one on like the 27th of July just this week. This is about the convergence of Canvas and model-driven apps, and this is huge because we are getting to a point in the future where we won't think about Canvas apps, model-driven apps. It's all just Power Apps, and we have the tools of both available to us. So what's announced here is the ability to create a custom page for a model-driven app, which means you can use the tools of the Canvas app, the drag and drop, the pixel perfect, the connect to other data sources to create a custom page for your model-driven app. So if you want to start creating things like landing pages or different kind of processes to be optimized, bringing productivity tools in there as well, there's heaps that we're going to be able to do here. And this is a screenshot of one of the examples that was presented at the Microsoft Business Application Summit. Haven't had time to get in and have a play with that myself, but there's going to be heaps that we can do in there. All right, at number 4, another Power Apps thing here, which is Power FX for model-driven apps. Now, we know that when we're working in Dynamics 365 or a model-driven app, if you want to customize what's going on inside there with things like the command bar, that's not possible to do without external tools or code. And there are some great tools that we've been using to work with that. But you need that sort of professional developer skill set. So what we're seeing is the ability to use PowerFX, which is the low-code language that's used in Canvas apps, that Excel-like formula language, to write formulas for model-driven apps as well, which means you can create things on the command bar without needing to use JavaScript or other tools. And the other part to this, and I should say these slides are directly the Microsoft slides from the Business Application Summit, is Dataverse calculated columns and PowerFX. So we're getting a much better experience, I dare say, than the legacy experience of doing calculated columns and roll-ups and so on, where you can actually use the expression language in there to do those calculations as well, which I'm expecting will open up a heap of additional features, as well as being much easier to work with. All right, nearly halfway here. At number 5, we have no code apps. I'm really excited about this one. This one is getting into this world of natural language, and we see this as a core theme across a heap of things. It pops up in the marketing segmenting. It's popping up in Power BI as well to write DAX formulas with no code. So this is something that we're really just at the start of this natural language journey, where we can use these tools instead of having to write code. So there's 2 aspects to this. One of these is using GPT-3, which is written by OpenAI. It's a huge natural language processing I don't have the word for it. It's a huge resource that's used behind the scenes here, so that you can actually just type natural language in there, so that you don't have to come up with those PowerFX formulas. So as much as PowerFX enables a low code experience,
I talk to new users all the time. That experience of getting on board with that and learning it is still quite a leg up to get into building these things. And so this is an idea where you can start to type that in natural language and it will construct the formula for you. So that opens it up to even more people. Also shortcuts things for those of us who do write the formula language to be able to get there perhaps a little bit quicker and a little bit more easily. And then the other side of this is program by example using prose. And this is about where you've got things where you need things in a certain format. If you want to be adjusting date formats or working with something where you've got, say, the person's name and you want it to just be the first name and the first initial or something like that, that you can use examples to do the formatting, again, rather than having to construct formulas from scratch to do that formatting piece. Now, at number 6, we have the Deal Manager workspace. I'm switching now back into the Dynamics 365 world, and this is Dynamics 365 Sales. When this one was first announced, it was called the Pipeline Manager workspace. It's now called the Deal Manager, so you might see it referred to in both ways. This was announced in Wave 1, and then it also appeared in the Wave 2 release. And essentially what this is a new dashboard feature that allows the seller to do a heap of things, and also announced in the Wave 2 release, a new, proper, thankfully, editable inline experience. Because I remember how excited we were when the editable grids first came through. They haven't, they're not as awesome as we might have hoped. So what we have on the screen here is a preview of this new Deal Manager workspace, and you'll see this allows you to view and work with lots of different things on the screen. So we have metrics at the top there of key metrics that we, might be looking at as sellers, as well as charts. We have down the bottom this editable grid. So the experience here is that you can inline actually edit things. So this allows you to change lookup fields, change dates, change things, and honestly, a much better experience than we're getting in the current editable grid. And as part of the Wave 2 release, what's been announced is that functionality will be available for some of those data tables. I think it's accounts, contacts, and it's either opportunities or leads off the top of my head that we'll be able to use that for. So we're actually getting out of this piece of work an amazing dashboard that allows sellers to work more easily, but also that vastly improved functionality that really lifts the user interface. What you'll see down the side there, that side pane is also part of this, so we can actually edit things. So you imagine at the moment, if you're a seller and you're working with opportunities and you've got your view, like you're on a dashboard, you're clicking through, but you've got a view of opportunities in the system, you really have to click in and open it up to work with it. So the idea here is you're working from a dashboard that's giving you all of those key metrics right there, and you can click on one of those, you can edit in line, but you can click on it and have that side panel and actually edit in the side panel, and then just click on the next one and edit in the side panel. So we're working from this single view and this single screen rather than that kind of clicking in and out. I worked as a sales manager for a long time. Certainly anything that helps sellers do their data entry without pain and puts it right in front of them in that way, always, always a top feature in my book. All right, now this one is a bit of a hybrid of things. This is at number 7 here, industry clouds and components. So the industry components was probably the announcement piece that came out of Build. There were quite a lot of announcements out of Microsoft Build, actually. That was one that was traditionally very pro-developer, but now that we start to look at, all kinds of developers being included in Build, a lot of those announcements about Power FX and so on came out there. If you haven't been keeping up with the notion of industry clouds, get onto it. This is huge. Microsoft is investing very, very heavily in this industry solution, industry cloud space. We have got or will shortly be seeing industry clouds for healthcare, manufacturing, retail, financial services, and nonprofit over the course of this year and into next year. And the industry clouds are really bringing together a lot of different pieces. So when you see the demos and things of them, you go, oh, that's Dynamics. But
more than Dynamics. So what we're getting is something that is Dynamics 365 plus Azure and a heap of AI underneath, plus Teams, plus the Microsoft 365 stack in there as well. So there's a lot of things going on, but they're really pulling all of these resources together so that we can work in industry verticals and have all of that IP pretty much ready to go and, of course, configurable. And so what we saw it build was this notion of industry components. This is an example of one from financial services, where because they've built all of these pieces, then these components can actually be reused. So if you have the notion of a customer 360 in financial services, where you might be looking at different events about the person's life and their likelihood to churn in their financial situation and key metrics and so on in finance, then you can basically lift that customer 360 and use it in your own app rather than having to build it from scratch. So there's a heap going on in those industry solutions and those industry clouds. As I said, if you're not across this, make sure you get across it this year. This is it's going to be absolutely huge if it's not already. At number 8 here, we have Power Automate Desktop. Now, this is not new in itself, but there were 2 new announcements, one from Ignite and one from the Wave 2 release that I wanted to point out here. And I think this is another one of these things where I'm going to say get across this if you haven't already. Power Automate Desktop is the robotic process automation functionality in the platform. So within Power Automate, we have the ability to do cloud flows, we have the ability to do those business process flows, and now in addition to that, we have this RPA, robotic process automation functionality. Essentially what that allows you to do is to automate across systems where you can't connect via an API for whatever reason. So you can do recording of your keystrokes and mouse movements and clicks and so on, and they get replayed. So that allows you to automate across legacy systems. It allows you to automate across web-based systems and those kinds of things where you can't do it in that way. And this really gives us an edge in this space where, other RPA services don't have the traditional kind of APIs in there and vice versa. So we can actually get the best of both. And that's where this Wave 2 release comes in, because what we've seen announced in the Wave 2 release is the ability to use connectors with Power Automate Desktop. So all of those connectors that are available in the platform, and it's up to like 475 now, will be available here. So you don't have to build a separate cloud flow. You'll be able to go from where you are and use those, including to Dataverse, which makes that a very easy experience when working with our model-driven apps and Dynamics 365. The other thing that's really important here is one of the other announcements that's been made this year is around making Power Automate Desktop available free, obviously not with all the premium connectors, but free to Windows 10 users, and that will be Windows 11 as well now. So what that does is basically opens up a huge market of people who are going to discover this in the same way we've seen with people discovering Power Apps through their productivity tools. This is going into Windows. So I can see there's going to be absolutely huge kind of growth in this market and interest in this tool once it's in the hands of all of those Windows users. So really important one for us to be aware of. At number 9, we have the concept of no-code personalization in marketing. Now, this might not seem like a huge deal. I do a fair bit of work in the marketing space, and if we think back to my number 2 feature, which was that customer journey orchestration, we really have a huge shift this year in the platform around investment in and new tools in marketing, which is why I'm calling this one out as well, because it flows on from that. We're seeing a lot more coming in that marketing space. This unique proposition of the sales and marketing tools being on the one platform, Teams webinars integrated with Dynamics Marketing. So Dynamics Marketing is becoming a bit more of a player in all of this. And this is one of the really important pieces that I see coming through with the marketing side is personalization, because everybody wants to be able to personalize those communications out to their customers. This is something that we see happening, especially with this customer journey orchestration come through, that we're not just doing megaphone style communications anymore. The desire is
is to have very highly tailored, highly personalized communications. And there's been some capability to do that already, but you've had to kind of get into code in order to be able to do more of it. And what we're seeing very soon, I believe, is this feature coming through, which is the ability to personalize down to 6 levels in your data, so that you can start to do things like we see here, where we've got like a, here's your passenger name, but then you can go down a level to the booking code and the flight number and so on, and bring in those personalized fields from other data tables in the system. And last but not least, we have the Sales mobile app. Now, it might seem strange in a remote working world to be excited about the mobile app, but I actually think we're all still using our phones. I'm still using plenty of apps on my phone, even in lockdown. That experience of being able to do things on your phone is something that people really love to do. And what we always had in the past with the mobile app was actually something that was more like just a reversioned experience of the web-based app. So in the past, we would have, you're just looking at the same experience as what you had before. And what we're seeing with the new mobile app, which was launched earlier this year, is something that's properly designed as a standalone application. It's free. You connect it to your Dynamics 365 environment, is putting the things that the seller needs right front and center. And as I said earlier, anything that makes it easier for sellers to keep their data up to date, always a winner. So what this is doing is showing you a bit of an example of what it looks like at the moment, where we've got a very, front and center. Here are these things. Here are my key customers. Here are my recent customers. Here are my upcoming meetings. I can prepare for a meeting by going in and seeing what's going on and getting all of the information about the customers who are involved and the key parts of the opportunity. I can take notes in there as well and use the voice activation on my phone to transcribe, a note and so on. And so what we're seeing coming through in the next part of the Wave 2 release that's been announced is a heap of other things that are going to make this even easier. So this idea of notes is great, but we're also going to see things like being able to scan handwritten notes. We're going to be able to see scanning business cards, suggested action items when filling in notes, all of those kinds of things, as well as some better stuff coming through with the phone call side of things. So creating an activity record after a phone call, automatic transcription for Teams calls and online meetings, those conversation insights again. So heaps of things coming through there. There's actually quite a big section in the Wave 2 release on the Sales mobile app, and a heap of functionality coming through in there. All right, so there's my top 10 of kind of big things to keep an eye on, big things to look forward to. Just to recap in the last few minutes here, at number 1, Dynamics 365 and Teams. So heaps of things coming there: meeting integration, chat integration, and so on. We have customer journey orchestration coming into the marketing space, custom pages for model-driven apps at number 3, Power FX for model-driven apps, so you can do your commanding without having to write any code now in model-driven apps. No code, natural language experience for Power Apps at number 5. At number 6, that deal manager workspace with all of the incredible extra things that we're going to get in the UI of Dynamics customer engagement apps that come with that. Keep an eye on those industry clouds and the reusable components there. Power Automate desktop, robotic process automation, including being able to use all of the platform connectors with that. No code personalization in the marketing experience, and that great sales mobile app experience. Thank you so much for joining me. I hope that's been helpful, and lots for us to look forward to there. Thank you so much, Lisa. Really appreciate it. Was so much informative, really a good summary. And one thing I have host Lisa this way in a couple of meetups, and always people after Lisa's session, they always ask, "Can we get recording of this session?" Or, but I can tell we will have recording. There you But go. Good. and if from audience someone wants to ask any question to Lisa, we have a couple of minutes. Please feel free to use comments section in our YouTube, LinkedIn, and Facebook channels. And meanwhile, Lisa, before I receive any questions from live from our audience, please tell us quickly about yourself, a little personal aspect, how you come to IT,
what was your experience? I think that will be really Sure. motivative for many people. Yeah, okay. So I've actually only worked in this space for about 5 years now. So I actually came to this out of a career in book publishing, which is highly unusual. I actually am qualified as a librarian, hence my little library stamp badges there. If anyone looks closely at my jacket, I've got a little library, little old school library card and library stamp. So I worked in book publishing for a very long time. I actually worked in sales and marketing jobs in book publishing, and always had an interest in the tech side of things. And every time there was a CRM project or something going on, I'd be like, oh, could I help with that? So I actually came out of, being in a sales role and a sales manager role in that industry and dabbling in that to a point where the consultants who actually worked with us, we deployed Dynamics 365. And I had a job where I actually had a senior manager role where I was the project sponsor for implementing that. And I took a huge leap out of a long career and decided to have a crack at working in this space. Honestly, I could not have designed that timing better. With all the hindsight in the world, that was absolutely perfect timing to be getting into that. I went from an industry where I felt like I wasn't learning and growing anymore, and now I do this and I got everything I wished for. And you do say careful what you wish for, but I haven't looked back at all. So for me, educating people who are like I was 5 years ago and helping them understand these tools. I used to do hideous things with Excel back in my old career, so it's been a delight and absolutely perfect timing, honestly, to be getting into this space. Yeah, obviously it is. Thank you so much for sharing your like the way you become a power platform evangelist. And Lisa, any tips, like no doubt platform is good, technology is good. uh, I will try to use this opportunity to ask a couple of a little personal questions, if Sure. you uh, Why not? uh, like how you cope with the challenge of like a lot of advancements in technology, and anything for audience, anything that can help in this Yeah. area. I think for me, and I reflected on this when I did my career change, that I genuinely love learning, and my biggest motivation for the career change, honestly, was that I felt stuck, that I wasn't learning anymore. And I think if you have that quality, or you can foster that quality of really Yeah, genuinely wanting to learn, for me, there's the willingness to learn, desire to learn, and the willingness to get out of your comfort zone. Because honestly, I'm up to date today, I won't be up to date tomorrow. It's changing all the time, and anyone who thinks they know everything in this space now is kidding themselves or kidding other people. So for me, it's about, I know lots of people, I've built an incredibly good network of amazing people in the community, and I ask them questions and they ask me questions, because we always have our specialty areas and people specialize in certain things. So having a good network, being willing to learn, and I think really, really being willing to get out of your comfort zone. I have so many times in my role at the moment said yes and then figured it out later. And I would not have got as far as I have had I not been brave enough to do that. And some days, honestly, I think, why did I say yes? Why did I say yes? How am I going to figure that thing out? But that yeah, forces you to draw on those resources, and it forces you to learn and do those things. And honestly, for me, that's an absolutely key skill, to be able to just go, I'm just going to get out of my comfort zone and yeah. do it. Mm. Awesome, awesome. Of course, I mean, it always helps. And Lisa, how you cope up with work-life balance? Anything, any tips, particularly if you are doing Oh, something? yeah, look, I'm probably not the best at that. I get very carried away with things and then can't stop doing them. So I tend to do a lot of this in my spare time. I do Yeah, recognize when I've hit the wall and kind of go, I do need to step away now. I have things I enjoy doing. I love reading. yeah, So if I can find a good book to immerse myself in and put the devices in another room, I think that yeah, idea of balance yeah. is helped by that. It's been challenging. In Melbourne, we've been in lockdown for a fair That's part of right. the last 18 months, so the balance is all a bit up the creek there anyway. So, Yeah, I'd like to sit here and say I'm very good at exercising every day, but that happens sometimes, yeah, not other times. But I know it's the right thing to do, and when I do it, yeah, I feel yeah. better for it. That's right. Thank you so much, Lisa. I think we are good from question side. So nice of you. It was great to have you, great to listen to you and learn from your experience. Thank you so much, and hope we'll see you again. Thanks, Lisa. Thanks very much. Thanks for having me.
Thank you. Okay, we were this session was from Lisa, and Lisa was presenting 10 tips, 10 new updates in Power Platform and Dynamics 365 community. Before starting next session, we will need to maybe wait a minute or two, and our next speaker is, I will just show their details. Yes, our next speaker is Irfan Rizvi. Irfan will be joining us shortly in a couple of minutes, and we will start the session. Please stay tuned. And just a note, this session, which is Irfan is presenting, that will be in Urdu language. And I hope it will be a sort of multilingual. But if you are not a Urdu speaker, please you can switch to any of over any of the other sessions. We have 4 streams going on at the time, and please feel free to come back if Urdu is not a language that you can understand. Stay tuned, and thank you so much. We'll be back. Hi, Irfan. Thank you Hey, so much for joining. I just have explained before, this session will be probably in Urdu. Am I right, Irfan? G. Yes, you're right. Okay. I just need to confirm if I can hear you. Can you hear me, Irfan? I can hear you. Can you hear me? Okay, yes, that's good. And Yeah. you have shared your screen, which I will enable. And Yeah. that's it, Irfan. Over to you. I will be there to assist you wherever you need. Thank you. Okay. थैंक यू यावर. तो आप सबका खुश आमदेद इस सेशन के अंदर. ये उर्दू हिंदी बूट कैम्प के अंदर मैं आज स्केलेबल और डायनामिक वर्कफ्लो के टॉपिक के ऊपर बात करूंगा. इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करते हैं, मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे देता हूं. मेरा नाम इरफान रिजवी है. मैं इस वक्त एज अ सोल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहा हूँ बारहेड सॉल्यूशंस में. ऑस्ट्रेलिया में मेरी रिहाइश मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में है. मैं तकरीबन 20 साल से इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ. पाकिस्तान के अंदर मैंने 3-4 साल काम किया. उसके बाद मैं कुछ अर्से मिडल ईस्ट के अंदर रहा हूँ.
शुरू से मैं डॉट नेट साइड और माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम करते रहा हूँ। तो डॉट नेट वर्जन 1 से स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, 4-5 साल उसके ऊपर काम किया। फिर माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स पे काम मैं मूव ऑन हो गया, जिसके अंदर शेयर पॉइंट से लेके प्रोजेक्ट सर्वर, डायनेमिक्स CRM, बिस्टॉक सर्वर, परफॉर्मेंस पॉइंट सर्वर वगैरह पे काम किया। तो एक काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स के ऊपर काम किया हुआ है। और मतलब पिछले 3-4 साल से मैं डायनेमिक्स 365 और पावर प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। काफ़ी मैं इंथुजियास्टिक हूँ लो कोड नो कोड के ऊपर। मेरी करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर एम्फेसिस है, क्योंकि मैं गवर्नेंस वगैरह की इंगेजमेंट्स भी रन करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक बूम आ गया है इससे, काफ़ी सिटीज़न डेवलपमेंट के थ्रू, और एक कितना पावरफुल प्लेटफॉर्म जो कि लाइसेंसिंग वाइज भी काफ़ी वायबल है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो उसको देखते हुए काफ़ी तेज़ी से इसकी जो है ना डिमांड और ग्रोथ बढ़ी है। तो उसके लिहाज से काफ़ी सारी है ना अपॉर्चुनिटीज़ इसमें निकल रही हैं। और अपॉर्चुनिटी से साथ साथ लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा निकल रही हैं, जिसके अंदर आप डिफरेंट एरियाज़ के अंदर फोकस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे स्केलेबल और डायनेमिक अप्रूवल सिस्टम के ऊपर के पावर प्लेटफॉर्म। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, दो चीज़ें मैं प्लीज़ आपको रिक्वेस्ट है मेरी, कि एक तो ये कि मेरा ईमेल एड्रेस प्लीज़ नोट कर लें, यहाँ पे मेंशन है, जस्ट इन केस अगर बाद में इसके ऊपर कोई फॉलोअप क्वेश्चंस वगैरह कुछ होते हैं तो मैं बहुत खुशी होगी आप लोग के अगर क्वेश्चंस आते हैं, और उसके मैं बिल्कुल बहुत कोशिश करूँगा कि मैं जवाब भी दूँ। और दूसरा मेरी वेब जो ब्लॉगिंग वेबसाइट है irfanrizvi.com, उस वो भी प्लीज़ नोट कर लें। उसकी एक मेन रीज़न ये भी है कि ये जो आज मैं पैटर्न या सेशन प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, इसके ऊपर मैंने रिसेंटली ब्लॉग भी किया था, और उस ब्लॉग के अंदर काफ़ी डिटेल में सोल्यूशन कंपोनेंट्स और बाकी चीज़ों को एक्सप्लेन भी किया गया है। और इसके अलावा ये जो सोल्यूशन मैंने गिटहब के ऊपर एज एन ओपन सोर्स सोल्यूशन भी रखा हुआ है, तो उसका लिंक भी आपको इसी वेबसाइट से या इसी ब्लॉग से मिल जाएगा। तो आई एम नॉट श्योर कि जो हमारे पास टाइम अभी है उसमें इतना टाइम मेरे पास होता है कि मैं सोल्यूशन कंपोनेंट्स वगैरह डिटेल में आपसे डिस्कस कर सकूं। तो इसलिए अगर इन केस हम टाइम में शॉर्ट हो जाते हैं तो ये एक अच्छा रेफरेंस पॉइंट होगा आपके लिए बाद में, अगर आपका इंटरेस्ट इसमें बरकरार रहा तो एजेंडा पे मूव करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, मतलब जो जिसको हम इस पैटर्न के अंदर या इस सेशन के अंदर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम क्यों करना चाहते हैं। तो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे पहले बात करेंगे, उसके बाद एक हम थ्योरेटिकल विजन पे डिस्कस करेंगे कि मतलब एक जो अप्रूवल डायनामिक या स्केलेबल अप्रूवल सिस्टम मेरे ख्याल में क्या होता है, और उसके अंदर उसकी क्या बुनियादी एलिमेंट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसको कैसे मतलब अगर वो कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो उससे क्या फ़वाद हासिल होते हैं। उसके बाद हम डेमो पे स्विच कर जाएंगे। मैं डेमो दूंगा। डेमो किस चीज़ का है? डेमो ये जो विजन है उसकी मैंने एक इम्प्लीमेंटेशन भी काइंड ऑफ लाइट वेट इम्प्लीमेंटेशन भी की है, जिसके अंदर इस चीज़ को प्रूव किया है कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। कैनवस ऐप, मॉडल ड्रिवन ऐप्स, डाटा वर्स, पावर ऑटोमेट फ्लोज और एक्शनेबल आउटलुक एक्शनेबल कार्ड्स को यूज़ करते हुए इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो हम डेमो पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे, और अगर टाइम परमिट्स तो हम लोग उसके फिर थोड़ा बैक एंड के ऊपर सोल्यूशन डिज़ाइन पे जाएंगे कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। जैसे मैंने कहा कि ये मैंने अपने ब्लॉग पे डिटेल में भी एक्सप्लेन किया, तो अगर टाइम के हिसाब से हम कुछ मसाइल में का शिकार हुए तो फिर हम इसको आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो मूविंग ऑन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं? जो पावर ऑटोमेट के अप्रूवल सिस्टम है वो हम सब ने, मतलब अगर आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मतलब आई डोंट नो दी ऑडियंस कौन है, लेकिन अगर डिफरेंट लेवल के ऊपर भी आपने काम किया, बहुत सिंपल लेवल पे भी काम किया हो, तो फ्लोज के अंदर सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट होती है कि भाई मुझे एक अप्रूवल का फ्लो लिखना है। सही है। और अप्रूवल का फ्लो जनरली जो मैं कह रहा हूँ एक रिजिड फ्लो होता है, यानी कि आप कहते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है मेरी, ये कोई एक आइटम है जिसको अप्रूव करना है या रिकॉर्ड को अप्रूव करना है, ये एक स्पेसिफिक ग्रुप को या यूज़र को अप्रूवल के लिए जाएगा, या वो 1 स्टेप होता है या वो 2 स्टेप होता है। और इसके अलावा क्या होता है कि क्योंकि फ्लोज वगैरह पे सेटअप किया हुआ होता है, तो जनरली मतलब कोई सिटीजन डेवलपर या प्रो डेवलपर ही को उसको जाके चेंज करना। फॉर एग्जांपल बाद में ऐसी रिक्वायरमेंट आती है कि
जो है ना, नहीं हमें सिंगल स्टेप अप्रूवल नहीं चाहिए, हमें इसको 2 स्टेप बनाना है या 3 स्टेप बनाना है, 4 स्टेप बनाना है या ब्रांचिंग करनी है, वट तो उसमें फिर एक डेवलपर इंगेज होता है और वो डेवलपर इसके अंदर आके उस फ्लो को अपडेट करता है, उसको मॉडिफाई करता है, और इस तरह जब भी कोई चेंजेस होती हैं उन चीज़ों को करता है। एक और बड़ा मसला पावर ऑटोमेट फ्लोज के साथ वो ये है कि उनके अंदर एक रन ड्यूरेशन लिमिट होती है, यानी कि टिपिकल अगर आप लाइसेंसिंग मॉडल के ऊपर हैं, ISV की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, तो 30 डेज का एक पावर ऑटोमेट फ्लो को फुल एग्जीक्यूशन के लिए दिया जाता है। यानी कि एक अगर अप्रूवल के लिए एक रिक्वेस्ट गई हुई है किसी अप्रूवर के पास, और उसने 2-3 हफ्ते तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो और मतलब विद इन 30 डेज रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो अप्रूवल बिल्कुल वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, और है ना उसकी लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है। और बाद दफ़ा आपकी एप्लीकेशन में ये फंक्शनैलिटी भी नहीं होती कि वो उस अप्रूवल को दोबारा से इनिशिएट करें। मतलब वो समटाइम्स वो एक एक वन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, वन ऑफ होता है ट्रिगर, यानी कि जब आइटम रिकॉर्ड क्रिएट होगा या कुछ होगा उसके बेसिस पे ये चीज़ चलेगी। अगर पावर ऑटोमेट अप्रूवल ही की बात करें, तो पावर ऑटोमेट का अप्रूवल का एक्शन जो कि काफ़ी अच्छा एक्शन है, मतलब या कनेक्टर है, उसको लोग यूज़ करते हैं, लेकिन उसके अंदर थोड़ी बहुत लिमिटेशन है। उसमें ईमेल फॉर्मेटिंग की लिमिटेशंस हैं, उसमें कस्टमाइजेशंस की थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं, आप उसको एक हद तक ही कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सेकेंडली उसके अंदर मसला ये है कि वो ईमेल वो जिस लेबल से जाती है उसमें आता है कि वो पावर ऑटोमेट या फ्लो के थ्रू वो अप्रूवल आया है, तो वो एक काइंड ऑफ उसकी एक वाइट लेबलिंग भी हुई होती है, तो वो बाज़ दफ़ा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है कि वो उसको अच्छा नहीं लग रहा। और फाइनली ये चीज़ जो सबसे मेरे ख्याल से बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम है, वो ये है कि अप्रूवल जो है वो ईमेल से होता है। जो दूसरा उसका ऑल्टरनेटिव है वो या पावर ऑटोमेट की आप मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें, जो कि एक एंड यूज़र के हिसाब से इतना मतलब सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट नहीं है। और दूसरा ये कि पावर ऑटोमेट फ्लो की अपनी स्क्रीन पे जाएं तो इसमें एक अप्रूवल का सेक्शन होता है, वो एज अ डेवलपर तो आपको पता होगा कि इधर है जिसमें जाके आप अप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वो एक एंड यूज़र के लिए, एक नॉर्मल जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल के यूज़र के लिए एक बड़ा ही अगली इंटरफेस होता है जिस पे जाके अप्रूव करें। विद इन दी एप्लीकेशन अप्रूवल करने का कोई अच्छा तरीका नहीं है अगर आप पावर ऑटोमेट के एक्शंस को यूज़ कर रहे हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं इनकी वजह से, और जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट मसाइल उसकी स्केलेबिलिटी और उसकी डायनामिक नेचर है, उसको एड्रेस करते हुए तो हम लोग मैंने इसके बारे में सोचा, और एक दो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पर सिमिलर आई, तो हमने उसके लिए एक ऐसा डिज़ाइन किया जिसके अंदर हम इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल बना सकें। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी से मेरा क्या मतलब है, यानी कि हम अब मूव करते हैं विजन के ऊपर। मेरे नज़दीक एक अच्छा अप्रूवल या वर्कफ्लो अप्रूवल सिस्टम वो ये होगा कि जिसमें एक डिसीजन टेबल सिस्टम टाइप की एक अप्रोच हो, विच मीन्स कि वैसे तो अप्रूवल्स आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है कि से फॉर एग्जांपल एक रिकॉर्ड है, जैसे कि एक प्रोजेक्ट है या एक बिजनेस केस है, वट एवर दैट इज, वो अप्रूवल के लिए जाएगा पहले प्रोजेक्ट मैनेजर के पास, या पहले PMO हेड के पास, या IT डायरेक्टर के पास, वट एवर दैट सिनारियो है, और उसको आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन रियल वर्ल्ड में सिनारियो ऐसे इतना सिंपल नहीं होता कि हर चीज़ वही सेम लोगों के पास अप्रूवल के लिए जाएगी, यानी कि डिपेंडिंग ऑन द एट्रीब्यूट्स ऑफ जो आपका जो भी रिकॉर्ड है जिसको आप अप्रूव करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से उनकी कॉम्बिनेशन के बेसिस पे डिफरेंट वर्कफ्लो का या अप्रूवल का पाथ बन सकता है। यानी कि अगर समझ लें एक छोटी वैल्यू या छोटे बजट का प्रोजेक्ट है, उसकी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट सिंपल सी होगी, हो सकता है वो सिर्फ एक डिपार्टमेंट के हेड तक ही जाए क्योंकि वो उसके बजट के अंदर है, तो उसको किसी और से अप्रूवल नहीं लेना। लेकिन उसके अलावा अगर कोई बहुत ही हाई वैल्यू प्रोजेक्ट है, तो हो सकता है वो पूरा एक फाइनेंस कमेटी के पास जाए और वो एक उसका बहुत ही एक लंबा अप्रूवल साइकिल हो। तो जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं पावर ऑटोमेट फ्लो के अंदर, तो अगर एक फ्लो से हम इम्प्लीमेंट करें तो उसमें हमें हमें ब्रांचेस बनाने पड़ते हैं कि भाई कंडीशन रखेंगे, ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है। यानी कि कल को एक नया सिनारियो बनेगा तो फिर फ्लो को जाके आप अपडेट करेंगे, उसमें एक नई ब्रांच बनाएंगे, फ्लो बहुत आपका मतलब कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा ओवर द टाइम, उसको मेंटेन करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो जो एक अच्छा वर्कफ्लो सिस्टम होगा उसमें कोई इस तरीके का मैकेनिज्म हो जिसमें आप डिसीजन टेबल्स हो, यानी कि आपके की एट्रीब्यूट्स की कॉम्बिनेशन के ऊपर आप अप्रूवल का अपना पाथ डिफाइन कर सकते हो।
एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर होनी चाहिए। दूसरा ये कि एडमिन्स उसको सेटअप कर सकते हो, मतलब ये नहीं कि हर दफ़ा आपको नई एक फ्लो पाथ जब भी इम्प्लीमेंट करना है उसके लिए आपको कोई डेवलपर को वापस बुलाना है, यानी कि आपके जो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हैं या मतलब पावर यूजर्स हैं वो आके उसको सेटअप कर सकते हैं, वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं या उसको चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा अप्रूवल पाथ्स हार्ड कोडेड नहीं होने चाहिए, यानी कि हाँ एक और उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक दफ़ा अप्रूवल आपने पाथ डिफाइन कर दिया वो तो सिस्टम में सेटअप हो गया है, लेकिन से फॉर एग्जांपल जब आप एग्जीक्यूशन का टाइम आया यानी कि वो उसको आपको अप्रूवल भेजने आया, हो सकता है उस टाइम पे यानी कि इन फ्लाइट जाने से पहले या इवन अप्रूवल स्टार्ट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद भी आपको इंस्ट्रक्शन आए मैनेजमेंट से, यूजर के इंस्ट्रक्शन आए कि यार इससे भी अप्रूवल ले लो, या किसी और से भी अप्रूवल ले ले, यानी या इससे अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। आई नो इसमें फ्लो में डिफाइंड है कि अब नेक्स्ट अप्रूवल आपने इंटरप्राइज आर्किटेक्ट से लेना है, लेकिन जो है इस पर्टिकुलर केस के अंदर जरूरत नहीं है, यानी कि आप स्किप कर सकते हो चीज़ों को, एक्सटेंड कर सकते हो इवन दो वो वर्क फ्लो पहले से प्री डिफाइंड भी है, यानी कि हार्ड कोडेड नहीं है वर्क फ्लो, आप रन टाइम पे उसको एक्सटेंड या शॉर्टन कर सकते हो। मल्टीपल, जैसे मैंने पिछले उसमें प्रॉब्लम बताया कि भाई मल्टीपल चैनल्स ऑफ अप्रूवल होने चाहिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ ईमेल से अप्रूव कर सकते हैं, मतलब वो आप एप्लीकेशन से भी अप्रूव कर सकते हैं, मोबाइल ऐप से भी अप्रूव कर सकते हैं, कोई और भी तरीके, मतलब आपका जो अप्रूवल सिस्टम है वो इसमें उसमें कैपेसिटी हो कि वो डिफरेंट अप्रूवल चैनल से अप्रूवल्स की इंस्ट्रक्शंस को वापस ले सकता हो, यानी कि अप्रूव की कमांड को, रिजेक्शन कमांड को। एक प्रॉपर वर्कफ्लो हिस्ट्री भी मेंटेन होनी चाहिए उसके अंदर, यानी कि जब वर्कफ्लो ख़त्म होता है तो हम गो बैक करके उसमें रिव्यू कर सकते हैं कि कब कोई चीज़ हुई थी, किसने अप्रूव किया था, ये अप्रूवल साइकिल कितना लंबा चला था, क्या कमेंट्स दिए थे वगैरह। तो एक अप्रूवल वर्कफ्लो हिस्ट्री भी प्रॉपर तरीके से उसके अंदर मेंटेन होनी चाहिए। जो पावर ऑटोमेट का एक बुनियादी मसला है रन ड्यूरेशन का, जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया, वो उस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो कि मतलब लॉन्ग रनिंग प्रोसेसेस की सपोर्ट हो, यानी कि अप्रूवल्स जो है हो सकता है कुछ केसेस के अंदर 2-3 महीने चलें, वो डिफरेंट राउंड्स हों वगैरह उसके अंदर, तो ऐसा ना हो कि 30 दिन के बाद फ्लो खुद ही से ख़त्म हो जाए और वर्क फ्लो ख़त्म हो जाए, यानी कि हम उस पर रिस्ट्रिक्ट ना हो। हम अपने अप्रूवल्स को जो अगर हम एज एन अप्रूवर यानी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या कोई सीईओ सीआईओ लॉग इन करे अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो सब कुछ देख सके एक ही जगह पे कि उसके लिए उसके पास कौन कौन से अप्रूवल्स आए हुए एक जगह पे, और वहाँ से वो अप्रूवल्स वगैरह का एक्शन भी ले सके, और वो एक नाइस इंटरफेस हो, वो पावर ऑटोमेट फ्लो की अप्रूवल स्क्रीन के जैसा ना हो। और फाइनली उसके अंदर मतलब आप अपनी जो लुक एंड फील्स की रिक्वायरमेंट है या ब्रांडिंग रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से अपनी ईमेल्स को कस्टमाइज भी कर सकें। तो एसेंशियली ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हों किसी अप्रूवल सिस्टम के अंदर तो वो काफ़ी फ्लेक्सिबल और वो काफ़ी ऐसा एक सिस्टम बन सकता है जो कि एक्सटेंडेबल हो, एक्सटेंसिबल हो, उसके अंदर की कैपेबिलिटीज़ हों। तो इसके ऊपर जब हमने ये चीज़ देख ली कि विजन ये है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं डेमो के ऊपर, और उसके अंदर मैं आपको एक डेमो देता हूँ कि हमने इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया है, यानी कि एप्लीकेशन का डेमो दूंगा और उसके बाद हम उसके सोल्यूशन कंपोनेंट्स पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम रुकिए मैं स्क्रीन पे इसको मूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पार्ट ऑफ दिस इम्प्लीमेंटेशन जो कि हमने यहाँ पे इसका स्केलेबल वर्कफ्लो के नाम से मैंने ये सोल्यूशन बनाया, यही सोल्यूशन मैंने एज अनमैनेज सोल्यूशन अपनी ब्लॉग के ऊपर भी डाला है। तो जो आप अगर मेरी ब्लॉग को विजिट करें irfanrizvi.com के ऊपर, तो इसका अनमैनेज सोल्यूशन आपको मिल जाएगा और आप उसको इंपोर्ट करके प्ले अराउंड कर सकते हैं, और उसको बिल्कुल आप अपनी फील फ्री टू एक्सटेंड इट, चेंज इट, जैसे आपकी सिनारियो वगैरह है, क्योंकि मैंने इसको लिंक किया हुआ एक सर्टेन सिनारियो जो कि है प्रोजेक्ट प्रपोजल के सिनारियो से। तो चलें पहले देखते हैं, इसके अंदर दो एप्स हमने बनाई हैं, एक प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिशन की ऐप है, ये कैनवस ऐप है, ये काइंड ऑफ एंड यूजर ऐप है, ये सेकंड चीज़ है जो मैं आपको दिखाऊंगा सब, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मॉडल ड्रिवन ऐप दिखाता हूँ जो कि हम लोग ने इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऐप के तौर पे बनाया हुआ है। तो ये है वो मॉडल ड्रिवन ऐप। अच्छा, अब इसमें जो है हम लोग जो सिनारियो जिसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आज के दिन,
वो है एक प्रोजेक्ट प्रपोजल के अप्रूवल का। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रन करते हैं, ठीक है, और उस प्रोजेक्ट बनने से पहले वो एज एन आइडिया या एज अ प्रपोजल कोई बिजनेस डिपार्टमेंट कोई यूनिट लेके आता है कि हम ये काम करना चाह रहे हैं, ये प्रोजेक्ट रन करना चाह रहे हैं, और वो फिर किसी नॉर्मली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म्स के अंदर इसको डिमांड मैनेजमेंट कहते हैं। वो डिमांड मैनेजमेंट के फ्लो से गुजरता है, जिसके अंदर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ प्रोजेक्ट, वो कितनी वैल्यू का प्रोजेक्ट है, वो एक अप्रूवल प्रोसेस से गुजरता है, और उस अप्रूवल प्रोसेस के एंड के ऊपर जब वो अगर वो प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो वो फिर वो उसको एज अ प्रोजेक्ट कंसिडर किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट बना दिया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बहुत एक सिंपल से प्रोजेक्ट प्रपोजल्स के प्रोसेस अप्रूवल प्रोसेस को ऑटोमेट किया। तो फोकस हमारा प्रोजेक्ट प्रपोजल नहीं है, फोकस हमारा अप्रूवल का सिस्टम है, तो इसलिए ज़्यादा हम उसके ऊपर टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, मैं दिखा देता हूं कि हमारा एक इसके अंदर हम कैप्चर क्या कर रहे हैं। तो प्रोजेक्ट प्रपोजल में एक आप नाम लेंगे, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट का नाम होगा, आपका उसका ओनर कौन है, एक डिपार्टमेंट की फील्ड है, यानी कि इसमें किस डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है, और एक ऑप्शन सेट की फील्ड है, चॉइस फील्ड है, जो कि उसका बजट का रेंज क्या है। अच्छा, ये दो फील्ड्स काफ़ी की हैं और इसकी वजह से ही मैंडेटरी भी हैं, क्योंकि मैंने डिसीजन टेबल के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है कि भाई डिपेंडिंग ऑन द एट्रीब्यूट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ एट्रीब्यूट, कि आपका अप्रूवल पाथ क्या बनता है, वो क्या बनेगा। तो इस केस के अंदर हमने डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट बजट को वो की एट्रीब्यूट्स बनाया है, ठीक है। वो आपके केस में कुछ और भी हो सकता है। और फिर एक अप्रूवल स्टेटस है जो कि आपका वर्क फ्लो ड्राइव करेगा, ठीक है, और कुछ आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो प्रोजेक्ट को देंगे। अच्छा, इस चीज़ को हम मॉडल ड्रिवन ऐप से कंट्रोल नहीं करेंगे, मतलब ये मैं सिर्फ आपको इस ये जो की फील्ड्स हैं इनको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। प्रोजेक्ट प्रपोजल की जो क्रिएशन है या उसकी जो सबमिशन है वर्क फ्लो की, या उसकी अप्रूवल और रिजेक्शन, वो सब हम कैनवस ऐप से करेंगे, ठीक है। अच्छा, हम अब मूव कर जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर, इसके अंदर जिसके अंदर हम एक्चुअली वर्क फ्लो को सेटअप करते हैं। तो वर्क फ्लो को सेटअप करने के लिए ये वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन का सेक्शन है। तो वर्क फ्लो कॉन्फ़िगरेशन जो है वो डिसीजन टेबल के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करती है, यानी कि यहाँ पे हम लोग एक हर कॉम्बिनेशन ऑफ डिपार्टमेंट और प्रोजेक्ट बजट प्रपोज बजट का एक हम वर्क फ्लो डिफाइन करेंगे ऐप के अंदर। तो जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले एक 3 कॉम्बिनेशन के एंट्रीज हुई हुई, यानी कि आईटी डिपार्टमेंट के लेस देन $250,000 के प्रोजेक्ट की, $250,500 की, और $1 million के प्रोजेक्ट की ये चीज़ बन जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर लेस देन 250 और आईटी के प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, तो इसमें देखें ये 2 स्टेज वर्क फ्लो है। तो ये वर्क फ्लो स्टेजेस यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। और अगर मैं स्टेज 1 के अंदर जाता हूँ, तो स्टेज 1 के अंदर ये अप्रूवल जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगा अप्रूवल, ठीक है, और ये मैंडेटरी अप्रूवल होगा, यानी कि इसकी अप्रूवल के बगैर ये चीज़ नेक्स्ट स्टेज पे नहीं जा सकती। और अगर स्टेज 2 पे जाता हूँ, तो स्टेज 2 पे आईटी हेड अप्रूव करेगा, और अगर स्टेज 2 का अप्रूवल भी आ जाता है तो ये प्रपोजल अप्रूव माना जाएगा, सही है। लेकिन इसके इसके बरक्स अगर मैं इससे थोड़े से हायर वैल्यू के प्रोजेक्ट पे जाता हूँ, जो कि आईटी प्रोजेक्ट है बिटवीन 250 to 500,000, तो उसके अंदर अगर हम देखें तो स्टेज 1 के अंदर सेम प्रोजेक्ट मैनेजर का अप्रूवल जा रहा है, लेकिन स्टेज 2 के अंदर हम आईटी हेड को भी अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं, और लेकिन एक इंटरप्राइज आर्किटेक्ट को भी हम रिव्यू के लिए भेज रहे हैं, यानी कि उसका अप्रूवल मैंडेटरी नहीं है लेकिन रिव्यू के लिए हम भेज रहे हैं, यानी कि हम एक डिफरेंट वर्क फ्लो पाथ और फ्लो पाथ बन गया इसके अंदर, सही है। और अगर मैं इसको देखता हूँ 500 to 1 million को, तो ये 3 स्टेज का प्रोसेस बन गया। अब क्योंकि ये एक डेटा एंट्री काइंड ऑफ एक टेबल है, स्टेज एक टेबल है, इसमें कोई लिमिट नहीं है, मैं मतलब 5, 10, 15 स्टेजेस का वर्क फ्लो डिफाइन कर सकता हूँ, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और उसको आप इजीली एक्सटेंड शॉर्टन वगैरह कर सकते हैं। तो हम क्विकली जाते हैं और इसके अंदर एक अबव 1 million के कॉम्बिनेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें हमने ज़रूरी है कि ये कॉम्बिनेशन, ये जो हमारी की एट्रीब्यूट्स की फील्ड हैं, ये सेम मैच कर रही हूँ, इसलिए मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल पे दिखाया था, और ये मोर देन 1 million का है। इसको हम सेव करते हैं।
अच्छा, इसके अंदर हम पहले स्टेज 1 को डिफाइन करते हैं। स्टेज 1 इसका सीक्वेंस नंबर 1 है, मतलब वर्कफ्लो के अंदर ये काफ़ी की इंफॉर्मेशन है, इसको राइट सीक्वेंस में होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर हमारे कौन कौन अप्रूवर है? अच्छा, मल्टीपल अप्रूवल हो सकते हैं एक ही स्टेज के ऊपर, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि स्टेज पे 3-4 लोग अप्रूव कर देंगे, उसके बाद ये नेक्स्ट पे जाएगा। ये सिनेरियो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग अप्रूवल बाय रोल करते हैं, मतलब जनरली जब आप अप्रूवल प्रोसेस इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, उसको आप रोल के हिसाब से अप्रूवल करते हैं। अच्छा, वो उस रोल के अगेंस्ट जो भी पर्सन होगा उसको नॉमिनेट किया जाएगा, और वो एक्चुअली अप्रूव तो कोई इंसान ही करेगा, लेकिन जब वर्क फ्लो डिफाइन कर रहा होता है तो उस वक्त आप कहते हैं कि भाई ये डायरेक्टर अप्रूव करेगा या ये हेड अप्रूव करेगा। वो डायरेक्टर की पोजीशन पे उस वक्त कोई और पर्सन हो सकता है, लेकिन लेटर ऑन कोई और पर्सन हो सकता है, इसलिए हम रोल के हिसाब से अप्रूवल करेंगे। तो हम इसके अंदर भी हम कह सकते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर है। अच्छा, ये मैंडेटरी अप्रूवल है, और डिफ़ॉल्ट अप्रूवर जो है हमें नहीं पता। अच्छा, डिफ़ॉल्ट अप्रूवर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप अप्रूवल रोल डिफाइन कर रहे हैं और इस वक्त जो भी उस रोल के अंदर है आप उसको नॉमिनेट करना चाह रहे हैं, ताकि ये ऑटो पॉपुलेट हो जाए बाद में, जब आप कैनवस आप देखेंगे आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो उसके अंदर ये चीज़ नॉमिनेट करते हैं, लेकिन हमें क्योंकि इस वक्त नहीं पता कि प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, तो हम इसको जब आप वर्कफ्लो डिफाइन कर रहे हैं तो आप इसको ब्लैंक रख सकते हैं। तो ये मैंने स्टेज 1 डिफाइन कर दिया इसके अंदर। अच्छा, अब इसके अंदर हम मज़ीद और कोई अप्रूवल नहीं डालते, लेकिन जो सेकंड स्टेज है हमारा, ठीक है, उसके अंदर हम दो अप्रूवल को कर देते हैं। तो हम कह देते हैं कि आईटी हेड को जाएगा, और हम ये भी कह सकते हैं कि आईटी हेड हमें पता है, अभी जो भी आईटी हेड है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम उसको नॉमिनेट कर देते हैं। अच्छा, इस डेमो एनवायरनमेंट के अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरे पास सिर्फ एक ही अकाउंट है, मैं डेवलपर लाइसेंस यूज़ कर रहा हूँ इसके अंदर, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे हर जगह अपना नाम यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं आईटी हेड के तौर पे अपने आप को नॉमिनेट कर लिया, इसको क्लोज कर देते हैं। और मैं यहाँ कहता हूँ कि इसी स्टेज के ऊपर जो है एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को रिव्यू भी करना है, और मुझे एंटरप्राइज आर्किटेक्ट नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल एंटरप्राइज आर्किटेक्ट्स हों, तो हमें नहीं पता कि किसको नॉमिनेट किया जाएगा एट दिस स्टेज जब हम डिफाइन कर रहे हैं वर्कफ्लो। तो इसको हम क्लोज करते हैं। ठीक है, हमारा स्टेज 2 सेट हो गया। स्टेज 2 पे दो लोगों को नोटिफिकेशन जाएगी, एक आईटी हेड जो कि अप्रूवल जाएगी, और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट जो कि जिसको रिव्यू की जाएगी। अच्छा, रिव्यू और अप्रूवल में फ़र्क ये है कि अगर रिव्यूअर अप्रूवर से पहले रिस्पॉन्ड कर देता है तो वर्कफ्लो वेट करेगा अप्रूवर के अप्रूवल आने का, लेकिन अगर अप्रूवर रिव्यूअर से पहले रिस्पॉन्ड कर देता है तो, और सारे अप्रूवर्स जो भी स्टेज में डिफाइन है वो सब अप्रूवर के रिस्पॉन्सेस आ जाते हैं, तो वर्कफ्लो आगे मूव हो जाएगा, वो वेट नहीं करेगा रिव्यूअर के रिस्पॉन्स आने का। तो ये एक काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने इसके अंदर बिल्ड की है। अच्छा, तो ये हमारी स्टेज 2 हो गया, और फाइनली हम कहते हैं कि इस सॉरी कौन सा था, और इसमें हम एक स्टेज 3 डिफाइन कर देते हैं। और स्टेज 3 के अंदर हम कहते हैं कि ये सीईओ से अप्रूवल के लिए जाना चाहिए, और हमें सीईओ भी पता है कि भाई ये इस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ मैं ही हूँ। तो हमने वो भी डिफाइन कर दिया। तो हमारे काइंड ऑफ 3 स्टेज वर्कफ्लो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है हमने आईटी प्रोजेक्ट्स के लिए, जो कि पहले प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगा, आईटी हेड और एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को जाएगा, और फाइनली सीईओ के लिए, सीईओ को अप्रूवल के लिए जाएगा। अच्छा, ये तो हमारा वर्कफ्लो डेफिनेशन हो गई। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी कैनवस ऐप पे कि एंड यूजर एक्सपीरियंस क्या है इसके अंदर। ठीक है, तो इसको जैसा रिफ्रेश कर लेते हैं कैनवस ऐप को। अच्छा, ये एक बड़ी सिंपल सी कैनवस ऐप है, इसके अंदर कोई सोफिस्टिकेशन नहीं है। आप इसको, ये पूरी चीज़ को कैनवस ऐप, जरूरी नहीं कि कैनवस ऐप से इंप्लीमेंट किया जाए, इसको आप मॉडल ड्रिवन ऐप से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जो इंटरफेस साइड है, लेकिन पीछे का वर्कफ्लो सिस्टम के पैटर्न को आपको सेम यूज़ करना पड़ेगा। तो ऐप के अंदर आप अपने करंट पेंडिंग टास्क भी देख सकते हैं, इसके अंदर आप जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनको जाके देख सकते हैं कि वो कौन से प्रोजेक्ट प्रपोजल हैं, उनको देख सकते हैं उनका क्या स्टेटस है, और आप नए प्रपोजल को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे एक नए प्रपोजल को स्टार्ट करते हैं। तो इसका नाम
मैंने एक नाम दे दिया। इसके अंदर हम वही कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं जो अभी हमने डिफाइन किया था कि हम उसकी एक्चुअल ये प्रूफ करें कि ये कोई हार्ड कोडेड चीज़ नहीं है। तो मैंने मोर देन 1 मिलियन के प्रोजेक्ट बजट को सिलेक्ट किया और आईटी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे दी। ठीक है, अब मैं इसको सेव करता हूँ। अच्छा, इसको मैंने जो इसके अंदर काफ़ी ये जो मैजिक है बिहाइंड द सीन वो ज़्यादातर पावर ऑटोमेट फ्लो से हो रहा है। सही है, और इसमें ऑलमोस्ट 8 से 10 पावर ऑटोमेट फ्लोज इंप्लीमेंट हुए हैं जो डिफरेंट काम कर रहे हैं छोटे छोटे। उनमें से एक काम, सबसे पहला जो काम है वो ये है कि ये बेस्ड ऑन दिस कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी क्रिएट किया, जैसे मैंने ये किया तो पीछे एक पावर ऑटोमेट फ्लो चला है जो कि जाके देख रहा है कि आईटी प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट के मोर देन 1 मिलियन बजट के लिए कोई वर्क फ्लो की कॉन्फ़िगरेशन डिफाइंड है या नहीं है, और अगर वो डिफाइंड है तो उसमें कौन कौन से अप्रूवर्स मौजूद हैं, ताकि आप इस स्टेज पे अपने अप्रूवर्स को नॉमिनेट कर सकें। अभी हम वर्क फ्लो स्टार्ट नहीं कर रहे, हम सिर्फ अप्रूवर्स की नॉमिनेशन कर रहे हैं। अच्छा, अब ये बिहाइंड द सीन एक फ्लो चल रहा है, इसीलिए थोड़ा सा ये एसिंक्रोनस प्रोसेस है, इसलिए मैंने ये रीलोड का बटन दिया हुआ है। कुछ स्टेप्स इसके ऐसे हैं जो कि प्लगइन्स अगर हम इंप्लीमेंट करते हैं या रियल टाइम वर्कफ्लोज इंप्लीमेंट करते हैं तो वो बड़ा ही रियल टाइम सिनारियो भी हो सकता है, यानी कि अप्रूवल फॉर जनरेट हो जाए। लेकिन मैंने उसको जानबूझ के पावर ऑटोमेट फ्लो से किया ताकि हम उसका एग्जीक्यूशन और वो सब कुछ दिखा सकें। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि ये फ़ौरन से हो जाए तो वो फ्लो में जो भी लॉजिक है वो आपको प्लगइन में इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो जब मैंने रीलोड किया तो ये फ्लो वो चल चुका है, और जितने मैंने उसके अंदर रोल्स डिफाइन किए थे और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर, वो सारे अप्रूवर्स यहाँ पे आ गए, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजर, आईटी हेड, एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, सीईओ सब आ गए। और जो मैंने डिफ़ॉल्ट अप्रूवर्स भी डिफाइन किए हुए थे, वो डिफ़ॉल्ट अप्रूवर्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नौ प्री पॉपुलेट हो गया, यानी आईटी हेड और सीईओ मैंने एज ए डिफ़ॉल्ट अप्रूवर डिफाइन किया हुआ था। यहाँ पे ये दिखा रहा है कि इनमें से कौन से मैंडेटरी अप्रूवर्स हैं और कौन से नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, हर जगह पे अपना नाम दोबारा से दे देता हूँ। अच्छा, जैसे मैं ये देता हूँ तो इसके पीछे भी एक वर्कफ्लो चल रहा है जो कि इसको एसेस कर रहा है कि क्या मैंने सारे अप्रूवर्स को डिफाइन कर दिया इससे पहले कि मैं वर्कफ्लो के स्टेज पे जाऊँ, तो उसके लिए भी एक फ्लो डिफाइन किया हुआ है। तो होपफुली वो फ्लो चल गया होगा जैसे, और मैंने जब रीलोड किया तो वो इसने जाके चेक किया है कि पीछे वो सारी हमने चीज़ें इंफॉर्मेशन दे दी है, और अब हम नेक्स्ट स्क्रीन पे जाने के लिए, यानी वर्कफ्लो की स्क्रीन पे जाने के लिए तैयार है। तो जब मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे जाता हूँ तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है, और यहाँ पे मेरे पास ये मेरी वर्क फ्लोज की लिस्ट है, और ये वो यहाँ पे वर्क फ्लो की टास्क की लिस्ट आ रही है। तो अभी तो मेरे पास कोई वर्क फ्लो डिफाइन नहीं है, तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई डिफाइन नहीं है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अब एक नया वर्क फ्लो क्रिएट करता हूँ। तो दिस जो नए वर्क फ्लो क्रिएट करने से मेरा मतलब है नए वर्क फ्लो का एक इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है, यानी कि अब ये जाके देख रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट जो कॉम्बिनेशन बन रहा है आईटी प्रोजेक्ट का और अबव 1 मिलियन का, उसका वर्क फ्लो क्या है, कितने स्टेज पे डिफाइन है और सब कुछ क्या है, और उसके हिसाब से वो यहाँ पे वर्क फ्लो के टास्क क्रिएट कर रहा है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे 4 वर्क फ्लो के टास्क बन रहे हैं। पहला स्टेज 1 का है, ये दोनों स्टेज 2 के हैं, और ये स्टेज 3 का अप्रूवर है। यहाँ पे मैं अगर अप्रूवर रोल भी डाल दूँ तो थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, मैं इसको इवॉल्व करूँगा। अच्छा, अभी ये वर्क फ्लो स्टार्टेड नहीं है, ये ड्राफ्ट स्टेट के अंदर है। सही है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़, मैं इससे पहले कि मैं उस वर्कफ्लो को स्टार्ट करूँ, एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि आप देख सकते हैं कि इस पैटर्न को सपोर्ट करता है कि मैं एक दफ़ा वर्कफ्लो ख़त्म हो जाए तो मैं दोबारा से वर्कफ्लो एक नया भी बना सकता हूँ, यानी कि कोई मतलब रियल वर्ल्ड सिनारियो के अंदर कोई चीज़ ज़रूरी नहीं है कि वो एक दफ़ा अप्रूव हो जाए तो वहाँ मामला ख़त्म हो जाता है। बाज़ दफ़ा रिक्वायरमेंट आती है कि हमें इसको दोबारा से अप्रूवल पे भेजना पड़ेगा, कुछ चेंजेस आ गई हैं इसके अंदर, तो वो हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं वर्कफ्लो का प्रोसेस। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये सिनारियो इसके अंदर ये है कि आप ये बिन के बटन देख रहे होंगे, ये डिलीट के टास्क के बटन, यानी कि मेरा वर्कफ्लो मैंने एज एन एडमिन तो डिफाइन किया हुआ है, लेकिन ये मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं यहाँ पे आके किसी सर्टेन स्टेज को या किसी वर्कफ्लो के जो टास्क है उसको बेस्ड ऑन दिस सिनारियो मैं उसको हटा भी सकता हूँ, यानी कि ये रिजिड नहीं है, इसको हमने इसको काफ़ी फ्लेक्सिबल रखा हुआ है। और मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए इसको, ये जो मेरा अप्रूवर जो मैंडेटरी नहीं था, मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ। तो अब मेरा जो है
वही 3 स्टेज वर्कफ्लो है, लेकिन वो जो एंटरप्राइज आर्किटेक्ट को जो अप्रूवल रिव्यू के लिए रिक्वेस्ट जानी थी वो अब नहीं जाएगी, यानी कि हमने चीज कर दी है। अच्छा, और ये चीज आप वर्क अभी तो मैंने वर्कफ्लो स्टार्ट नहीं किया, ये वर्कफ्लो स्टार्ट करने के बाद भी उन टास्क के ऊपर कर सकते हैं जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुए। अच्छा, इसकी नेक्स्ट चीज जो है इम्पॉर्टेंट चीज ये जो कि अभी मैंने इसमें फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट नहीं की है, लेकिन ये पॉसिबल है कि हम इसमें मजीद जो है टास्क या स्टेजेस को इसी वन रन टाइम पे ऐड भी कर सकते हैं। यानी कि अभी 3 स्टेजेस हैं, लेकिन हो सकता है आपके डायरेक्टर से आपको रिक्वेस्ट आई हो जब आप इसको यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है, ये सीईओ के अप्रूवल जाने से पहले देख लो कि इसको आपने सीएफओ से भी अप्रूव करवा लो। तो असल मतलब जो रियल वर्ल्ड सिनारियोज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो बिल्कुल रिजिड नहीं हो जाते। तो ये चीज़ ये पैटर्न को अलाउ करेंगे, मतलब इसमें हम ये फंक्शनलिटी एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई भी। तो खैर, हम इस टाइम की कंसिडरेशन के हिसाब से मैं इसको अब क्या करता हूँ कि इसको स्टार्ट करता हूँ। तो जब मैं ये बटन हिट करूँगा तो इसने एक पीछे पावर ऑटोमेट फ्लो को कॉल किया जो कि अब इसको स्टार्ट कर रहा है इस वर्क फ्लो को। तो अब अगर ये देखा जाए तो ये वर्क फ्लो का स्टेटस इन प्रोग्रेस हो गया। मैं टास्क को एक दफ़ा रीलोड करता हूँ तो मेरा जो टास्क पहला वाला टास्क था वो इन प्रोग्रेस इसका स्टेटस आ गया। अच्छा, अब मैं इधर एक मेरे पास ईमेल भी आ गई है जिसके अंदर ये चीज़ अप्रूवल के लिए आई। अब आप अगर ईमेल पे थोड़ा सा गौर करें तो ये एक पावर ऑटोमेट की रेगुलर ईमेल नहीं है, ये एक्शनेबल कार्ड के थ्रू आई है और ये बिल्कुल कस्टमाइज है। यहाँ पे मेरा अपना कस्टम लोगो आ रहा है, इसको मैंने काफ़ी नाइसली फॉर्मेटेड ईमेल है, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अंदर एक बड़ी क्लीन तरीके से आ रही है। यहाँ पे आप अपने कमेंट्स भी दे सकते हैं और इसको यहीं विद इन द ईमेल अप्रूव और रिजेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक अप्रूवल कार्ड की अपनी फंक्शनल पावर ऑटोमेट की अपनी फंक्शनलिटी भी होती है, लेकिन उसके अंदर ब्रांडिंग उसकी आ रही होती है। तो ये कस्टम ब्रांडिंग के साथ आ रहा है। तो मैं यहाँ से इसको अप्रूव भी कर सकता हूँ। इससे पहले कि मैं अप्रूव करूँ, फॉर एग्जांपल ये एक बड़ा कॉमन मसला है कि जो आप रियल वर्ल्ड में जाते हैं कि आपसे डिलीट हो गई है ये चीज़ जो है, और आप अप्रूवर आपको कांटेक्ट करा यार, वो आपने जब उसको फॉलो अप किया तो उसने बोला यार मुझसे वो ईमेल डिलीट हो गई है, मुझे ईमेल नहीं मिल रही। तो ये सिनारियो ये कर सकता है कि आप इसको रीसेंड भी कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो अगर मैं रीसेंड दबाऊं तो होपफुली मेरे पास ये ईमेल आ जानी चाहिए। तो ये ईमेल दोबारा से मेरे पास आ गई। तो ये एक बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है जो एक पावर ऑटोमेट फ्लो के अंदर आप शायद इम्प्लीमेंट ना कर पाए या करने के लिए बहुत ही आपको जो है ना मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो अच्छा, मैं इसको अप्रूव करता हूँ और जैसे मैंने इसको अप्रूव किया तो आप ये देख रहे हैं कि काफ़ी नाइसली फॉर्मेटेड कस्टमाइज्ड रिस्पॉन्स है कि जिसके अंदर आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। ये पावर ऑटोमेट फ्लो ये रिस्पॉन्स बैक भेज रहा है। और अगर मैं ऐप पे वापस आता हूँ, इसको एक सेकंड में इस विंडो को क्लोज करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखें कि ये अप्रूव हो गया और अब ये सेकंड स्टेज के अंदर चले गए और मेरे पास अब सेकंड स्टेज की ईमेल भी आ गई है। अब मैं अगर पहली स्टेज की ईमेल पे वापस जाता हूँ तो मेरे पास दोबारा से उसको अप्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। अच्छा, अब सेकंड स्टेज की ईमेल के अंदर अगर हम देखें तो एक वर्कफ्लो हिस्ट्री भी आ रही है, यानी कि इसमें आ रहा है कि प्रीवियस जो अप्रूवर हैं उसमें इरफान रिजवी ने इसमें कमेंट किया था कि ओके ऑल गुड और उसने अप्रूव किया था। तो आप एक वर्कफ्लो हिस्ट्री क्योंकि मेंटेन हो रही है तो उसको फिर मल्टीपल जगहों पे यूज भी कर सकते हैं। अच्छा, इस वाले टास्क को मैं इस जगह से अप्रूव नहीं करूंगा। मैं ऐप पे वापस जाता हूँ। तो अच्छा, अब मैं ऐप पे अगर वापस जाता हूँ तो क्योंकि इस वक्त मैं एज अ सबमिटर यानी कि मैं जो प्रोजेक्ट प्रपोजल का ओनर और अप्रूवर दोनों ही एक्ट कर रहा हूँ, तो अगर मैं होम स्क्रीन पे जाता हूँ तो आप ये देखें कि यहाँ पे ये आप मुझे दिखा भी रहा है कि मेरे पास एक पेंडिंग टास्क वेट कर रहा है, मतलब अप्रूवल के लिए, जो कि वो सेम टास्क है जो कि यहाँ पे बस ईमेल पे आया हुआ है। तो विद इन दी ऐप आपके पास एक आपके पास एक ट्रैकिंग आ गई है कि कितनी अप्रूवल है वगैरह, और उसको आपने उसको एक्शन भी ले सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे इसको
पब्लिश करना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास आई थिंक जो वर्जन चल रहा है सॉरी ये स्क्रिप्ट के बाहर ये सिलेबस के बाहर से चीज़ आ गई है पेंडिंग टास्क की मैं स्क्रीन पे जाता हूँ तो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो अब मैं इसको विद इन दी कैनवस ऐप स्टूडियो दिखा देता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा जो प्रोजेक्ट था उर्दू हिंदी बूट कैम्प का उसके अंदर मैं एज एन आईटी हेड ये चीज़ मेरे अप्रूवल के लिए वेट कर रही है और यहाँ से मैं विद इन दी ऐप इस चीज़ को अप्रूव और रिजेक्ट भी कर सकता हूँ रीसेंड भी कर सकता हूँ अगर मुझे ईमेल से करनी क्योंकि मैंने इधर कमेंट की फंक्शनैलिटी नहीं दी है तो आप अगर कमेंट डालना चाह रहे हैं तो वो ईमेल पे रीसेंड करा के भी कर सकते हैं लेकिन मैं सिर्फ इसको यहाँ से अप्रूव कर देता हूँ जैसे मैं अप्रूव किया वो मेरी लिस्ट पेंडिंग की लिस्ट से डिसअपीयर हो गया अगर मैं यहाँ पे वापस जाता हूँ अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग के ऊपर तो ये जो मेरा प्रोजेक्ट था इसको इसके अंदर सेकंड स्टेज अप्रूव हो गया है और ये अब लास्ट स्टेज के ऊपर इन प्रोग्रेस है तो यानी कि अब मैं क्या बोलते हैं थर्ड स्टेज को अप्रूव कर सकता हूँ लेकिन उससे पहले कि मैं ये थर्ड स्टेज एज सीईओ जो मेरे पास आया है यहाँ पे देखें सेकंड पे मैंने कोई कमेंट नहीं दिया था तो वो चीज़ आई है लेकिन अगर मैं अपनी पुरानी ईमेल पे जाता हूँ और ये अभी भी उसी तरीके से है क्योंकि अभी तक मैंने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है लेकिन इसमें इस सिनारियो को हमने हैंडल किया हुआ है कि अगर आप ऑल्दो मैंने ऐप से इस चीज़ को पहले ही अप्रूव कर दिया है अब मैं ईमेल से दोबारा से उस स्टेज को अप्रूव करने जा रहा हूँ तो इसने इसको डिटेक्ट कर लिया कि दिस अप्रूवल वाज ऑलरेडी रिस्पॉन्डेड टू योर करंट एक्शन विल बी इग्नोर्ड यानी कि ये सेकेंड वाले को इग्नोर कर देगा यानी कि वर्कफ्लो के अंदर इस सिनारियो को हमने हैंडल कर लिया तो हम अब फाइनली इस जगह पे आते हैं और इसको ये अप्रूव करते हैं और ये चीज़ अप्रूव हो गई और मैं अपने स्टेटस को यहाँ अप्रूव देखता हूँ तो मेरा वर्कफ्लो का स्टेटस भी अप्रूव हो गया और अगर मैं अब अपनी होम स्क्रीन पे जाता हूँ और प्रोजेक्ट की लिस्टिंग पे जाता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे इस चीज़ को अपडेट रिफ्रेश करना चाहिए था अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको तो मेरा स्टेटस अप्रूव हो चुका है तो असेंशली आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे इस चीज़ का कि ये एक हाईली डायनेमिक किस्म का एक पैटर्न है और मैं इसको ब्लॉग के अंदर भी काफ़ी दफ़ा इसके ऊपर एम्फसाइज किया है कि इसको पैटर्न समझा जाए रादर कि एक सोल्यूशन क्योंकि मैंने इसमें प्रोजेक्ट प्रपोजल के सिनेरियो को इम्प्लीमेंट किया लेकिन इस सेम तरीके को इम्प्लीमेंट करते हुए या सेम स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट करते हुए आप इसको अपने कोई भी सिनारियो के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं इसके अंदर जैसे सीक्वेंशियल अप्रूवल का प्रोसेस है तो आप ब्रांचिंग भी बना सकते हैं उसके अंदर और मज़ीद सोफिस्टिकेशन को ला सकते हैं लेकिन ये एक अच्छे अप्रूवल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है अच्छा अब सोल्यूशन अगर हम कंपोनेंट पे आए अगर कोई आपका सवाल वगैरह है तो या आई एम नॉट श्योर कि हम सवाल अगर कोई है इस वक्त या जी जी इरफान, कुछ सवाल भी हैं और मेरे ख्याल में अगर इफ़ आई एम करेक्ट हमारे वी हैव 5 और 6 मिनट्स तो जी आप इसको जैसे रैप करना चाहें, क्वेश्चंस लेना चाहें या क्वेश्चन लेना ज़्यादा बेहतर है जैसे मैंने कहा कि सोल्यूशन कंपोनेंट्स जो है थोड़ा सा टाइम लेंगे तो वो जी ब्लॉग जी के ऊपर उसको आप डिटेल में देख सकते हैं तो मैं बेहतर है कि मैं सवालों के जवाब दे दूँ सही, बिल्कुल सही। तो इरफान, एक पहला क्वेश्चन तो इसमें ये है, आपने बताया कि इसकी सॉल्यूशन अनमैनेड आपने शेयर की है कम्युनिटी के साथ, थैंक्स फॉर दैट। जी ये ज़ाहिर है एक बहुत अच्छी ट्रेडिशन है।
इसे इम्प्लीमेंट करने में कितना हमें एक्सपेक्टेड है? कुछ अगर मेरे पास सिनेरियो हो, मैं करना चाहूँ, तो कितना टाइम आई शुड एक्सपेक्ट के आई विल एबल टू इंस्टॉल द सोल्यूशन और मैं उसे इम्प्लीमेंट कर सकूँगा? तो वो ब्लॉग के अंदर मैंने वो सोल्यूशन के इंस्टॉलेशन और उसके समराइज किए हुए हैं 5-10 स्टेप्स के, जो जिसको यूज़ करते हुए आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सही। उसके बाद इट्स मोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि ये चीज़ें कैसे चल रही हैं और उसको फिर आपने मज़ीद कैसे एक्सटेंड करना है। तो लेकिन मेरे ख्याल से जो सोल्यूशन की अपनी इंस्टॉलेशन है वो आधे से 1 घंटे से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, लेकिन उसके सही। बाद डिपेंडिंग ऑन आपकी ग्रास्प कितनी है उसके हिसाब से आप कितनी जल्दी उस चीज़ को समझ जाते हैं और उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, वो सही। पर्सन टू पर्सन चेंज डिफरेंट होगी। सही। और इरफान, इसमें इस पैटर्न में आपने सारी जो यानी स्टैंडर्ड फंक्शनैलिटीज हैं या वे ऑफ अप्रूविंग है, उसके लिए फ्लो ही यूज किया है, पावर ऑटोमेट सबके लिए जी, है? तो इसमें जो सबसे की इंग्रेडिएंट की जैसे कह सकते हैं वो दो चीज़ें हैं, एक पावर ऑटोमेट फ्लो है और आउटलुक एक्शनेबल कार्ड है। तो सही। जो ईमेल्स आप देख रहे थे उसमें जो अप्रूव और रिजेक्ट के बटन्स आ रहे थे, तो वो जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो वो एक पावर ऑटोमेट के HTTP ट्रिगर को इंफॉर्मेशन भेजते हैं कि ये अप्रूव हो गया या रिजेक्ट हो गया। और सही। उसके बाद वो पावर ऑटोमेट का फ्लो डिपेंडिंग ऑन आप वर्क फ्लो में कहाँ खड़े हैं वो डिसाइड करता है कि एक नेक्स्ट अप्रूवर कौन है या ये कंप्लीट अप्रूवल हो गया है, और उसके हिसाब से चीज़ों की स्टेटस इसको मूव करता है। सही। बहुत अच्छा है। और इरफान, एक हमें लाइव क्वेश्चन भी आया है, मैं उससे क्वेश्चन है कि 40 इन्होंने पूछा है कि व्हाट इफ मिस्टेकनली अप्रूव, हाउ टू रिवर्स इट? कि अगर अब सही। फ्लो को मिस्टेकनली ये अप्रूव हो जाए तो हम इसको कैसे फिर हैंडल करेंगे? हाँ, तो ये देखिए अप्रूवल जो होता है वो सिस्टम में अप्रूवल विथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है, इसीलिए जो है ना हम लोग ने इसको थोड़ा सा इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं जो आपका इंटरफेस भी है कि भाई आप एक कमेंट भी दे रहे हैं, आप कमेंट कमेंट्री वगैरह भी कर देते हैं बाज़ दफ़ा हम, इसलिए ताकि आप बाय मिस्टेक अप्रूवल ना कर दें। लेकिन जनरली इसको एक्सटेंड इस तरीके से कर सकते हैं कि हम इसमें रिकॉल की फंक्शनैलिटी भी बिल्ड कर सकते हैं लेटर ऑन। इसमें जो अभी मैंने पैटर्न इंप्लीमेंट किया है उसमें कोई रिकॉल की फंक्शनैलिटी नहीं है, सही। लेकिन जिस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ है उसमें रिकॉल की फंक्शनैलिटी को डालना पॉसिबल है। सही। और वो फिर उसमें यह है कि आप जिस तरह आप ही आपने ऐप में देखा कि आप अपने पेंडिंग अप्रूवल में गए और वहां जाके अप्रूव या रिजेक्ट कर दिया, उसी तरीके से आपके अप्रूव्ड एक्शंस की लिस्ट भी आ सकती है क्योंकि ये डाटा वर्स से ही आ रही है। और सही। उसके आगे हम अप्रूवर रिकॉल का बटन भी दे सकते हैं जिसपे कोई पीछे फ्लो चलेगा और जो उसके हिसाब से लॉजिक को करेगा। लेकिन काफ़ी अच्छा सवाल था और एक अच्छी फीचर है जो कि मैं कोशिश करूंगा कि अगले वर्जन ऑफ दिस सोल्यूशन में इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश अच्छा करूँ। जी, बिल्कुल। और इरफान, इसमें आई होप कि सारे कनेक्टर्स और ट्रिगर्स जो आपने यूज़ किए हैं वो सारे इनमें से कोई प्रीमियर लाइसेंस रिक्वायरमेंट भी है या जो स्टैंडर्ड ये ही है प्रीमियम सारे? लाइसेंस है क्योंकि इसमें हमने काफ़ी हेविली HTTP ट्रिगर को यूज़ किया है। तो सही है। अनफॉर्चुनेटली HTTP ट्रिगर या कुछ 2-3 साल पहले प्रीमियम हो गया था। बिल्कुल सही, तो प्रीमियम। हाँ, प्रीमियम रिक्वायरमेंट है इसकी। थैंक यू सो मच इरफान, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा आपने प्रेजेंट किया, और थैंक्स फॉर योर कम्युनिटी वर्क, योर कंट्रीब्यूशन। प्लीज कीप इट थैंक यू सो अप, मच। और होपफुली आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। नो थैंक्स। वरीज, थैंक यू। ओके, बाय। ओके। Thank you so much, everyone who are with us today. This is Yavar Iqbal. I have joined second day of uh, second day of Urdu Hindi Bootcamp, and we are in Power Platform track. I think next is we will have around 15 minutes break. Please have break, go for your coffee, and I will also take a break, and we will join further from here. I will mean before going, I will announce our next speaker and what is next session. Okay, next session is we have done Irfan, and okay, next session is Muhammad Adil Khan. He will present demystifying RPA and Power Automate Desktop. This session will again be in Urdu language, and please stay with us and feel free to ask any questions through over Facebook, LinkedIn, or to comment section of our pages.
and hope to see you back soon. Thank you.
Hello, Khushamded and Swagat. Thank you for tuning into the second edition of Dynamics 365 Urdu Hindi Bootcamp today. We hope and pray that you and your loved ones are safe during these challenging times. We welcome you all to this broadcast organized by the Pakistan User Group. Pakistan User Group is a community created with an intention to provide a pivotal platform for the country's IT professionals, entrepreneurs, business application users, and students to collaborate on upskilling, effective networking, and other areas of common interest, adding value for a growth centric skilled industry. D365 Urdu Hindi Bootcamp is a recurring event targeting to promote upskilling in Microsoft technologies and aims to eliminate language barriers to learning. The event hosts a diverse array of industry-leading speakers covering the greatest and the latest of Microsoft product and platforms such as Dynamics 365 ERP applications, customer engagement, Microsoft Power Platform, Azure, artificial intelligence, and beyond. This community-led event welcomes participants from around the globe. We offer content in English, Urdu, and Hindi languages. This year, Bootcamp will be a 3-day event with 70 plus speakers participating from more than 10 different countries across the globe. Bootcamp session will cover a range of Microsoft products, our speakers, and share their key knowledge and experience on a variety of topics. This will be a great learning opportunity for IT professionals, client application users, and our students who are ready to embark their career journeys in Microsoft technologies. We are so thankful to our wonderful speakers, Microsoft MVPs, and Microsoft professionals for submitting their insightful sessions, as without them, this event would not have been possible. I'm really thankful to all our sponsors as Group Group, Massive Global, and Barhead Solutions who have supported us in the overall planning and execution of this event. And last but not the least, thank you to our amazing team of community leaders and volunteers who managed this event working tirelessly over the past few months.
Welcome back, everyone. Again, my name is Yavar, and thanks if you recently have joined. Our next speaker, Muhammad Adil Khan, has arrived, and this session will be in Urdu language. I will love to have you here, but in case if Urdu is not your first language, please feel free and join one of our other sessions, other streams, and the link can be found from Pakistan user groups live page where we have links of all streams. And with that, I will welcome Adil Khan. Uh, Assalamu alaikum. How are you, Adil? वालेकुम अस्सलाम बिल्कुल ठीक ठाक हाउ आर यू यावर जी अदील हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप काइंडली अपना स्क्रीन भी शेयर कर लीजिए। श्योर एंड मैं क्विकली अदील को अपॉर्चुनिटी, अदील खुद इंट्रोडक्शन अपना डिटेल से करवाएंगे। वी आर वेरी ग्रेटफुल। अदील माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं और मुझे एक दो इवेंट्स में मौका मिला है अदील के साथ इन्हें होस्ट करने का। ही इज़ वेरी कैपेबल और हमेशा से कम्युनिटी को बड़ा प्रमोट करते हैं। दैट इज़ रियली ग्रेट। थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस अदील, एंड ओवर टू यू। वेलकम एवरी टाइम, बहुत शुक्रिया। इज माय स्क्रीन विजिबल नाउ? जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए। और अभी अभी आपका व्यू आ रहा है, स्क्रीन शेयर नहीं हुई अभी आपकी। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं हुई। लेट मी ट्राई वन मोर टाइम। जी प्लीज। स्क्रीन शेयर। ओके, लाइव स्ट्रीम है तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो होंगे इधर उधर। बिल्कुल होते हैं, टेक्निकली ऐसा ही होता है। और आपका जी अभी शेयर हो चुकी है, आपको भी ये भी नजर आ रही होगी, Awesome. स्क्रीन पे लोड हो रही है आपकी वीडियो। जी बिल्कुल, That's मुझे great. भी आ रही है। बिल्कुल मुझे भी आ रही That's है। great. थैंक यू सो मच एंड जबरदस्त। ओवर टू यू अदिल। मैं अब बैकग्राउंड में रहूंगा और आपको सपोर्ट करूंगा जहां भी आप मुझे कॉल करेंगे। श्योर श्योर थैंक यू। श्योर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और रियली एक्साइटेड, बहुत खुशी है इस सेशन की। इसमें काफ़ी प्रिपरेशन की है और कुडोस टू द ऑर्गेनाइजर्स जिन्होंने बहुत ही अच्छे स्पीकर्स को ग्लोबली, यू नो आई थिंक ऑलमोस्ट 50 प्लस स्पीकर्स हैं इस सेशन में, उन सबको जमा किया। और ये बहुत ही ज़बरदस्त 3 days ऑफ लर्निंग फेस्टिवल मैं तो कहूँगा अरेंज किया। तो मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ माय, तो कर लेते हैं। लेट मी जस्ट start that. Okay, so मेरा नाम अदील है। आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। करंटली मैं माइक्रोसॉफ्ट सिंगापुर के साथ काम कर रहा हूँ एंड आई वर्क इन फॉर पावर प्लेटफॉर्म एंड डायनामिक्स 365 टीम। माय टिपिकल रोल इज़ अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट रोल, जो कि हेल्प करते हैं प्री सेल्स एंगेजमेंट में एंड इन सम टाइम्स इन पोस्ट सेल्स एंगेजमेंट्स एज वेल, जहाँ पर हम कस्टमर को इंश्योर करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट्स और जो उनकी नीड्स हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इकोसिस्टम या माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस एप्लीकेशन इकोसिस्टम, जिसमें पावर प्लेटफॉर्म आ जाता है, डायनामिक्स 365 के वेरियस मॉडल्स आ जाते हैं, वो उन्हें सर्व करें। तो इट्स अ वेरी एक्साइटिंग रोल, वेरी एक्साइटिंग वर्क ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं तो आपको और ज़्यादा मज़ा आता है इन अ सेंस ये देख के कि आप अगर किसी प्रॉब्लम को, किसी टूल को कस्टमर को इनेबल कर रहे हैं और उनकी ऑटोमेशन को इनेबल कर रहे हैं, तो वो इट्स अ ग्रेट फीलिंग टू हैव। But and that takes me to the second subject, you know, today, and the most important subject of today is that, you know, what is RPA and how RPA is important for us. तो इसमें RPA में जाने से पहले हम थोड़ा सा स्पेंड करेंगे टाइम अंडरस्टैंड करने में कि ये RPA इंपॉर्टेंट क्यों है, या ये सब्जेक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, और व्हाई you know organization like Microsoft has invested so heavily in creating these tools that can help organizations in automation, जो ऑर्गेनाइजेशंस को इनेबल कर रही हैं कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद से भी सॉल्व कर सकें और स्मार्टली सॉल्व कर सकें। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो इम्पॉर्टेंट जो है वो इसलिए है कि एक सिंपल मैटर है। मैटर क्या है जी? कि हमें ये अंदाज़ा है कि हम बहुत से काम कर सकते हैं इन ए बीट ऑन अ पर्सनल लेवल, कि हम पर्सनल प्रोडक्टिविटी में भी हमें लगता है और हमें पता होता है कि यार हम ये भी कर सकते हैं। हम किसी अगर हमें 1 2 3 4 स्टेप्स करने हैं तो वी कैन एक्चुअली डू 5 6 7। बट जनरली चैलेंज क्या होता है? चैलेंज होती है रिसोर्सेज और टाइमिंग, राइट?
टाइम अवेलेबल नहीं होता. वी ऑल नो वी हैव अ लिमिटेड टाइम, राइट, कि जो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑन पर्टिकुलर मैटर. एंड स्पेशली अगर कोई कस्टमर इंगेजमेंट हो तो उसमें आपका टाइम और शॉर्ट से शॉर्ट हो जाता है और क्रिटिकल से क्रिटिकल हो जाता है. तो जो सलाहियतों का सही इस्तेमाल है वो उस तरह नहीं हो पाता, क्योंकि हमें हमेशा ये वक्त का जो वक्त की शॉर्टेज है ना, इसका चैलेंज हमेशा सामने रहता है. और ये चैलेंज सिर्फ वक्त का ही नहीं है, इसके अलावा भी बेतहाशा चैलेंजेस हैं जो आपके पास हम एक्सपीरियंस करते हैं. फॉर एग्जांपल रिमोट वर्किंग चैलेंज, ये चैलेंज जो पिछले 18-19 महीने से हर ऑर्गेनाइजेशन को है, जब से ये कोविड सिचुएशन अनफॉर्चुनेटली हुई है, कि वी हैव ऑल मूव बैक टू आवर हाउसेज एंड वर्किंग फ्रॉम देयर. तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस तो शुरू के 6 से 8 महीने इसी स्ट्रगल में रही कि हाउ टू कम बैक टू 50 और 60% ऑफ दोज प्रोडक्टिविटी, ये जो उन्हें इनेबल कर सके अपने कस्टमर्स को उसी तरह सर्विस करने में, या उनको उसी तरह अपने स्टेक होल्डर्स की एम्बिशंस को भी अचीव करने के लिए, कि अगर उनके कोई सेल्स टारगेट हैं या सर्विसिंग टारगेट हैं या एनपीएस टारगेट हैं तो उनको कैसे अचीव करें. तो वो चैलेंज जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस को रहा. फिर वर्क फ्लोज को स्ट्रीमलाइन करना, कि उन सबको एक जैसे प्रोसेस, एक जैसे बिजनेस प्रोसेस, और कस्टमर के लिए या हमारे एंड यूजर के लिए एक यूनिफिकेशन लाना प्रोसेस की, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन में रहता है. और ऑफ कोर्स इन विद इन ऑल ऑफ दिस हु इज इन सेंटर ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज द कस्टमर. तो कस्टमर डिमांड्स हैव इंक्रीज्ड. आई मीन इवन हम अगर अपनी भी एग्जांपल लें तो ऑल्दो वी अंडरस्टैंड दैट लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जिनसे हम आज रोजमर्रा की बुनियाद पर इंटरैक्ट करते हैं, वो हमारे बैंक्स हो सकते हैं, वो हमारे रिटेल ग्रोसरी शॉपर्स हो सकते हैं, वो हमारी सर्विस इंडस्ट्री की हो सकती है, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन यही होती है कि our things are taken up seriously and done to our satisfaction level. यानी हमें ये पता है कि हम तो मूव नहीं कर सकते, मगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि organizations will find out time to sort out that problem, और वो हमारी lack of movement को एड्रेस करेंगी. तो ऑब्वियसली ये चैलेंजेस जो हैं वो हर किसी एक नए एपिसोड के साथ बढ़ जाते हैं. और मैकेंजी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टडी करी और उन्होंने रियलाइज़ करा कि नॉट ओनली दैट, देयर आर मैनी अदर थिंग्स दैट वी कुड हैव डन, जो हम कर सकते थे एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन एम्प्लॉय, बट नहीं कर सके. लाइक फॉर एग्जांपल 60% ऑफ ऑल ऑक्यूपेशंस, आज जो भी जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं बिजनेस में, जो भी वेरियस रोल्स हैं, उनमें एटलीस्ट 30% टेक्निकली ऑटोमेटेबल एक्टिविटीज कर सकते हैं. वो आज ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जो कि 30% वो ईजिली हैंड ऑफ कर सकते हैं टू एन ऑटोमेशन, और ऑब्वियसली ये 30% टाइम उन्हीं को वापस मिलेगा जो दे कैन इन्वेस्ट इन मैनी अदर थिंग्स. देन ऑफ कोर्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है. 50% का मार्जिन है उसमें प्रोडक्टिविटी इंक्रीज का, और पोटेंशियल है बाय यूजिंग एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी. अच्छा, इसमें भी ये नहीं है कि आपने कोई नई टेक्नोलॉजी लेकर आनी, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी जो आज ऑफर्स हैं, सॉल्यूशंस हैं अवेलेबल मार्केट में, उनको यूज कर सकते हैं. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फास्टर टाइम टू इनसाइट्स. प्रॉब्लम ये नहीं होता है कि आप डिलीवर क्या कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये होता है उस डिलीवर करने के आउटपुट्स क्या हैं, क्या वो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या वो प्रोसेस एक्यूरेट है, क्या बॉटलनेक्स हैं, वो समझने में भी हमें बहुत टाइम लग जाता है. तो ऑब्वियसली ये वो चैलेंजेस हैं जो कि आज एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस फेस कर रही हैं, और वो अगर ऑटोमेशन उस तरह नहीं अडॉप्ट करेंगी या उस तरह उनके पास टूल्स अवेलेबल नहीं होंगे जहां पे वो हर लेवल पे ऑटोमेशन ला सकें, वो स्ट्रगल करती रहेंगी और अब ऑब्वियसली इवेंचुअली अपने कंपेटिटर्स को लूज करेंगी. इसी प्लेस को फिल करने के लिए और इस गैप को फिल करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट हैज इन्वेस्टेड हेवीली इन पावर प्लेटफॉर्म एंड स्पेसिफिकली इन पावर ऑटोमेट. पावर ऑटोमेट में इन्वेस्टमेंट्स जो है वो कमाल की हुई हैं पिछले साल भर में, और उसके रीजंस भी क्लियर हैं, क्योंकि ये ऑटोमेशन सोल्यूशन जो है ये आपके जो कोर प्रॉब्लम्स हैं around productivity acceleration, around automation at scale के बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारी लेगेसी एप्लीकेशंस को भी उस ऑटोमेशन का हिस्सा बना सकती हैं. कि ये नहीं होगा कि जी फाइनेंस अगर कोई 10 साल पुरानी ऐप यूज कर रहा है तो वो ऑटोमेशन से बाहर हो गए. नहीं, इट गिव्स यू दैट अपॉर्चुनिटी कि जो मुश्किल पहाड़ जैसे सॉल्यूशंस हैं जिनको हिलाना इतना आसान नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से,
उनको भी आप जो है वो एसेंशियली ये ऑटोमेशन में या डिजिटाइजेशन में इनकॉर्पोरेट कर सकें, और उनको भी उस जो टारगेट्स हैं आपके, जिसमें हम ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं, वर्कफोर्स को और टाइम देना चाहते हैं जो कि वो इधर अपने पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें या ऑर्गेनाइजेशनल प्रोडक्टिविटी के लिए यूज करें, वो हम इवेंचुअली दे सकें। तो जैसे सत्या ऑलवेज कीप सेइंग डेमोक्रेटाइजिंग टेक्नोलॉजी, सो वो कर सकें, एंड फॉर दैट पावर ऑटोमेट इज अ ग्रेट टूल ऑन अ पर्सनल लेवल as well as on the organization level. And how it does that, obviously it's not a detailed power automates session. हमारा एक focus आती है, तो I would invest more time over there, but just to give you a view on one single slide कि वो कैसे करता है, by giving you an ability to integrate with many line of business applications. So hundreds and hundreds of triggers. I think right last count was around 480 plus connectors that are available today, जिसमें आप डेटा इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, जिसमें आप प्रोसेस इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, और फिर उनकी सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं है, इंटीग्रेशन है विद इवेंट्स, क्योंकि आपने सिर्फ लेम इंटीग्रेशन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन नहीं करनी है, आपको समझना है कि उस सिस्टम में अगर कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। तो दैट ट्रिगर अवेलेबिलिटी इज देयर। देन ऑफिस और डायनेमिक्स और एजूर की जो इन्वेस्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी कर चुकी हैं, यानी बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आज दुनिया में ऑफिस 365 को यूज़ करती हैं, और फॉर अमेजिंगली कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस यूज़ करती हैं, उनको ये चांस देना कि वो उसको एलिवेट कर सकें फर्दर। तो वो उसी ऑटोमेशन टूल को, जो कि एम्प्लॉय ऑटोमेशन है, उसको एक वन स्टेप फॉरवर्ड लेके जा सकें। इसी तरह ना सिर्फ वो कि जो डायनामिक्स या माइक्रोसॉफ्ट की बिजनेस एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स हैं, बल्कि गोइंग आउटसाइड, ब्रिंगिंग थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस, जो लेगेसी सॉल्यूशंस हैं, उनको भी लेकर आए, एंड देन not to forget the infusion of AI. AI has become such a critical and important element in our industry, in our lives. तो उसको हमने भूलना नहीं है, and obviously Power Platform is also not forgetting it. It is giving you a chance, Power Automate is giving you a chance to bring those AI enablement, जो कि simple sentiment analysis भी हो सकती है कि भाई किसी कस्टमर की ईमेल आई और हमें ये समझना है कि कस्टमर नाराज है, खुश है, या हमें समझ न्यूट्रल है, उसके हमें हम उसको मूव नहीं कर पा रहे हैं उस NPS की तरफ या उस खुशी की तरफ जो कि उसे और बिजनेस या और सर्विसेज की तरफ माइल करे, तो हम ये भी समझ सकते हैं। अगर हमें सिंपल यही समझना है कि भाई उसने जो ईमेल भेजी है इसका कंटेंट क्या है, क्या मसले हैं जो उनको सॉल्व करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दोज कैपेबिलिटीज आर अवेलेबल टुडे। अच्छा, सो पावर ऑटोमेट, क्लाउड फ्लोज और डेस्कटॉप फ्लोज और बिजनेस प्रोसेस, ये 3 कॉम्बिनेशन है जो कि पावर ऑटोमेट को आपके पास इनेबल करते हैं। क्लाउड फ्लोज में I'll skip forward a bit faster. So cloud flows gives you an ability to work with many processes जो कि आप cloud based processes बना सकते हैं, but obviously cloud is a one way of solving problem, but is not the ultimate way of solving problem. Then you've got those additional business processes जहाँ पे आपकी data and services enable हो जाती हैं। This is the place where you get ability to integrate with legacy application and bring those legacy application on board, or core business applications or data from those application on board as well. और then finally इन सब process को आप पावर ऑटोमेट आपको इनेबल करता है कि आप इनको फॉरवर्ड करें टू applications, to other environments where they can actually move ahead and bring that experience at the desktop or at the mobile or at the front of your employees. तो employees के लिए वो enablement भी इसमें available हो जाती है। So these are the 3-4 areas जिसमें again हमारा focus आज today power RPA की तरफ है, और अब हम डीप डाइव करेंगे RPA के अंदर और समझेंगे कि RPA क्या है। तो आइए जानते हैं आरपीए के बारे में और आरपीए की ऑफरिंग्स के बारे में। तो आरपीए की ऑफरिंग्स जो है वो बड़ी सिंपल है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन को पावर ऑटोमेट के अंदर इट इज कॉल्ड एज पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप, बिकॉज ये सोल्यूशन जो है जो कि आप डेस्कटॉप पे डिप्लॉय करते हैं, इंस्टॉल करते हैं
और आप रन करते हैं। एंड पर्पस इसका बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसका पर्पस है आपका वो वाला प्रॉब्लम सेट जो पहाड़ में पिछली अभी कुछ मिनट पहले कह रहा था कि वो पहाड़ एप्लीकेशंस जिनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। एक एप्लीकेशन है जो कि विजुअल बेसिक 6 पे बनी हुई है, 20 साल से ऑर्गेनाइजेशन में चल रही है एंड वर्किंग फाइन, तो आप उसे ब्रेक नहीं करना चाहते। ऑफ कोर्स इट इज सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, राइट? मगर आप ये भी चाहते हैं कि अब वो प्रोसेस जो है वो ऑटोमेटेड हो जाए, तो उसको आप ह्यूमन एरर फ्री कर सकते हैं एंड और उसको आप जो है मोर इनोवेटिव कर सकते हैं इन अ सेंस कि वो इंटीग्रेट कर जाए एआई के साथ, वो इंटीग्रेट कर जाए स्मार्ट बिजनेस प्रोसेसेस के साथ। सो इट गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म कि जहां आप वो पुरानी एप्लीकेशंस को, वो प्रोसेसेस जो ह्यूमन बेस्ड प्रोसेसेस हैं, एक कस्टमर के साथ हमारी इंटरेक्शन हो रही थी और उन्होंने बताया कि किसी भी नए एम्प्लॉय को ऑनबोर्ड करने के लिए उनको एक जैसी इंफॉर्मेशन जो है वो 37 सिस्टम्स में ऐड करना पड़ती है। यानी आप 37 टाइम्स रेप्लिकेट करते हैं एक जैसी इंफॉर्मेशन, लाइक नाम, मुकम्मल नाम, उनका आईडी का नंबर और डेट ऑफ बर्थ और इस तरह की बेसिक इंफॉर्मेशन वो 37 सिस्टम्स में वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो उस तरह के प्रोसेसेस को ऑब्वियसली आप एलिमिनेट कर सकते हैं ब्रिंगिंग आरपीए। सो आरपीए आपको क्या लेकर आएगी? आपके पास लेकर आएगी प्रोसेसेस को आसानी से बनाने की एबिलिटी, बॉटलनेक्स रिमूव करने की एबिलिटी एंड ऑफ कोर्स जब आपके पास ये दोनों एबिलिटी आ जाएंगी तो आप उसको ऑटोमेशन को स्केल, हाईएस्ट स्केल पे कर सकते हैं जहां बहुत से डिफरेंट रोल्स भी इंगेज हो सकते हैं। अच्छा, आरपीए दो तरह के वर्जन इस वक्त अवेलेबल हैं मार्केट में। अगेन गोइंग बैक टू द विजन ऑफ सत्य एंड अकेला, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ और डिजिटाइजेशन फॉर एवरीवन, और डेमोक्रेटाइजिंग द डिजिटल कैपेबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कैपेबिलिटी फॉर एवरीवन। तो वो एज विंडोज 10 यूजर, सो कोई भी यूजर जिसके पास आज विंडोज 10 का लाइसेंस है, दे कैन एक्चुअली स्टार्ट यूजिंग पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप। उनके पास पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप की एप्लीकेशन डिप्लॉय करने का अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद दे कैन स्टार्ट यूजिंग दैट एप्लीकेशन टू ऑटोमेट देयर एक्टिविटीज। जैसे मुझे प्रॉब्लम है कि भाई मैं 5 सिस्टम्स में एक जैसा डेटा इंटर करता हूँ एक्सेल फाइल में से निकाल कर, तो अब मैं इस प्रोसेस को अगर ऑटोमेट करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरे इस कॉपी पेस्टिंग में या इधर इंफॉर्मेशन को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ले जाने में गलतियां ना हो, तो मैं इजीली पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप को यूज कर सकता हूँ। उसमें ड्रैग एंड ड्रॉप से, एंड विल सी जस्ट नाउ आफ्टर अ मिनट कि वो किस तरह कर सकते हैं, वो करके और मैं उस प्रोसेस को क्लियरली क्रिएट कर सकता हूँ। तो उसमें मुझे क्या फायदा है? ऑब्वियसली मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मेरे पास एक सिंगल बटन होगा, मैं जाऊंगा कहूंगा भाई ये प्रोसेस चला दो, और सिस्टम विल ऑटोमेटिकली अपडेट दैट एक्टिव एक्शंस। और इस दौरान अगर मुझे कोई और अपना काम करना है या कोई और मुझे काम नहीं भी करना है, मुझे चाय बनानी है अपने लिए, तो मैं एक्चुअली आई कैन गो अहेड एंड डू दैट, राइट? सो इट रियली ब्रिंग्स दैट एबिलिटी कि जहां पे आपके पास टाइम स्पेस भी आ रहा है एम्प्लॉय के पास, और दूसरा ये कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ी है, क्योंकि आप गलतियों को जो है वो ह्यूमन एरर जो आप मिस्टेक कर सकते थे पोटेंशियली, वो आप उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। फिर इसी को अगर आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ले जाएं, यहाँ प्रीमियम आपको जरूरत है, प्रीमियम लाइसेंस, प्रीमियम कनेक्टर्स की जरूरत है, तो और आपको क्लाउड फ्लोज के साथ इंटरैक्ट भी करना है। यहाँ पे मुझे जरूरत है कि यार अगर कोई इवेंट एक्सटर्नल एप्लीकेशन में हो रहा है तो वहां से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके रन करना है और वो डेटा लेकर आना है उस एप्लीकेशन पे जो मेरे पास ऑन प्रेम चल रही है। You would be able to do that, and this is again just a one example, but there could be plenty of examples जहां पे आपके प्रीमियम लाइसेंसेस, प्रीमियम एक्टिविटीज की जरूरत है, तो वहां पे आप then you can upgrade from a desktop to a RPA premium license, where desktop would become enabled with many more capabilities, especially around cloud flows and cloud flow interactions. ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि एक्चुअली ये सिस्टम आरपीए का दिखता कैसे है। अच्छा, तो अगर मैं ये ऐप खोलूं तो दिस इज दी पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप ऐप। अच्छा, ये ऐप जो है लाइक आई सेड कि जैसे ही आप विंडोज 10 यूजर हैं तो यू कैन एक्चुअली डाउनलोड दिस पर्टिकुलर ऐप एंड स्टार्ट यूजिंग इट। तो जब मैं एज अ विंडोज यूजर यूज करता हूँ तो इट डजंट शो मी द एनवायरनमेंट्स ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसके लिए एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मशीन पे चलेगी, बट इट विल गिव मी दोज कैपेबिलिटीज जो मुझे चाहिए। यानी मुझे कोई ऑटोमेशन अपने लिए करनी है तो मैं वो अपनी मशीन पे कर सकता हूँ। मैं उन ऑटोमेशन को शेयर नहीं कर पाऊंगा अपने कोलीग्स के साथ, मगर मैं अपनी जो है वो प्रॉब्लम्स को एटलीस्ट सॉल्व कर सकता हूँ और उन्हें बता सकता हूँ भाई कैसे कर सकते हैं। तो वो भी इवेंचुअली अगर उन्हें भी उसी तरह का सिमिलर प्रॉब्लम है, दे कैन एक्चुअली डू दैट। बट जैसे ही मैं प्रीमियम लाइसेंस पे जाता हूँ तो वहाँ मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है, उसी तरह जैसे आपके पास टिपिकल पावर प्लेटफॉर्म में होती है, क्या क्या वेरियस एनवायरनमेंट्स आ जाती हैं, यहाँ पे मैं डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में डिफरेंट प्रोसेसेस क्रिएट कर सकता हूँ और उनसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ। अब अगर हम एक सिंपल प्रोसेस को देखें, यहाँ पे आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड दिस, और बहुत ही सिंपल है तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इतनी साइंस नहीं है। तो
अगेन पावर प्लेटफॉर्म इज फॉर सिटीजन डेवलपर फर्स्ट, तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज जो है वो होती नहीं है. जनरली इट्स द होल प्रोसेस इज ड्रैग एंड ड्रॉप या कॉन्फ़िगरेशनल प्रोसेस होता है. तो उसके लिए आपको पहले से किसी भी प्रीवियस टूल का या आरपीए का एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है. यू शुड बी स्टिल बी एबल टू डिलीवर दोज कैपेबिलिटीज व्हाइल यूजिंग दिस एनवायरनमेंट. ऑलराइट, तो ये तो मुश्किल वाला है, पहले हम ये अलग खोल लेते हैं. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो जब आप एक नया प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो आपके पास पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप का विजुअल डिज़ाइनर ओपन हो जाता है. ये विजुअल डिज़ाइनर जो है ये आपको इसके 3 मेन एलिमेंट्स हैं. एक्शन सेंटर है जहाँ पे आपके सारे एक्शंस हैं. यहाँ पे आपके फ्लोज क्रिएट होता है. तो जो फ्लो और एक्टिविटी का फ्लो है कि वो सीक्वेंस है वो यहाँ पे आपके पास आ जाता है. एंड देन यू विल बी एबल टू डिफाइन वेरिएबल्स. और वेरिएबल्स का पर्पस अगेन वेरी क्लियर है कि वो या तो आपके पास इनपुट वेरिएबल्स होंगे जो आप उस प्रोसेस को प्रोवाइड करेंगे. जैसे कि मुझे लेट्स से अगर मैं अगेन उसी एग्जांपल पे जाऊं जहां पे मुझे कस्टम यूजर को ऑनबोर्ड करने के लिए उसकी लेट्स से 7-8 इंफॉर्मेशंस जो है वो सिस्टम को प्रोवाइड करनी थी और वो फिर रेप्लिकेट होती हैं 50, 60, 36, 50 जितनी सिस्टम्स हैं उनमें होती हैं. तो उनके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनपुट वेरिएबल्स एक दफ़ा डिफाइन करने होंगे और फिर ये वेरिएबल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली आई कैन यूज देम इनटू अ फ्लो. आई कैन मैप देम कि भाई जब आप ये एप्लीकेशन यूज कर रहे हो तो इसको करो, जब ये आप इस एप्लीकेशन में है तो वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल से इन्फॉर्मेशन उठाओ. एंड विल सी दैट इन अ मिनट एज वेल कि वो किस तरह करते हैं. अच्छा, देन वी कम हियर टू द मेन फ्लो सेक्शन. इस फ्लो सेक्शन में क्या है कि आप यहाँ से अपने जो भी एक्शन है वो आप सेलेक्ट करते हो. फॉर एग्जाम्पल कंडीशनल एक्शंस हैं, फॉर एग्जाम्पल सिस्टम एक्शंस हैं, कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है, डॉस की कमांड रन करनी है. आपको सिंपल जैसे मैंने यहाँ पे एक एक्शन डाला हुआ है लॉन्च एक्सेल का, तो एक्सेल से रिलेटेड जो है वो बेतहाशा फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं. इनफैक्ट मैं किसी एक्सेल का मैक्रो भी एग्जीक्यूट कर सकता हूँ यहाँ पर. तो इस तरह आप जो है वो पिक कर सकते हैं ये एक्शंस. और जैसे अगर मैं इसको पिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करूँ तो इट्स जस्ट अ सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप. एंड एट द टाइम ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम मुझसे पूछ लेगा कि भाई आपने करना क्या चाहते हैं, कौन सी फाइल खोलनी है, कोई नई एक्सेल लॉन्च करनी है, कोई एग्जिस्टिंग एक्सेल लॉन्च करनी है. तो उस तरह की बेसिक फीचर्स आप उसमें डिफाइन कर सकते हैं. और इसके साथ साथ आप यहाँ पे उस वेरिएबल को भी डिफाइन कर देते हैं जो इस एक्सेल का हुक बन जाता है. मतलब ये कि अगर मुझे कल को इसी प्रोसेस में आगे जाकर इसी एक्सेल को रेफर करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखें तो एक और वो है क्लोज एक्सेल का या सेव एक्सेल का है एक्शन यहाँ पर. तो इन दोनों एक्शंस में मुझे सिर्फ और सिर्फ इस वेरिएबल का नाम पास करना होगा और कहना होगा कि भाई देखो मैंने 2 एक्सेल फाइल्स खोली थी, एक्सेल फाइल 1 और एक्सेल फाइल 2. एक्सेल फाइल 2 को सेव करके क्लोज कर दो, एक्सेल फाइल 1 में कुछ और डेटा अपडेट कर दो. तो आप इस तरह के एक्शंस को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं. यानी आपको मैनुअली फिर कुछ करने की एज सच और रिपीटेबल एक्शंस को करने की जरूरत नहीं रहेगी. तो जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास एक एक्सेल यहाँ पे मैंने इसको क्रिएट किया हुआ ही है और उसमें मैंने उससे कहा है कि भाई एक ब्लैंक एक्सेल खोल दो और द मोमेंट आई क्रिएट दैट एंड सेव इट आई एम नाउ एबल टू रन दिस. तो मैं इमीडिएटली इसको एग्जीक्यूट करके देख सकता हूँ कि इसका इनपुट क्या है. तो अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ इस वक्त तो ये क्या करेगा कि ये सिंपल एक एक्शन है इसके अंदर. ये देखें आप यहाँ पे ये स्टार्ट हो चुका है और इसने मेरी सेकंड स्क्रीन के ऊपर एक नई एक्सेल शीट इमीडिएटली खोल दी. तो इस तरह एक सिंपल प्रोसेस, सिंपल एक्शन आप ऑटोमेटिकली क्रिएट कर सकते हैं. और अगर जैसे अभी तो मैं यहाँ डिज़ाइनर से इसे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ कि लेट्स से अगर मुझे यही प्रोसेस जो है वो नॉर्मल डेली बेसिस पे एग्जीक्यूट करना है एट पर्टिकुलर टाइम, तो मैं यहाँ आके भी इसको प्ले कर सकता हूँ. और जैसे ही मैं इसे प्ले करूँगा इट विल स्टार्ट रनिंग और अगेन वो क्या करेगा कि वो सिंपल एक्सेल फाइल को मेरे लिए खोल देगा, जिस तरह इसने दोबारा मेरे दूसरी स्क्रीन पर खोल दिया है. तो वो सिंपल एक एक्सेल फाइल को मेरे लिए दोबारा खोल देगा. ये देखें दूसरी भी आ गई यहाँ पर. तो वो जो भी एक्टिविटीज जो भी प्रोसेस में डिफाइन करूंगा वो उन्हें इस तरह एग्जीक्यूट करता चला जाएगा. अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं, राइट, कि ऑब्वियसली सारे बिजनेस प्रोसेस अगर इतने ही आसान होते तो फिर उनके लिए ऑटोमेशन और डिजिटाइजेशन की ज़रूरत ही क्या होती, राइट. तो अगर हमने इसको और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लैब है जो कि RP इन अ डे के नाम से मशहूर है और बहुत ज़बरदस्त लैब है. इस लैब को ये लैब जो है इसका पर्पस ही है कि ये आप जो है अगर आप RPA के लिए न्यू हैं और आप इसको सीखना चाहते हैं तो ये एक बड़ा
क्लियर कट बिजनेस प्रोसेस आपको देती है, जो कि यानी जैसे कि इसके अंदर वो डिफाइन कर रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर आपको जो है वो इनवाइस भेजता है, उस इनवाइस को रिसीव करने के बाद आप जो है वो चाहते हैं कि उस इनवाइस का इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करें, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको जो है वो आप टीम्स के अप्रूवल के लिए भेज दें, जहाँ पे एक मैनेजर उसको रिव्यू करे कि हाँ ये डिटेल्स ठीक हैं, और उसके बाद उनको अप्रूव करे, और जैसे ही वो अप्रूव हो जाए तो वो एक लेगेसी एप्लीकेशन के अंदर जाके एग्जीक्यूट कर जाए और जाके वो डेटा अपडेट हो जाए। तो इट्स अ ग्रेट प्रोसेस, ग्रेट वे ऑफ लर्निंग, बिकॉज आपको वो बिल्कुल तोड़ तोड़ के क्लाउड फ्लो, डेस्कटॉप फ्लो, इंटीग्रेशन, ऑन प्रेम गेटवे की इंटीग्रेशन, उन सब चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझा देगा और यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दैट। इनफैक्ट उसके अंदर वेब ऑटोमेशन भी है, यानी आप ना सिर्फ थिक क्लाइंट एप्लीकेशन जो कि लेगेसी एप्लीकेशन होती हैं, जैसे मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी विजुअल बेसिक वाली, उस तरह की एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बल्कि आप ब्राउजर पे भी जाके एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे उसमें एक स्टेप है जहाँ पे आप करेंसी कन्वर्जन के लिए आप जाएंगे और करेंसी कन्वर्जन की बिंग की साइट पे आप उसको पोस्ट करेंगे डॉलर वैल्यू, और उसकी जो है वो पॉन्ड वैल्यू एक्सट्रैक्ट करके अपनी एक्सेल शीट में अपडेट करेंगे। ऑलराइट, तो अगर हमें इस तरह का एक सिंपल फ्लो बनाना हो तो किस तरह बनाएंगे, तो लेट्स ट्राई टू सी दैट एज वेल। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी फ्लो क्रिएट किया हुआ है, बट मैं उसके कुछ स्टेप्स आपको करके दिखा देता हूँ एंड देन विल कम बैक हियर बिकॉज अगेन टाइम इज शॉर्ट। तो अगर मुझे एक कॉम्प्लेक्स इनवॉइस प्रोसेस बनाना हो एक लेगेसी ऐप के लिए, लेट्स से ये मेरे पास एक कंटोसो इनवॉइसिंग की लेगेसी ऐप है। इस ऐप के अंदर मेरे पास जो है वो यहाँ पर इनवॉइसेस का टेबल है। इस तरह की ऐप्स हम सब ने जो है वो ज़रूर, स्पेशली जो लोग इंडस्ट्री में कुछ अरसे से उन्होंने ज़रूर देखी होंगी, और ये इन ऐप्स का यूजेज भी नागुज़ीर है। आई मीन आप यू कांट लिव विदाउट देम बिकॉज वो सही होती हैं, वो काम कर रही होती हैं, देयर इज़ नथिंग ब्रोकन इन देम। तो फिक्स करने के लिए कॉस्ट लगाना जो है वो डजंट मेक सेंस। तो इसमें जो है वो इनवॉइसेस हैं, और अगर मुझे कोई भी नई इनवॉइस ऐड करनी हो तो सिंपल प्रोसेस है, मेन्यू रिकॉर्ड को क्लिक करता हूँ, उसके बाद उसमें डेट, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अमाउंट की इन्फॉर्मेशन और क्या उसका स्टेटस है, इनवॉइस है, अनइनवॉइस्ड है, पेड है, वो अपडेट करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। अच्छा, अगर उसी को लेट्स से अब इस प्रोसेस को अगर बार बार होना है, या जैसे कि इसको मैंने ऑटोमेट करना है कि मैं इनवॉइस का डिटेल पढ़ने के बाद ना अपडेट करूँ, रादर देन जैसे ही वो इनवॉइस मेरे ईमेल अकाउंट पे रिसीव हो, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए, तो वो कैसे होगा वो हम अब देखते हैं। अच्छा, उसको देखने के लिए सबसे पहले तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि हमें अपनी मशीन के ऊपर एक ऑन प्रेमाइज गेटवे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप पावर ऑटोमेट के ऊपर जाते हैं, यानी पावर ऑटोमेट के इन्वायरमेंट में जाएंगे अगर आप क्लाउड इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आता है पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप और ऑन प्रेमाइज गेटवे के डाउनलोड करने का। तो ऑब्वियसली ऑन प्रेमाइज गेटवे इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको अलाउ करेगा उस ऐप और उस मशीन पे कनेक्ट करने के लिए, और इट विल यूज योर क्रेडेंशियल्स, तो वो आपकी क्रेडेंशियल्स को यूज करके लॉगिन करेगा। और पावर ऑटोमेट में जो क्लाउड और ऑन प्रेम की इंटरेक्शन है, यानी डेस्कटॉप फ्लो एंड दी डिजिटल प्रोसेस फ्लो, ये आपको वहाँ पे चांस देगा कि आप इन दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अच्छा जी, तो वी विल गो बैक टू आवर the process that we wanted to create। तो अब जाते हैं यहाँ पे एक नया प्रोसेस क्रिएट करते हैं और इसे कहते हैं उर्दू हिंदी सेशन। ऑब्वियसली आप ये नाम मत दीजिएगा, आप कोई बेहतर नाम दीजिएगा, ये तो जस्ट फॉर रेफरेंस है। तो अगेन मेरे पास उसी तरह एक जैसे एक्सेल के लिए ओपन एक्सेल वाला प्रोसेस था, उसके लिए एक प्रोसेस खुल जाएगा, एक विजुअलाइजेशन इन्वायरमेंट खुल जाएगी जहाँ पे अब मैं अपनी एक्टिविटीज़ को कैप्चर कर सकता हूँ। तो पहला काम मैंने क्या करना है, पहला काम मैंने जो है वो एक ऐप रन करनी है। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ एक कंटोसो ऐप है, मुझे इस ऐप को रन करना है। तो इस ऐप को रन करने के लिए मुझे इस ऐप का लोकेशन पता होना चाहिए। तो आई कैन एक्चुअली गो बैक टू प्रॉपर्टीज़, यहाँ से उसका जो एड्रेस है इनवॉइस ऐप का, आई कैन एक्चुअली पिक इट अप। तो मैं इस ऐप को रन करने के लिए यहाँ पे सिंपल ये लिखता हूँ कि रन लिखता हूँ। लेट्स से आई एम न्यू टू दिस, आई डोंट नो व्हाट टू डू, तो मैं जो भी सोच रहा हूँ मैं उसको लिखता जाऊँगा और देखूंगा किस तरह सिस्टम जो है उसको रिस्पॉन्ड करता है। तो ऑब्वियसली रन एप्लीकेशन का मुझे जो है वो एक्शन मिल गया, इस एक्शन को मैं यहाँ ड्रॉप करूँगा। तो ड्रॉप करते ही मुझसे पूछेगा कि भाई कौन सी एप्लीकेशन है, कैसे एग्जीक्यूट करनी है, एंड दिस इज वेयर आई कैन एक्चुअली ब्राउज टू द लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऐप। तो लेट्स डू दैट।
ये ऐप जनरली इस तरह के ऐप सी ड्राइव्स में प्रोग्राम फाइल्स में होती हैं। तो अगेन मैंने कॉपी करके रखा था वो एड्रेस पहले से, तो आई जस्ट लैंड देयर। ये वो ऐप है जो एग्जीक्यूटेबल है जो मैंने एक्चुअली ओपन करनी है, एंड आई एम गोना सेलेक्ट दैट। अच्छा, अब इस ऐप में अगर कोई और ख़ास पैरामीटर्स हों, कोई अपडेट्स हों, तो वो भी आप एक्चुअली इसमें पास कर सकते हैं, बट जनरली इन ऐप्स में इतने कुछ ऐसी साइंस होती नहीं है। तो वो आपको यानी जो भी है वो उसके लिए आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। लाइक अगर इसमें कोई इनपुट्स, कमांड लाइन आर्गुमेंट इनपुट्स जा रहे होंगे तो वो भी आप दे सकते हैं, अगर नहीं है तो वो भी इट्स ओके। देन आई एम गोना सेव दिस। इट मीन्स कि ये एक एप्लीकेशन रन करने का प्रोसेस मेरा बन गया, ठीक है। अब मैं अगर इसको रन करूंगा यहाँ पर, तो व्हाट इट विल डू, इट विल ओपन अप दैट कंटोसो ऐप। तो वो कंटोसो ऐप खुलना शुरू हो जाएगी, और वो जैसे आपने यहाँ देखा वो ऑटोमेटिकली खुल के मेरे पास आ गई। नाउ द नेक्स्ट एक्शन आई वांट टू डू इज, इसमें मुझे वो सारे एक्शन रिकॉर्ड करने हैं, यानी कि इनवॉइस पे जाने का एक्शन, न्यू को क्लिक करने का एक्शन, रिकॉर्ड देने का एक्शन। तो ये सारे एक्शंस मुझे चाहिए इसमें होते हुए, राइट। तो लेट मी जस्ट क्लोज दिस, ओपन इट अगेन। ओके, तो अब हम वो एक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, और उन एक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर ये वेब एप्लीकेशन होती तो मैं वेब रिकॉर्डर पे चला जाता, अगर क्योंकि अब ये डेस्कटॉप है तो आई विल गो टू द डेस्कटॉप रिकॉर्डर, और इसको मैं क्लिक करता हूँ तो एक एडिशनल टूल मेरे पास ओपन हो जाएगा जिसे डेस्कटॉप रिकॉर्डर कहते हैं। अब ये टूल जो है मुझे बताएगा कि क्या क्या एक्टिविटीज़ मैं रिकॉर्ड करता चला जा रहा हूँ। जैसे अब ये रिकॉर्डिंग इसकी स्टार्ट हो चुकी है, नाउ आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। अब ये देखें आप, ये कैप्चर कर रहा है स्क्रीन के कंपोनेंट्स को। तो कि मैंने जैसे ही इनवॉइस पे क्लिक किया, उसमें वहाँ उसने कैप्चर कर लिया कि यूआई एलिमेंट है इनवॉइस का, इसको आपने क्लिक करना है। देन आई एम गोना गो एंड क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर न्यू रिकॉर्ड, उसने उसको भी कैप्चर कर लिया। फिर यहाँ पे आने के बाद अब मैं इनपुट दूंगा, तो जैसे यहाँ पे मैं लिखूंगा अकाउंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा कॉन्टैक्ट, यहाँ पे मैं लिखूंगा अमाउंट। तो अमाउंट लेट्स से $100। तो अब मैं इसको ट्रेन कर रहा हूँ कि भाई आपने एक्शंस करने क्या है, परफॉर्म क्या करने हैं। इनवॉइस्ड, और उसके बाद सेव, और आखिरी एक्शन क्लोज कर दो है। एंड वंस आई एम डन विथ माई एक्टिविटीज आई एम गोना फिनिश इट। तो अब क्या हुआ है कि वो सारी एक्टिविटीज जो मैंने कैप्चर की हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज अ यूआई एलिमेंट्स मेरे पास अवेलेबल हो गई हैं। अब उसमें ऑब्वियसली मैं अपडेट कर सकता हूँ कि इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं इसको अभी रन करूंगा तो ये जो भी मैंने इनपुट दिया था, जैसे अकाउंट, कॉन्टैक्ट एंड $100, इट विल क्रिएट दैट रिकॉर्ड्स एंड स्टार्ट अपडेटिंग। मगर मैं क्या करता हूँ, टू सेव टाइम इसको अभी रन नहीं करता, बल्कि यहाँ पर अपने क्योंकि ये फील्ड्स ऑब्वियसली इनपुट जो है वो अकाउंट, कॉन्टैक्ट और $100 तो नहीं होगा ना, तो हमें एक्चुअल वैल्यूज चाहिए। तो एक्चुअल वैल्यूज के लिए हमें इनपुट वेरिएबल्स बनाना पड़ेंगे, और यहाँ जाके मैं इनपुट वेरिएबल्स बना देता हूँ। तो पहला मेरा इनपुट वेरिएबल होगा अकाउंट का, और उसमें मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू डाल दी माइक्रोसॉफ्ट, और इसका एक्सटर्नल नेम, यानी अगर कोई एप्लीकेशन इस और क्लाउड फ्लो इसको बाहर से एक्सेस करना चाहे तो उसको ये वेरिएबल क्या नाम से मिलेगा, तो मैं उसमें डाल देता हूँ अकाउंट नेम। अच्छा, इसी तरह मैं दूसरा प्रोसेस बना सकता हूँ यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स का। तो आई एम गोना क्विकली डू दैट। कॉन्टैक्ट, डिफ़ॉल्ट वैल्यू अदील, एंड here it is contact name, और फाइनली हमारा लास्ट अमाउंट, डॉलर वैल्यू 200 कर लेते हैं अभी, ताकि हमें डिफरेंस पता चले, और अमाउंट वैल्यू। ठीक है, तो अब आप देखें यहाँ पे अभी भी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ वेरिएबल्स बन गए मेरे पास, मगर अभी भी वो मैप नहीं हुए हैं फील्ड वैल्यू से। तो अब मुझे लास्ट स्टेप करना है इन फील्ड वैल्यूज पे मैप करने का। तो वो कैसे करूंगा, मैंने इस पर डबल क्लिक किया, उसने इस डिटेल को पूरा एक्सपोज कर दिया मुझे कि भाई ये एक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन है, और ये इसमें इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है। तो आई कैन नाउ क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर एक्स और से कि भाई इस एक्शन के साथ आप अकाउंट के ये वेरिएबल को मैप कर दो। सो नाउ व्हाट इट विल डू इज कि वो अकाउंट की जगह जो भी इस वेरिएबल की वैल्यू होगी वो उसे मैप कर देगा। सिमिलरली मुझे यही एक्शन यहाँ पे कॉन्टैक्ट के साथ भी परफॉर्म करना पड़ेगा, और कॉन्टैक्ट को कर देते हैं, और फाइनली हम कर देते हैं अमाउंट के लिए। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है कि ये सारे एक्शंस हमारे
इन वेरिएबल बेस्ड हो गए हैं। तो अगर अब मैं इसको रन करता हूं तो ये मुझसे पहले पूछेगा कि भाई इन वेरिएबल्स को वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा, अगर इनकी डिफॉल्ट वैल्यू एग्जिस्टिंग है तो उन डिफॉल्ट वैल्यूज को एग्जीक्यूट कर देगा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमने डिफॉल्ट वैल्यूज बताई हुई हैं तो ये उसमें चला गया। थोड़ी सी मैपिंग का इशू है इसके अंदर, मैंने गलत मैपिंग कर दी है डेट्स के लिए, तो वो अगेन मैं दूसरा प्रोसेस आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि वो इसको हम करेक्ट करने के बजाय दूसरे पे डायरेक्टली चले जाए। तो let me go there and showcase that. All right, let's run this one. तो ये बिल्कुल परफेक्टली बना हुआ है, जिसमें ये वही कॉन्टोसो ऐप को भी रन करेगा, ओपन करेगा और जो फील्ड इनवॉइस वेरिएबल्स हैं उन सब में प्रॉपरली इंफॉर्मेशन को, अकाउंट नेम, कॉन्टैक्ट नेम, 500 इनवॉइस, सब इंफॉर्मेशन प्रॉपरली अपडेट कर दी। तो वो सिमिलर वेरिएबल्स हैं, वही उनसे अपडेट्स हो गई और आपका एक फ्लो तैयार हो गया जो कि अब आपको अवेलेबल है वेरिएबल बेस्ड, यानी इसमें जो भी वेरिएबल में वैल्यू आएगी वो उस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर देगा इनटू अ सिस्टम। ठीक है, अब हम करते हैं क्या कि इस फ्लो को जो इस वक्त मेरी मशीन पे एग्जिस्ट करता है, दिस इज अ फ्लो दैट इज ऑन माय मशीन ओनली, अब हम इसे इंटीग्रेट करते हैं विद द क्लाउड फ्लो और उसके लिए देखते हैं कि हमें क्या स्टेप्स परफॉर्म करना पड़ते हैं और वो कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये आपने देखा होगा कि अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी, इट इज प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, राइट। अच्छा, उसके लिए हमें क्या करना है कि अब हम आ जाएंगे अपने क्लाउड फ्लो इन्वायरमेंट के लिए, पावर ऑटोमेट की ब्राउजर बेस्ड इन्वायरमेंट में, जहाँ पे हम जाके एज अ न्यू फ्लो क्रिएट कर सकते थे। इट कुड बी ऑटोमेटेड फ्लो, इंस्टेंट फ्लो और स्केड्यूल फ्लो, और उसके हिसाब से हम उसमें एक्टिविटी उसको ऐड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बल्कि आपको पहले ये दिखा देता हूँ फिर उस इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ जाएंगे। तो अगर मुझे एक मशीन से अपनी जो मशीन पे फ्लो है उसको जो है कनेक्ट करना है क्लाउड फ्लो के साथ, तो हाउ वुड आई बी एबल टू डू दैट इफ आई जस्ट ओपन अ फ्लो हियर। तो इसमें जिस तरह आप दूसरे एक्शंस ऐड करते हैं, जैसे ये एक मैनुअली ट्रिगर्ड फ्लो है, ये मैनुअली एग्जीक्यूट करता है, और यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि अगर मैं बल्कि इस एक्शन को डिलीट कर देता हूँ और दोबारा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को दिख भी जाए कि क्या है। तो इफ़ आई गो टू न्यू स्टेप्स, यहाँ पे मेरे पास जिस तरह दूसरे फीचर्स अवेलेबल होते हैं, दूसरे कनेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, उसी तरह मेरे पास पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप का कनेक्टर भी अवेलेबल होगा। थोड़ा सा लैग है, होपफुली शुड नॉट बी अ चैलेंज। तो डेस्कटॉप फ्लो आ गया मेरे पास, मैं डेस्कटॉप फ्लो को सेलेक्ट करूंगा तो पूछेगा भाई ये किस टाइप का फ्लो है, इट्स अ विंडोज रिकॉर्डर, सिलेनियम और डेस्कटॉप, पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप। तो हमारा फोकस वही पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप था, तो हमने वहीं पे फ्लो बनाया, तो आई विल कनेक्ट टू दैट। अच्छा, यहाँ पे जब फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट करते हैं तो इट विल आस्क यू फॉर क्रेडेंशियल्स एज वेल, कि भाई आप कौन से क्रेडेंशियल्स को यूज करके आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो दैट्स द क्रेडेंशियल्स ऑफ योर मशीन दैट विल अलाउ यू टू कनेक्ट टू दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अच्छा, अब आप जब इस पे कनेक्ट कर जाते हैं तो फिर ये आपके जो भी फ्लोज बने हुए, जैसे हमारी मशीन के ऊपर अगर मैं इफ आई ब्रिंग दिस ऑल्सो हेयर, नॉट दिस वन राइट। तो यहाँ इस वक्त मेरी मशीन पे दो प्रोसेस हैं, इंटर एंड इनवॉइस और ओपन एंड एक्सेल मशीन इन, तो वही दोनों प्रोसेस यहाँ पर मेरे पास लिस्ट में अवेलेबल भी आ गए, और मेरे पास ऑप्शन भी है कि मैं एक नया क्रिएट कर सकता हूँ, वो वही पावर ऑटोमेट डेस्कटॉप मेरे पास खोल देगा। तो इसमें मैं अभी ओपन एंड एक्सेल वाला चूज करता हूँ, फिर ये मुझसे पूछेगा कि रन मोड क्या है, अटेंडेड है या अनअटेंडेड है। अटेंडेड मीन्स कि मुझे एज अ यूजर लॉग इन होना जरूरी है, या ये एक अनसर्विस बॉट बेस्ड नॉन यूजर बॉट बेस्ड एग्जीक्यूशन है जो कि बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली रन करती रहेगी और यूजर का साइन इन होना जरूरी नहीं है। तो दीज आर टू डिफरेंट कैटेगराइजेशन जो कि आपको और एडवांस लेवल पे चली जाती हैं आरपीए को लेकर। तो आपके बिजनेस प्रोसेस जो कि सिस्टम यूजर के साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप परहैप्स अनअटेंडेड को आप जो है वो डिफलेट कर सकते हैं और उन कैटेगरी के अंदर आप वो क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है क्योंकि ये अटेंडेड है, मेरा लॉगिन होना जरूरी है, तो आई विल जस्ट क्रिएट दैट। सो वंस इट इज डन, लेट्स सेव इट क्विकली एंड रन इट। तो जैसे ही मैं इसको टेस्ट करने के लिए रन करूंगा, ये प्रोसेस क्या करेगा, ये प्रोसेस जो है क्योंकि इट्स अ मैनुअली ट्रिगर्ड फ्लो, इट विल वेट फॉर मी टू एग्जीक्यूट इट। मैं इसको जैसे ही रन करता हूं तो ये जाके अब इस प्रोसेस से इंटीग्रेट कर रहा है। बैक ऑन द बैक एंड इट इज एक्चुअली ट्राइंग टू कनेक्ट टू माय मशीन फ्रॉम क्लाउड एंड देन इट विल ट्राई टू रन दैट ओवर फ्लो। तो उस फ्लो में जो था वो एक एक्सेल शीट को ओपन करना था, सो इट विल नाउ गो अहेड एंड क्रिएट ट्राई टू रन दैट।
Like I said, थोड़ा सा network lag है perhaps because of the live streaming, but fortunately similarly book app, वो जो book one जो थी वो automatically open हो गई, और यहाँ पर मेरे पास Excel sheet भी open हो गई. So similar process, similar execution, and very simple to integrate with the डेस्कटॉप लेवल फ्लो. सो आपके लिए कोई ज़्यादा आपको साइंस नहीं इसमें लिखनी, सिर्फ आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है एंड इट शुड बी अवेलेबल. इसी तरह अगर हमें मैंने क्या किया, लाइक आई वाज सेइंग दैट कि मैंने इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करी. तो एआई बिल्डर में आपके पास बहुत ही बेहतरीन मॉडल्स हैं और अभी बहुत सारे सेशंस इस पे ऑलरेडी हो भी चुके हैं. तो इसमें एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं इनवॉइस प्रोसेसिंग का मॉडल. अगेन थोड़ा सा नेटवर्क लैग है जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा है, बट इफ लेट मी जस्ट गो टू बिल्ड. तो वो बिल्ट इन मॉडल है, ऑलरेडी अवेलेबल है, आपको उसको अंदर कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ये इनवॉइस प्रोसेसिंग का मॉडल है, राइट. सो आई कैन इमीडिएटली स्टार्ट यूजिंग इट, और जब मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये मुझसे पूछता है भाई आपने क्या करना है, फ्लो में यूज़ करना है, और बूम, इट विल क्रिएट द होल फ्लो फॉर मी विद द यूजेज ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉडल. और वो किस तरह का फ्लो क्रिएट करता है, वो करता है कुछ इस तरह का फ्लो जिसमें वेरियस स्टेप्स हैं. सॉरी, अगेन रॉन्ग क्लिक. ये वाला, इसमें वेरियस स्टेप्स हैं, जैसे कि एक इनवॉइस के इमेज को एक्सट्रैक्ट करना, उसको रीड करना, रीड करने के बाद उसको उसके अंदर का जो कंटेंट है, जैसे कि इधर मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक इनवॉइस फाइल का इंपोर्ट ले रहा हूँ और ये खुद वो क्रिएट करता है. इंपोर्ट के ऑप्शन देता है जहाँ पे आप मैन्युअली किसी फाइल को सेलेक्ट कर सकते हैं. उसके बाद वो उसे एआई बिल्डर को पास करता है, जो कि उसके अंदर से उसके वेरियस इंफॉर्मेशन लाइक कस्टमर नेम, वेंडर नेम, इनवॉइस टोटल, और इसके अलावा भी बेतहाशा और इनपुट्स हैं जो उस फाइल से वो एक्सट्रैक्ट कर सकता है. तो वो एक्सट्रैक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपको एक्सट्रैक्ट करके दे देता है. देन इन द फ्लो इट शोकेस कि आप किस तरह HTML टेबल बना के एक बहुत खूबसूरत सी कंपाइल्ड ईमेल सेंड कर सकते हैं. तो वो पूरा करके दिखाता है. द ओनली थिंग आई एडिड दिस स्टेप इन इट, कि मैंने कहा कि भाई तुम सिर्फ एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन, बट जो भी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करी है उसको मेरे तुम फ्लो को पास कर दो ताकि वो कंटोसो ऐप के अंदर उसे ऐड भी कर दे. तो लेट्स डू एन एक्सपेरिमेंट हेयर, और इसको हम जाके रन करते हैं ताकि देखें कि किस तरह क्लाउड फ्लो जो है हमें हमारी लाइफ को फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता है. अब ये प्रोसेस इस वक्त मैं अपलोड कर रहा हूँ इनवॉइस, इट कुड बी एन इनवॉइस रिसीव्ड ओवर ईमेल एज वेल, राइट. सो आई एम गोना जस्ट गो एंड रिव्यू दिस इनवॉइस. तो यहाँ पे एक टेस्ट इनवॉइस है जो कि एआई बिल्डर लैब के साथ मुझे अवेलेबल थी, एड एटम की. मैं इसको सेपरेटली ओपन भी कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दिखा दूँ कि ये है क्या. तो ये एक सिंपल इनवॉइस है जिसके अंदर जो है वो क्वांटिटी की डिटेल है, इनवॉइस की डिटेल है, डेट है, किस कॉर्पोरेट के लिए है, ये उनका सेल्स एडमिन कौन था, उसकी इंफॉर्मेशन है, और टोटल्स की इंफॉर्मेशन है. तो एक सिंपल यूज केस के लिए अच्छी इनवॉइस है, और उसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा. एंड आई नो आई एम वेरी क्लोज टू द सेशन, बस कपल ऑफ मिनट्स एंड आई विल बी फिनिशिंग. तो उसको मैं रन करता हूं, तो वो अब क्या करेगा कि वो उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करके उसी तरह इनवॉइस को रीड करेगा, और रीड करने के बाद उस कंटोसो ऐप के अंदर उसको इनवॉइस का इंफॉर्मेशन डाल देगा. आई होप कि वो क्विकली दिखा दे तो वी कैन एक्चुअली शोकेस एज वेल. बट इन द मीन टाइम व्हाइल वी आर वेटिंग, आई एम हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर. जी अदिल, एक क्वेश्चन जो हमें आया वो था थोड़ा सा, ये हमें पूछा है यूट्यूब से. इन्होंने फूडी इन्होंने कहा है कि आई वांट दिस ऐप, डू आई गेट सोर्स कोड ऑफ, ये जो आपने लेगेसी ऐप शो की थी उसके बारे में पूछ रहे हैं कि इसका क्या सोर्स कोड भी अवेलेबल है. अच्छा, इसका सोर्स कोड की आपको ज़रूरत नहीं है. ये ऐप जो है वो RP&A, अगर आप aka.ms RP&A लिखेंगे तो आपको ये ऐप अवेलेबल हो जाएगी. तो ये उस RPA ऐप का पैकेज, ये RPA की लैब है बेसिकली, उसके पैकेज के अंदर ही अवेलेबल है. जी बहुत अच्छा. Alright, so just to close the conversation for today, ये रीसेंट गार्टनर के कुछ स्टैट्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग हैं, एंड आई वांटेड टू शेयर
कि पावर प्लेटफॉर्म जो है वो इतना पुराना नहीं है, बट अमेजिंगली इन लास्ट कपल ऑफ इयर्स इट हैज बिकम अ लीडर इन नॉट ओनली ऐप डेवलपमेंट बट ऑटोमेशन, और अब जो है वो बीआई में तो था ही था, ऑटोमेशन में भी आ गया है. सो द टेक्नोलॉजी इज मूविंग क्वाइट फास्ट एंड रियली इनेबलिंग लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग इट. तो इसको मास्टर करना जो है वो एज अ कंज्यूमर, एज अ डेवलपर becomes very important, because then you will have an opportunity जहाँ पे आप जो है वो अपने customers के लिए, अपने users के लिए those problems you can actually solve. And finally, if you have more questions, of course I know that we have run out of time, but अगर आपको कोई और question हो, if you want to connect, this is a QR code for my LinkedIn profile, तो आप मुझसे connect कर सकते हैं, and I'm really happy to help you guys in your own journeys, as well as if you need any help or any documentation around this, कि आपको किस तरह adopt करना चाहिए, या RPA in a day कैसे execute कर सकते हैं. So I'll be happy to help you out in that as well. With that, thank you so much. Thank you so much, Yavar and team, for arranging this particular session. काफी I hope कि मुझे तो शेयर करने में बहुत मजा आया, लिसनर्स को बहुत भी अच्छा, मजा आया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है. थैंक यू सो मच, and looking forward for more sessions like that. थैंक यू सो मच अदील, बहुत शुक्रिया. और इससे पहले आप लीव करें, कुछ इसमें अगर आप रिकमेंड कर दें, कोई जो लोग इसे लर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं, वो कोई रिसोर्सेज, कोई ऐसी चीजें क्या हो सकती हैं जो लोगों को हेल्पफुल हो सबसे सके? पहला काम है aka.ms/rpa in a day. ये एक लाइन में आप लिखें ब्राउजर पे जाके aka.ms/rpa in a day. इससे आपको एक पैकेज मिलेगा. अगर हमारे पास टाइम है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ वो पैकेज कैसा है. Let me just do that. अच्छा जी, ये आ गया ये पैकेज. तो जब मैं ये RPA in a day का पैकेज डाउनलोड करता हूँ ना, तो मेरे पास इस तरह का एक स्टूडेंट पैकेज मिलता है. इसमें है डिटेल्ड लैब डॉक्यूमेंट है, और वो लैब डॉक्यूमेंट है मेरे जैसे आदमी के लिए जिसको कुछ नहीं पता. तो वो स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक एक्टिविटी सेटअप कैसे करना है, टेनेंट का ब्राउजर कैसे ऐड करना है, उसके बाद एक एक स्टेप फ्लो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, AI को कैसे उसमें इनेबल करेंगे. तो जो कुछ आपने देखा है ऑलमोस्ट 90% और उससे बेहतर वो इसमें कवर हो जाएगा. तो RPA in a day लैब इज हाईली रिकमेंडेड. आपने इसको सीखना है, सबसे पहले इससे स्टार्ट करें. उसके बाद MS लर्न पे बेतहाशा डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, उसको आप एज अ सेकंड टेयर आप यूज कर सकते हैं. तो जैसे ही आप मेरे ख्याल में RPA in a day एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे तो यू विल कनेक्ट द डॉट्स एंड होपफुली विल स्टार्ट यूजिंग इट. जी बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच अदील, सो नाइस ऑफ यू. बहुत अच्छा लगा. थैंक्स फॉर दिस सेशन and hopefully we will see you again. Thank you so much. Absolutely. Assalamu alaikum. Welcome. Okay, thank you so much everyone. We are almost ready for our next session. Next speaker we will have just in a couple of minutes. We will have Amir Nazim. Amir will be presenting Logic App Development to Deployment. Amir will be joining us in a couple of minutes, and this session will be in English language, so please stay here. Thanks. Okay, thank you so much everyone. We have Amir Nazim. Hi Amir, welcome. Hi everyone.
Amir, you are live now, and I think should I add Yes, your please add Shabib as well. Yeah. Shabib? We will have for this presentation Amir and Shabib. Hi Shabib, welcome to Dynamics 365. It is our second day. It's great to have you. And before I hand over to Amir, I will like to tell here Amir is one of our organizers of this event as well. So thank you so much. Thank you, Amir and Shabib, for this community contribution and supporting this event. Over to you, Amir and Shabib. Thank you. Thank you, Yavar. Thank you so very much. So, Shabib, let's start. Please share your screen. All right. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एवरीवन। हम मैं और शबीब इस सेशन में हैं और हम इस उर्दू हिंदी बूट कैंप के अंदर नॉलेज शेयरिंग करेंगे। तो सबको सबसे पहले वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, wherever you are, and we will see. Can you move down, please? Shabib. Shabib, can you move to next slide? I think there's some connectivity issue around Shabib, so I can share my screen. So connectivity around Shabib. I would just like to welcome everyone. खुश आमदीद सबको। तो हम कोशिश करेंगे इस प्रेजेंटेशन के अंदर लॉजिक एप्स के बारे में हम बात कर सकें। तो शबीब और मैं लॉजिक एप्स के बारे में बात करेंगे। तो let's jump to the main topic around it. So पहले small introduction about me. My name is Amir. I'm the development manager on Magic Global with 14 years of technical experience. So far काफी अच्छे सेशंस हो रहे हैं and मैं और शबीब जो है हम दोनों भी कोशिश करेंगे उस मोमेंटम को बरकरार रखें। तो शबीब, hand over to you. Can you introduce yourself and share your feeling about this community forum? Ahmed bhai, can you hear me? Looks like there is some we have some technical issue while Yeah, sharing. Shabib is not able to hear. Okay, right? Shabib, your voice is cutting, I think so. Yavar, can you help here? जी शबीब, आपको आप can you hear me शबीब? शबीब, आपकी आवाज मैं ठहरे मैं आपको एक दफा रिमूव करता हूँ और फिर से आपको लाइव लेता हूँ, तो शायद इससे कुछ डिफरेंस हो। Shabib, can you hear me? जी मेरे ख्याल में आमिर Shabib he maybe there is some connectivity issue. Shabib looks like he's talking but there is some
cut out in conversation. Let me try again once more. Ji, Shabib, can you hear me? ओके शबीब, इफ यू आर ऑन, आप ऑलरेडी अगर दूसरे हमारे टेस्ट स्टूडियो में हैं, काइंडली उसे क्लोज कर दें, तो मे बी उससे आपकी बैंडविड्थ का कुछ अगर इशू हो तो बेटर हो जाएगा. Technical issues are also part of these live events. Yeah. And I think I am the victim. I have faced most of the technical issues. So I think I can continue, right? तो मैं continue करता हूँ, फिर देखते हैं. जी please. Thanks. Unfortunately, Shabib is having some technical issues. तो शबीब मेरे साथ हैं. हमने एक डेमो प्रिपेयर किया था. लेट्स सी हम उसको अगर शबीब बीच में ज्वाइन कर पाए तो हम कंटिन्यू करेंगे उस डेमो को. बट आई विल ट्राई व्हाट आई कैन कवर विद दिस थिंग. आज का एजेंडा हमारे पास है कि हम लॉजिक एप्स को इन डेप्थ देखेंगे कि व्हाट इज लॉजिक ऐप, व्हाई इट इज यूजफुल, वेयर इट कैन बी यूज्ड. Then we will talk about कि लॉजिक एप्स को काम करने के लिए आपको क्या वर्कस्पेस रिक्वायर्ड है. Because I'm hearing कि हमारे पास काफ़ी सारे यूनिवर्सिटी ग्रेड्स भी इस फोरम में ज्वाइन किए हुए हैं. तो आई विल ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक ताकि उनको भी एक अच्छा एक फोरम मिल जाए ताकि वो लॉजिक ऐप की डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकें. Then I will talk about the basic building blocks of logic app. कि logic apps के अंदर क्या क्या building blocks होते हैं. Then we have a lot of connectors within the logic app. So I will share some of the connectors कि हम किस तरह से उन connectors के ऊपर बात कर सकते हैं और किस तरह से उन्हें consume कर सकते हैं. Then we have some demos around it. So हम उन demos को cover करेंगे. तो डेमो के बाद मैं थोड़ा सा एडवांस की तरफ भी जाऊंगा जिसके हम एंटरप्राइज इंटीग्रेशंस को कवर करेंगे. आई विल ट्राई टू कवर एंटरप्राइज इंटीग्रेशंस एंड आई विल ट्राई टू कवर वन ऑफ द डेमो लाइक इनबाउंड और आउटबाउंड. And then I will show some demo of that enterprise integration as well. So that's how I will end up this presentation. So I will move towards the logic app. So logic app, what is logic app? So I will try to cover this logic app with three whys, what, why, and where. तो हमें जब लॉजिक ऐप पे काम करना होता है तो ऑब्वियसली वी नीड टू नो कि भाई ये लॉजिक ऐप है क्या और हमें इसको क्यों इस्तेमाल करना चाहिए और कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए. तो लॉजिक एप्स आर सिंपल a design workflow that start with a trigger and then execute a series of steps for invoking any app while handling the authentication checkpoints and durable execution. So that means कि आपने simple कुछ नहीं करना. लॉजिक एप्स के अंदर आपके पास एक designer window है. You have to design some workflows, you have to add some triggers ताकि आपकी जो लॉजिक एप्स हैं वो either manual trigger होंगी और with some recurrence based trigger होंगी या किसी event पर trigger होंगी. So that's how you define your triggers based on the workflows and that's how you build the logic apps. The logic app can work as a mediator. तो पहले ज़माने में अगर आपने देखा होगा आपको एक मिडलवेयर लिखना पड़ता था. आपके पास एक लॉजिक है ऐप है, आपको किसी एक्सटर्नल सिस्टम से उसको इंटरेक्ट कराना है तो आपको बीच में मिडलवेयर लिखना पड़ता था. तो नाउ दैट मिडलवेयर कॉन्सेप्ट इज रिप्लेस्ड विद अ लॉजिक ऐप. तो अब आपको इसकी वरी की जरूरत नहीं है कि भाई आप मिडलवेयर कैसे लिखेंगे, हाउ यू कम्युनिकेट द टू सिस्टम्स. तो ऑल दोस कम्युनिकेशन पार्ट्स इज हैंडलिंग बाय द लॉजिक ऐप. Then if I talk about why हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए तो again as I summarize कि भाई आपने अगर टू सिस्टम्स को कनेक्ट करना है, टू इंटरप्राइज इंटीग्रेशंस, आपने इंटरप्राइज इंटीग्रेशंस बिल्ड करनी है तो दैट्स वेयर यू नीड अ लॉजिक ऐप. पहले ये हासिल होती थी कि भाई डेवलपर्स एक लॉजिक बिल्ड करेंगे, दूसरे सिस्टम से कनेक्ट करेंगे तो उसकी डिप्लॉयमेंट हैसल्स, उसकी मॉनिटरिंग हैसल्स, तो वो सब चीज़ें जो है ना अब आपको नहीं करनी. यू डेवलपर जस्ट नीड टू फोकस ऑन द लॉजिक ऐप लॉजिक्स
आप अपनी लॉजिक्स को जो है बिल्ड कर रहे होंगे, और इसके बाद जो डिप्लॉयमेंट हैसल है वो आपके पास कुछ भी नहीं है. Azure infrastructure is just a simple infrastructure that you deploy on the Azure, and that logic app will handle all the deployment hassle as well. तो अब डेवलपर जो है ना मोर फोकस कर सकते हैं लॉजिक एप्स के ऊपर. लॉजिक एप्स आपको ये भी मैकेनिज्म देती है कि भाई either you want to run the integration manually via trigger, or that logic that integration has to trigger on a defined recurrence. So both of the triggers आपको मिलते हैं कि भाई recurrence based कर लो और the event based कर लो. आमिर भाई, Yes. सॉरी फॉर इंटरप्शन. शबीब उन्होंने रीज्वाइन किया है. अगर आप चेक करना चाहें एक दफा तो हम अभी चेक कर सकते हैं कि उनका इशू रिजॉल्व हुआ है. इफ नहीं हुआ तो प्लीज शबीब, कैन यू hear me? No, looks like Right. Yes, still problem, I think. maybe, Unfortunately, that's happened. So I think I will continue with the momentum. Sure. With the momentum. Please. Thank you. Thanks. If I talk about why के बाद, अगर if I talk about where the logic apps कहाँ use होनी चाहिए, तो logic apps आपने कोई भी enterprise integration build करनी है, आपने file based integrations build करनी है, आपने कोई alert based mechanism build करना है, आपने कोई monitoring solutions build करने हैं, आपने दो systems legacy systems को नए system के साथ connect करना है. तो in all those scenarios जो है logic app as a middleware use होता है. और अगर मैं आपको इसको और थोड़ा सा सिंपल और बताऊं तो पिछले एरा में बिस्टॉक आपके पास था जो कि फाइल शेयरिंग के तौर पे यूज होता था या कम्युनिकेशन के तौर पे यूज होता था. तो अब ये लॉजिक ऐप जो है इट्स सम सॉर्ट ऑफ रिप्लेसिंग बिस्टॉक एज वेल in those integration scenarios. So that's how logic app can be used in all of these scenarios. So we will see in more detail कि किस तरह से logic app build हो सकती है and क्या क्या चीजें इसके components हैं, और so we will cover in demo in next slides as well. So this is a bit technical for developers who are starting working और जो integrations build करना चाहते हैं. तो आपके पास लॉजिक ऐप पे काम करने के लिए वर्कस्पेस की जो प्रीरिक्विजिट्स हैं उसमें you just need a basic Visual Studio 15 or higher. आपके पास Visual Studio के ऊपर लॉजिक ऐप टूल्स इंस्टॉल होना चाहिए Visual Studio के ऊपर, Azure Logic Apps tools, and then you just need a Azure subscription account and the permission to deploy the logic app. These are very basic, simple things you need on your workspace to start working on the logic apps. If I talk about the building blocks of the logic apps के अंदर, as I mentioned, कि भाई कोई hard coding नहीं करनी. You just need to know कि भाई आपकी logic apps जो है वो trigger based है, recurrence based है, तो you need to know your triggers. देन आपके पास आपकी लॉजिक पता होना चाहिए कि भाई आपने ट्रिगर करने के बाद आपने क्या लॉजिक परफॉर्म करनी है, क्या आपके लूप्स होंगे, क्या कंडीशंस होंगी, क्या एक्शंस आपने परफॉर्म करने हैं. तो सिंपल आपने एक्शंस डिफाइन करने हैं विद इन द लॉजिक एप्स, एंड देन यू हैव लॉट ऑफ कनेक्टर्स. So Microsoft is providing hundreds of connectors. You can think of any connectors. If you want to build any integration with ERP, it'd be called like Salesforce or finance and operations or anything else. तो इन सबके कनेक्टर्स अवेलेबल हैं. आपने ट्विटर के ट्वीट्स को रीड करना है, आपने कोई ईमेल कम्युनिकेशन करनी है जीमेल और आउटलुक के साथ, आपने कोई फाइल शेयरिंग करनी है ड्रॉपबॉक्स और किसी एक्सटर्नल फाइल शेयर के साथ. तो ऑल सॉर्ट ऑफ इंटीग्रेशन इज नाउ वेरी सिंपली पॉसिबल with all the connectors available within the logic apps. So you can think that आपके पास सारे tools available हैं, आपने इन सब areas में कोई coding नहीं करनी. You just have to just define steps, and you are able to complete the integrations across two systems. And that's how, with these simple steps, you are able to create the enterprise integration, and that is our goal with this logic apps. So कनेक्टर्स हैं. तो शबीब एंड मैं जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो इतने सारे कनेक्टर्स हैं कि वी कैन नॉट प्लेस ऑल दोज कनेक्टर्स इन the single slides, but main connectors, if I talk about, you can, if you want to build integration with GitHub, with the Google Drive, with Dropbox, with ERP like Dynamics CX, SharePoint, Twitter. So any of the integrations any of the connectors you can think of, all those connectors are available within the logic app.
and that's how you can build the connectivity across the two systems. So these are the connectors. A big simple set demo I will try to show. Demo so cover करेंगे. मैं quickly जा रहा हूँ अपनी environment पे. So I am into the Azure portal right now. So that's a portal.azure.com right now I'm in. So I'm just creating a simple application of ticketing. So for example, you have any ticket system where you are managing or maintaining tickets or the problems with your daily life, and you want to simply email them, right? It's a common scenario. You have a ticketing database where you have your tickets, and you want to alert your developer or the persons who are assigned to the ticket. You want to daily frequently email them. So that scenario I will try to cover with this logic app. So in this logic app, we have created this simple Azure SQL. So this is a SQL we have created. So I will not go into detail how we have created this SQL, but you can create a simple SQL on the Azure portal. And then if I come to the flow of the logic app, I just need to search the logic app here. And then we can, I can go to this logic app. That's a simple ticketing app I have created. So I'm going to the designer of this thing. So this is how you can open the designer of the logic app. But before that, I mean, if you want to create a simple logic app, you just have to add a new logic app from here, standard or the consumption type. And then you have to define a blank template on it. So once you have the logic app template available here, you can design the simple steps. So you can see that, I mean, without any coding, I could create a simple logic app. So I'm here creating a recurrence, like I want to email every 2 minutes or whatever the frequency I want to set it. So that's a starting point. That is your trigger. So you want to start from a recurrence, or if you want to start from any manual trigger like APIM or something. So based on those triggers, you can start the integration. Then we have the connectivity, or you can say the actions. So within the connectivity, I am creating a connection with Azure SQL where I have the tickets available with me. And this is the database connection. I've set it up. And then I'm running for all the tickets. That's a loop I have created. So within the loop, I'm just reading the simple information from the database and then emailing to my Gmail address. So that's a simple flow without any coding. I have created it, and I'm just about to trigger that thing. So from the run trigger, you can trigger it. It will message about it. So I'm just sharing. I'm just going to the history as well, so we can see from the history. It's still running right now. Sometimes it takes a little bit time. So that I think it's taking some time. So I can show you the bit of previous history as well. As soon as that's finished, it will come into this window. So that's how it's ran. You can see the execution window here, and when it finished, it emails to my Gmail as well. I'm sure if I have the email open with me. I can show you any previous runs. So yeah, you can see that here as well. So all those tickets, it's coming into my Gmail. So whatever, if I have the coding error or if I have the system error, so whatever the information I have within the database, that is coming to my email address. So that's how you can build this one scenario where you can consume data from the Azure SQL and then email to anywhere. I'm going back to the slides.
So this is how you can build integration. So you can build integration with Twitter or with LinkedIn as well, or with any other forum as well. So that's a common logic app, very basic logic app I've covered so far. If I talk about a little bit enterprise integration, so and if I take an example of ERP called finance and operation. तो ERP के अंदर हमारे पास सिनेरियो होते हैं, sometimes हमें inbound integrations build करनी पड़ती हैं, sometimes outbound integrations build करनी पड़ती हैं. Inbound and outbound integrations, like inbound consuming a file from some file location and consuming it within the ERP, and outbound, you want to export a file from ERP system and save it to your file share. So in इस scenario में भी बज़ाहिर ये एक complex scenario नजर आता है कि आप कैसे mechanism build करेंगे, लेकिन with the logic app it is really very simple. Without any coding you can build this enterprise integration as well. You just need to place a logic app in between, and then you have the connectors to consume with the finance and operation and to the file share as well. So that's how you can build inbound and outbound integration as well. So if I just show the demo of this as well, I'm just going to my environment. Sorry. So yeah, so I'm into my environment. I'm just refreshing so that it's open. So I'm into my Dynamics finance and operation environment. And I can show you a little bit of Visual Studio look and feel as well. So previously I was showing the portal look and feel, so you can design the flows on the portal as well. And same way you can design the flows, logic app flows or the workflows within the Visual Studio as well. So you just have to create, as a developer, you just have to create a new project. When you create a new project, it will come with this template, which contains a PowerShell file for deploying the logic apps. Then you have the logic app itself, and then the parameter file. So with this, for this demo, I'm just covering the outbound integration here. So for this outbound integration, I've created a simple scenario. So I want to export a file from ERP system. So ERP system से मैं file export करनी है, let's say रोजाना रात को at 2 p.m. At some time zone. And then we have to build some connectivity with the ERP. So for building the connectivity with the ERP, I am creating, I'm calling this connector export package. So so if I talk about export package in more detail, I have to jump to the ERP system. So in the ERP, I have created this data management package, data management project. So you can see that I've created data management project for my integration, like for stock on hand, let's say. So simply, you just have to create this data management project within the ERP system. You have to define the entity here. You have to define the file in which you want to export the file. It's taking some time in opening, so as soon as it's open. So yeah, so simple data management project you have to create here. So it's doing it, and while I'm just moving back to the yeah, it's open. So you can define a entity here, a mapping here, whatever the field you want to export in the file, and what is your export format that you want to cover. So you can define your export format here. So this is the DMF project we will be calling from the logic app. So here is the connector for the finance and operation, and I'm just calling the export to package action here. So that will call this finance and operation environment and the package that I've defined in the ERP. And then we have some conditions or actions. So I will wait for the package execution to finish, and when it is succeeded, I have to store the output to the file. So I will get the download URL file from my ERP system, and then I will fetch the file from my ERP and start downloading to the file share. So that's how I have defined different steps here. So I'm getting the file from the download URL and then saving a file to the storage location. So that's how you simply create a flow. So you can see that, I mean, without any coding, you can create a workflow and that export a file from the ERP and then store it to the storage location.
So if I just go back to the portal and just want to show you run. So as I mentioned in the designer, so this is recurrence based. So either we have to wait for the recurrence to trigger, or we can trigger manually right now here as well. So for the time saving perspective, I'm just running it manually here. It will take some time, and then it's all automatically triggered. It's in the execution state right now. So as soon as it's finished, it will store the information to my file share. Yeah, just wait for a minute to finish it. So that's how you can build the logic apps around it. When it finished, it's saved to my storage location. So I have created this storage location as well. Meanwhile, it is running. So this is storage location I have created, and in the storage location, I have different folders for my integrations. So these are folders you can create for based on your scenarios. So wherever you want to export the file. So it's yeah, it's taking some time. So meanwhile, for just saving time, I can cover from the previous runs. So when it finished, you can see that file from here in the storage location, and that's where you can build another side of the integration. You can consume a file from this storage location and probably to email it for your user for your reporting needs. So that's how you can build some sort of enterprise integrations as well. Yeah, so I think it's still running. Yeah, it's still taking some time. So I can move to other part of my presentation, but this is how you can build integration. So now I would like to cover or touch base a little bit some advanced topic as well. This is about the resilience. So a logic app, when primarily is an infrastructure component. So when you create the logic app, when you create a workflow within the logic app, you have to deploy that logic app to the Azure portal or the Azure storage location. So there is a storage location bind with the logic app. तो स्टोरेज लोकेशन के साथ ऑब्वियसली एक रीजन है और एक रीजन की डिपेंडेंसी है, एक स्टोरेज लोकेशन की डिपेंडेंसी है where it gets deployed. So sometimes जो storage location है that somehow if for any reason if that's not available or that's where we face some connectivity issue with the Azure, and you have a scenario where you want to have your integrations connected at any moment, you cannot bear any disconnectivity. So that's where you need some resilience around those integrations as well. तो अगर आपका resilience का scenario है, आपको high connectivity required है, तो उसके लिए भी with very simple steps, with very simple procedures, you can build the resilience as well. तो आपने करना क्या होगा, अगर आपको कुछ different patterns follow करने पड़ेंगे to achieve the resilience. I will talk about in next few slides कि हम resilience कैसे enable कर सकते हैं, resilience कैसे आप डेवलप कर सकते हैं ताकि आपकी जो इंटीग्रेशंस है वो ऑलवेज कनेक्टेड रहे. तो इसके लिए आपको सिंपली लॉजिक एप्स को 2 रीजन्स में डिप्लॉय करना होगा. आप लेट्स से यू कैन से क्रिएट अ सिनेरियो कि आपके पास सेम लॉजिक ऐप है, डेवलपमेंट ने सेम फ्लो क्रिएट किया विदाउट एनी कोडिंग एंड यू हैव टू बिल्ड द रेजिलियंस. तो आपने इस लॉजिक ऐप को 2 regions में डिप्लॉय करना पड़ेगा. If I could take an example, let's say you deployed the logic app in Azure, storage location like regions like UK South and another region like UK West. So with the multiple deployment with the same code, you can build some sort of resilience as well. So in the next slide, I will talk about some patterns. तो अगर आपने resilience build करनी है तो आपके पास कुछ different patterns हैं based on your business requirement, based on the scenario, or based on how resilient you want to build. तो इसमें एक scenario है active का. तो active means कि आपके पास आपने एक logic app build करी, आपने flow design किया logic app का, and that logic app has to available every time. You cannot expect any disconnectivity. तो आपने इस लॉजिक ऐप को प्राइमरी रीजन लेट्स से यूके साउथ में डिप्लॉय किया, सेकेंडरी रीजन लेट्स से यूके वेस्ट में डिप्लॉय किया,
And then you have scenarios like on top of it, Logic App, you can build some APIM, or you can build some load balancer, or you can build some service bus. तो आपका जो इनबाउंड फ्लो हो रहा होगा, इनबाउंड फ्लो के जो मैसेजेस आ रहे हैं लेट्स से, वो आपके इन मैकेनिज्म के थ्रू लोड बैलेंस हो रहे होंगे और ट्रांसफर हो रहे होंगे अदर प्राइमरी लोकेशंस में और सेकेंडरी लोकेशन में. तो एक्टिव के अंदर द बस प्रीरेक ये है कि दोनों लॉजिक एप्स which bound with the same code deployed to different regions, और दोनों एक्टिव हैं. एंड जो आपके पास ऑन टॉप ऑफ इट जो रैपर हैं लाइक APIM, लोड बैलेंसर और द सर्विस बस, ये आपके ट्रैफिक फ्लो को कंज्यूम मैनेज कर रहे हैं कि आपने प्राइमरी रीजन को ट्रैफिक भेजना है और द सेकंड रीजन को ट्रैफिक भेजना है. तो दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड एक्टिव सिनेरियो. एंड सेकेंड सिनेरियो जो आपके पास हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपके पास हाई वॉल्यूम है, आपके पास इनफ्लो ऑफ द मैसेज और आउटफ्लो ऑफ द मैसेज काफ़ी ज़्यादा है, right? And you want to build some sort of a parallelism, some sort of a multi-threading mechanism. So in scenario में के अंदर भी आप लॉजिक एप्स की यूज कर सकते हैं. आपने सिंपली लॉजिक ऐप को मल्टीपल रीजन्स में डिप्लॉय करना है. ऑन टॉप ऑफ इट यू कैन बिल्ड सम सॉर्ट ऑफ अ मैसेज क्यूइंग मैकेनिज्म, और आपकी जो लॉजिक ऐप है उसके अंदर लॉजिक इस तरह से होनी चाहिए कि वो मैसेज को फैच करे इंडिपेंडेंटली एंड कंज्यूम करे. तो बोथ ऑफ द लॉजिक ऐप जो है वो कंपीटिंग मैकेनिज्म में होंगे. दोनों जो लॉजिक ऐप्स हैं वो मैसेज क्यू को टारगेट कर रही होंगी और वहां से जो है ना मैसेजेस को फैच करके अपने अपने ऑपरेशंस परफॉर्म कर रही होंगी. So that's how you can build resilience with the same code deployed to multiple regions, and on top of it, if you build some wrappers, that's how you can build some resilience around it. Another pattern जो कहलाता है वो active passive है. So if you have less active scenarios where you don't need high connectivity, but still you cannot bear disconnectivity. You need to be into your business with a very minimum downtime. So in that scenario आप जो है ना active passive build कर सकते हो. आपके पास again लॉजिक एप्स डिप्लॉय होगी दोनों रीजन्स के अंदर, बट सेकेंडरी रीजन के अंदर वो पैसिव स्टेट में होगी, डिसेबल्ड स्टेट में होगी. And you have to have some mechanism through which you run some scripts or deploy some scripts through which you will enable the secondary region logic app अगर आपके पास कोई failure आता है, आपके पास अगर कोई downtime आता है. So with a minimum downtime or disconnectivity, you can switch over the traffic from one region to another region. So that's how you can build the resilience around it as well. So ये इस तरह से आप लॉजिक ऐप्स को हाई कनेक्टिविटी सिनेरियोस के अंदर भी यूज कर सकते हैं. तो यू कैन सी दैट कि लॉजिक ऐप एज अ मिडलवेयर कितना स्ट्रांगली और पावरफुली अवेलेबल है. आप के पास थाउजेंड्स ऑफ कनेक्टर्स हैं, आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स हैं, एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड द कनेक्टिविटी अक्रॉस टू सिस्टम्स. एंड इजीली आप जो है ना विदाउट एनी हार्ड कोडिंग मैकेनिज्म आप जो है ना एंटरप्राइज इंटीग्रेशन बिल्ड कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने कुछ क्विक स्टार्ट्स और ट्यूटोरियल्स कंपाइल किए हैं. तो अगर कोई डीप डाइव करना चाहता है कि सेशन थोड़ा सा शॉर्ट टाइम था, वेरी बेसिक था, तो अगर डीप डाइव करने के लिए आप इन लॉजिक एप्स के लिंक्स को आप फॉलो कर सकते हैं. तो आप काफ़ी अच्छी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं. And then if I talk about yeah, that's it. To my end of my presentation. Yeah, so if anyone has any questions or if anyone wants to raise तो वो क्वेश्चन रेज कर सकते हैं. So यावर हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. थैंक यू सो मच आमिर और शबीब, बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन थी, बड़ी इंफॉर्मेटिव. थैंक यू सो मच. हमारे पास कुछ क्वेश्चन हैं और मैं पहला क्वेश्चन अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ. उजैर ने पूछा है, व्हाट इफ आई वांट टू इंटीग्रेट माय कस्टम डेवलप्ड .NET ऐप. कस्टम डेवलप्ड .NET ऐप बिल्कुल आप बिल्कुल कर सकते हैं. तो आपके एक इंटरफेस, एक आपका मोबाइल ऐप है, आपका .NET ऐप या नॉर्मल मोबाइल ऐप, कोई भी ऐप हो सकती है आपकी. तो ऐप कुड बी ऑफ एनी टाइप, और आपने अगर उसको इंटीग्रेट करना है किसी सिस्टम से, लेट्स से आपने उस ऐप का डेटा आपने किसी डेटाबेस में मूव करना है, और आपने उस ऐप को किसी ERP से कम्युनिकेट कराना है, तो बिल्कुल लॉजिक आपके मिडलवेयर के तौर पे कनेक्ट करेगा, आपको कनेक्टर्स प्रोवाइड करेगा जिसके थ्रू आप जो है ना
आप मोबाइल ऐप से और ऐप से डेटा फ्लो करेंगे लॉजिक ऐप को, और लॉजिक ऐप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग दैट डेटा टू योर ERP और टू अनदर साइड ऑफ द पिक्चर, डेटाबेस की साइड के पिक्चर के पे वो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर देगी। तो बिल्कुल एज आई मेंशन कि मोबाइल ऐप्स हों या नॉर्मल .NET बेस्ड ऐप्स हों, आप इस तरह के इंटीग्रेशंस को बिल्ड कर सकते हैं। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा। और मेरे ख्याल में इसमें भी आमिर भाई हमें वो गेटवे भी यूज करना पड़ेगा, अगर कोई डेस्कटॉप की है कोई ऐसी, गेटवे भी साथ होगा। हाँ, देखिए आप अगर डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है तो उसको आपको किसी तरह से कम्युनिकेट कराना पड़ेगा एज़्योर से। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई वेब सर्विसेज लिखी हुई हैं, तो आप वो वेब सर्विसेज के थ्रू आप जो है ना वो लॉजिक ऐप से कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे HTTP के कनेक्टर्स मिलते हैं थ्रू विच, और .NET के कनेक्टर्स मिलते हैं जिसके थ्रू आप जो है ना वो आप एक कनेक्टिविटी बिल्ड कर लेंगे। अगर आपकी जो एप्लीकेशन है ऑन प्रेम भी अगर है तो जैसे मैंने एग्जांपल दी थी अपने इस डेमो के अंदर, मैंने एक सीक्वल सर्वर लिया था। वो सीक्वल सर्वर मेरा अज़्योर पे था, लेकिन वो सीक्वल सर्वर मेरा ऑन प्रेम पे भी हो सकता है। आई जस्ट नीड अ मिडलवेयर कनेक्टर इन बिटवीन, ताकि वो ऑन प्रेम से अज़्योर कम्युनिकेशन हो सके। एंड वंस वो कम्युनिकेशन बिल्ड हो गई तो फिर आप लॉजिक ऐप के थ्रू आप वो ऑन प्रेम के किसी भी प्लेटफॉर्म को, चाहे वो सीक्वल हो, चाहे भाई कोई .NET की ऐप हो, कोई वेब सर्विसेज हो, आप उससे कम्युनिकेट कर पाएंगे। बहुत अच्छा, थैंक यू। और आमिर भाई एक क्वेश्चन है, किसी ने ये फूडी इन्होंने पूछा है कि लिटिल कंफ्यूज अबाउट लॉजिक ऐप, पावर ऐप एंड पावर ऑटोमेट, तो इन तीनों में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें प्लीज। बिल्कुल, तो पहले मैं लॉजिक ऐप और पावर ऑटोमेट को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। तो लॉजिक ऐप एक एंटरप्राइज लेवल टूल है। पावर ऑटोमेट जिसका प्रीवियस नेम फ्लो था, आप उसको फ्लो कहते थे हम। तो फ्लो मोर ऑफ अ यूजर साइड ऑफ द टूल है। फ्लोज के अंदर आप सिर्फ स्टेप्स डिफाइन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने कोई इंटीग्रेशन बिल्ड करनी है एंड यू हैव डिफाइंड स्टेप्स एंड दैट, तो आप वो उन स्टेप्स के थ्रू जो है ना आप इंटीग्रेशन बिल्ड करते हो। जबकि लॉजिक ऐप जो है वो जो थोड़ा सा पावरफुल है, दोनों सर्वरलेस हैं, दोनों कम्युनिकेशन के लिए यूज होंगे, लेकिन लॉजिक ऐप इज मोर टुवर्ड्स द डेवलपर साइड एंड पावर ऑटोमेट्स इज मोर टुवर्ड्स एंड यूजर साइड। तो पावर ऑटोमेट के लिए आपके पास और लेसर नॉलेज रिक्वायर्ड है, लेकिन वहाँ पे आपके पास जो कनेक्टिविटी पावर होती है वो थोड़ी सी कम होती है, लिमिटेड होती है। जबकि लॉजिक ऐप में आपके पास यू हैव वर्ल्ड ओपन विथ यू, आप जो भी आप कनेक्टिविटी बिल्ड करना चाहते हैं लॉजिक ऐप के साथ बिल्ड कर सकते हैं। अच्छा, पावर एप्स जो हैं, पावर एप्स तो आपके पास लाइक एक मैकेनिज्म है टू कम्युनिकेट। पावर एप्स इज योर लाइक फॉर एग्जांपल योर ऐप दैट परफॉर्म सम प्रोसेस। तो आप उस ऐप को यूजिंग लॉजिक ऐप और पावर ऑटोमेट आप डेटा फ्लो करा सकते हो। तो पावर ऐप तो बिल्कुल एक डिफरेंट कंपोनेंट है। पावर ऐप के ऊपर आप अपनी एप्लीकेशन डिजाइन कर सकते हैं, आप अपनी एप्स डिजाइन कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस सिनेरियोस डिजाइन कर सकते हैं, आप इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं। तो व्हाटएवर द फंक्शनैलिटी यू वांट टू डिजाइन, यू कैन डिजाइन ऑन द पावर एप्स। और उसको कम्युनिकेट कराने के लिए आपको आइदर लॉजिक एप्स रिक्वायर्ड हैं, अगर आपके कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस हैं, आपको हाई लेवल एंटरप्राइज इंटीग्रेशन बिल्ड करनी है तो लॉजिक एप्स हैं, और अगर आपके सिंपल सिनेरियोज हैं, सिंपल फ्लोज हैं, तो आप पावर ऑटोमेट के थ्रू जा सकते हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू। इसके अलावा कोई क्वेश्चन? मेरे ख्याल में हमने कवर कर लिए जो क्वेश्चन थे, और या दैट इज ऑल। बाकी आमिर भाई, थैंक यू सो मच, रियली नाइस टू हैव यू। थैंक यू सो मच शबीब रजा, थैंक यू, आपने भी एफर्ट की। इन कनेक्टिविटी इश्यूज लाइफ का पार्ट है, अनफॉर्चुनेटली they can always happen, but I really appreciate all your effort, your willingness to share with community. Thank you so much and hope to see थैंक you यू सो again. मच, थैंक यू। आई होप आगे के सेशंस भी बहुत एनर्जेटिक होंगे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दोस सेशंस। थैंक यू सो मच। Thank you. Thanks. Take care. थैंक यू वेरी मच, बाय। Okay. That's great. We have our next speaker. Next speaker is Rishona. Rishona will join us just in a couple of minutes. She has joined, and her topic, we will be starting her session in 1 or 2 minutes. Please stay tuned, and I will just bring Rishona to studio.
Okay, welcome again, everyone. This is day 2 of Urdu Hindi Bootcamp. Our next speaker, Rishona Elijah, has joined us. I will just add Rishona to our live broadcast. Welcome, Rishona. Hello, everyone. Hope you've been enjoying the conference so far. Yeah. And Rishona, I can see you have shared your screen as well. Getting it ready, yep. This is I have shared and it is live now. Over to you, and apologies just to skip, just to save a little time, I have not introduced you, and please give us a detailed introduction. Thank you so much, and thanks for this support. Thank you. Of course, we'll see you soon. Thanks. All right, everyone, welcome to my session today. Hope we've been enjoying the conference so far, and I'm really excited to be a part of the Urdu Hindi Bootcamp. So hopefully you guys are looking forward to my session today. Bit about me, my name is Rishona Elijah, and I'm based in Sydney, Australia. I work for a Microsoft partner, Barhead Solutions, as a Power Platform trainer and evangelist. So my usual day is running training around things like the Power Platform. Virtual agents is really my favorite one. So you probably see I'm quite enthusiastic about this stuff. You can find me on LinkedIn, and I've also put a link to my blog there. It's a short session today, 30 minutes to pack in as much as we can about Power Virtual Agents and what you need to get started. Today, it won't be like a step-by-step, how do I build it? I wanted to really give you guys an overview and what you need to get started with it. But if you are looking for a bit more of full-on step-by-step labs on how to do it, check out my website. I'll bring it out at the end later. I put some exercises on there if you want to give this a go yourself. So let's go ahead and get started. Power Virtual Agents, creating your own no-code chatbot. So in the session today, I'll start off with an overview of virtual agents, talk about some use cases so you can start to get some ideas on ways that you can use this. Then how we go about getting started. We'll show you a demo of it. Then some other cool things you can do with it, like bringing Power Automate into your bot as well. There's the Power Virtual Agents app for Teams, and then some other resources to help you out as well. To start us off here, let's take a look at an overview of Power Virtual Agents. This is one of the tools we have on the Microsoft Power Platform, and it's the ability to create your own chatbot. Great thing about this is all without code. You don't need to be an engineer or have like any strong technical background to build this stuff out. It's easy to create using a graphical interface. And what's not cool about building your own chatbot, really? It allows you to engage in natural language as well. I'm sure we've all been in an experience where we're talking to a bot, but then you have to sound very robotic in your responses. But what we have here with virtual agents is the ability for it to engage naturally with you. Might just be like how you're having a conversation with a person or your colleague. So you don't really need to change the language that you use to be able to interact with it. Your chatbot can take action for you as well. Of course, you can use it for basic Q&A, but the great thing about this, and like we'll look at later, is how we can bring Power Automate into this. You can automate processes, you can get it to pull out and recover information for you. So really, you can get your bot to do things. It's kind of like your own personal assistant that you might have. And there are different channels that we can publish it out to as well that I'll bring up in a bit too. Sure, we all might have some ideas on ways that we can use this, but there are a lot of possibilities out there on what you can build with this. So here are some things to get you thinking on some ways that you can be using virtual agents back at work. So your virtual agent, it can be either internal, something for your employees to use, or external, like on a website for your customers or anyone anonymous to interact with. Some common things we see if it's internal are some of the examples here, like a HR chatbot. You might have your HR person. They're constantly asking questions or answering questions from people like, how much leave do I have? How do I submit leave? Can I work from home today? Building a bot for this
really saves that person time, and it's better for the employee too. They can go to the bot any time of the day and get a consistent and instant response for that. IT support and logging tickets. I've seen some cool examples where it's being used for people to go and log their IT requests that then gets escalated to whoever the team is to handle that. And there are some other examples noted there as well. If it's something external, the key one here is all about customer self-service, really. So it empowers your customers or anyone else who's engaging with your services to find out answers to things on their own, rather than sending an email and waiting for a response, or picking up the phone waiting to talk to someone. It's a quick turnaround with this too. So that you can just go to the bot, it can recover information and order for you if you wanted. So really get things done a lot faster with this. And the example that I'll show us is one about lead generation. You could have, like a contact form on a website, put it as a bot instead, and then that's a way to capture new leads and then escalate that somewhere else. These are the channels that we have available at the moment for the places that you can, get your bot active on. Any website you might have, mobile app, Facebook Messenger is another example here. But you'll notice that I've highlighted two of them there. The demo website, it's a link that you can get to the bot if you want people to try it out, or if you're building it for fun and you want to show people what you've made, you can get this link that you can share with everyone and they can give your bot a go. And Microsoft Teams, very popular at the moment, because you can deploy your bot in Teams just on your Teams license, which I'm sure majority of us are using at the moment. So that's a pretty cool way that you can get your bot deployed and get people using it. To build your virtual agent, we have the two places. There's the place it all started, which was the web portal that we can go and build it. And later I'll bring up Microsoft Teams so you can see what the experience is like if you're going with that option too. So let's start off by looking at the website. And I'll bring up one of the bots that I've created for us to take a look at for today. Here we go. Land Grab Real Estate is the name of my bot. If you're a Sims fan, you might get that reference that I've used there. I'll head over to the home page. It might zoom in for us as well. So we can create multiple bots. I've created this particular one for the example that I'll show you today. Let's say we're a real estate company. We have a website and we want to put this bot on a website for our visitors to use. So I've created one for this there. With your bot as well, I've set it up with English, but it can have multiple. There are other languages you can set it up with as well if you're looking to do that. Here we can test it out as we go along, so we can go ahead and say hello, see how the bot has been working. And there we go. You can customize how it interacts with you over in the topics area here. Your topics are the scenarios that your bot has been set up to handle. So what we have here, I'll just close that so we have more space at the side. We have topics that we can go ahead and create. If maybe we have a real estate website, we can set up a topic for booking an inspection, or I want to sell my property. And this is where we build out that particular conversation here. This one that I've done is the one to book an inspection that we'll take a look at later on. But there are also these one called the system topics, like a greeting. That's how your bot's going to go ahead and introduce yourself. So if someone says hi, you can go ahead and go to the authoring canvas. And you can give your bot its own personality, really, like I've done here. You can change how it interacts. And we do this just by building out the conversation tree that you can see. All right, and the entities area is, I'll talk a bit about this in a moment. Your entities are things that your bot has been trained to be able to identify in a conversation.
Of course, we want feedback on how the bot is performing too, so we can constantly go and update it and make sure that it's effective and doing what we want. So we get these inbuilt analytics to show us how it's been performing. How many sessions has it engaged in? Are people resolving the issues that they're reaching? Or even like the abandon rate. If people are dropping out of the conversation before it ends, that's something that you can drill down into, see what the causes are, and then go and edit your bot to improve that. Over in the publish area is where you can commit the changes and put the bot out for people to use. And over here, you can also find that demo website that I mentioned. And this is a good one. You can send the link off to your friends, your colleagues, if you want to show off what you've built, and they can go ahead and interact with the bot from here. Another L in there. Oh, still recognize the hello. So that's a good example of how the bot can still look over typos. The AI in the background can still work out what people mean, even if you spell something wrong, like I did there. The manage area gives us some more tools, like change the name. If you want to teach the bot any skills or change the channels it's deployed to, you can set that up over in this area here. This is the typical bot building process that you'd go through. So first of all, you'd create your bot. You can then go ahead and create the topics. So you need to have a think about what scenarios do you want the bot to handle, and then you can go ahead and construct the conversations for it. Test the bot. When you're happy with it, you can publish it out. And we really have this cycle going on here. You can see the analytics and measure the performance. Then you can go back to your topic, edit it as you want, and continuously improve how it's been performing. So the next thing we'll talk about is more about what's in that conversation that you're setting up. So what's in your bot? We have the topics that are available. System topics like the greeting, and then user topics, which are these custom ones that you're creating for the bot. Each topic has its own conversation tree that you've built out. Then our conversation tree can have these things in it: trigger phrases, entities, and Power Automate flows that we want to build in. So an entity is what our bot is going to identify. The ones you see here are a section of some of the entities that are available. Let's say if you want to get someone's email address, they can type in an email, the bot can then pull out and identify that. Numbers, colors, like you can see here, these are things that the bot is able to pick up. From this, you can also create your own custom entity. So in the example I'll show us in a moment, I've created a custom entity to be able to pick up on Australian cities and locations. At the moment, unfortunately, it's only the US default ones in there. But let's say if you're running a shop and you have particular products you sell, you can put in a custom one so the bot can pick up and understand what people mean if they reference a product. Now, your variables are ways that you can get your bot to provide tailored content and remember user information. Let's say if the bot asks for my name. I send off my name, it picks up on that. It can then reference that out throughout the conversation. So it's another way that you can customize and personalize the experience a lot. And then that information it's collecting can be used either throughout the rest of the conversation or even in a Power Automate flow as well. And something I think is really cool is the ability called slot filling. So your bot, it's not just going to blindly follow the script that you've set up for it. What it will do is it can decide which questions to ask and which ones it needs to skip. Let's say if it asks a question, what's my name and where do I live? I can put all of the answers in a single response before the question is asked, and then it knows when to skip or when to ask the question. So we'll take a look at this in a demo. I'll show you what this all looks like. So I'll go back into my land grab real estate example for today.
And we'll look at this example topic that I've set up for an inspection booking. So the idea of this one is that we're on our real estate website. We want to capture information of people wanting to book an inspection. So let's go ahead and take a look at that. So over in topics here, I'll go over to inspection inquiry. This is the summary page of the topic. It's where we can set up trigger phrases. Your trigger phrases are what's going to direct someone to this particular conversation. It's what you're expecting the end user to say to go ahead and start this. And the authoring canvas is where we can build this out. So like I said, I'm not going to take a step-by-step into how you build it because it is quite straightforward really on how you build it out. So if you want to send a message, you can go ahead and click a node to add in a message and type that in. Or if you wanted to ask a question, call and action is where you can bring in the power of Power Automate to do some workflow in your bot. So I'll just zoom out so we can get a better look at the bot there. And I'll test it out as we go along. So I'll start off by doing our trigger phrase, so book an inspection. So you can see it's working its way through the conversation. I'll go ahead and answer that. Some more questions here. In this particular one, this Australian States is a custom entity that I set up to be able to pick up on Australian locations that are being used. And look at that. So we've got to a certain point. It's done its Q&A with me. And now you can see it's reused all that information that I've given it in this message node using those variables here. So this is the way that you can reuse that information the bot has got and insert it throughout the conversation. So that was a very turn-based one. Typically, you might have someone come in and give all the information you need up front. So let's go ahead and try out to see how that slot filling works. So let's start again. Let's say book an inspection. And let's just go ahead and say return it again. This time, I'm going to put a bunch of information in my one response. Let's say I want to rent a new in Victoria. And there we go. What it's done in this case is I did write a whole sentence, which a lot of words, it wasn't even trained to identify. But it's gone ahead and skipped down to the bottom to summarize what I wanted here. To confirm you're looking to rent a 4-bedroom property in Victoria. So that's to show you how the AI is able to pick up on this and make it like a lot more of a fluent, natural conversation here, rather than go back and ask the same things over and over again if it's already got it. So there is a next part to this topic, which is going to be a flow that's going to be pulled in to take some action. Over here, I'll just introduce this bit into what Power Automate can do before we take a look at that. With Power Automate, you automate whatever workflows you need with whatever systems you might be using. So there are over 450 connectors to applications out there like Twitter, Zendesk. The one I've used today is Microsoft Teams. And that allows your chatbot to go ahead and call and make use of all of those connectors and applications that you use at the moment. So whenever you want your bot to take action and do something for you, this is what allows your bot to, do all that here. In this example, I've created a flow that's going to, first of all, send that information the bot has collected and route it to the right team that I have in Microsoft Teams. So it'll collect that information, post it in a Teams channel for me. And this is one way that you can do something like capture your lead information. Of course, Microsoft Teams could be replaced with any other application you might be using at the moment.
So I'll go over back into my topic here and continue the conversation. You can see we can also add that conditional branching as well. So, if you have multiple scenarios that can happen in the conversation, you can branch this as much as you need, because of course it's not going to be very as straightforward. So let's confirm that. So now let's say I want to pull. Any other comments? Here it's going to look for an email address. And the next stage, we've done that one that's call an action here. So from my point of view of things as a user, I can see it's told me it's gone ahead and passed the details on to one of our agents. But what I've done here is I've gone ahead and used that call an action for my inspection request, which we can open up here. All right, so let's take a look at that. I think I have it open here. So with our Power Virtual Agents flow, we start off in Power Virtual Agents. All those inputs and variables I collected throughout the conversation, I can now use these throughout the flow. Actually, what I might do, I'll show you the end result first and then that back end here. So in this particular case, it was going to send that information off and post it into Teams for me. And that is exactly what it's gone ahead and done. So it remembered that I wanted to put in something about renting. The information I've given it, it's gone ahead and posted it into this Teams channel for me. And that's all done via this flow here. You can see I've put in some additional steps, like get the current time, because I want to use that in my message that I posted. I've built in a condition to post it to the right team based on the information that I provided. And then we can go ahead and link it all up. So we can write our message and then insert that information from here. The return values to Power Virtual Agents, this is where you can go ahead and return something back to the user. Let's say if they placed an order, they have an email address, and you want to go and look in a system to recover their details, you can build a flow to do that and use this to send the info back to the chatbot here. So the idea of this is that any flow or any action you want the bot to take, if you can build it as a Power Automate flow, really you can get your bot to do it. And that opens up a range of possibilities and things that you can do with this tool here. We've ended off the conversation here with a survey, so we can go ahead and finish that one off. And then that survey that you finish off with goes back into the analytics, so you can see how people are happy or not too happy with the bot's performance from there. So to finish us off here, I'll give us an overview of the Power Virtual Agents app from Microsoft Teams, because I think this is a great way to get started with it all, especially if you're already a Teams user. It's a good way to discover and to start using virtual agents for yourself, and that's via the app that's there. I'll switch over to Teams just to show you where you can find it. So your apps you can find here, and just look for Power Virtual Agents. Provided your IT hasn't shut it down, you should be able to find it there. And this puts that whole bot building experience directly within Teams. Exactly the same, like nothing's really changed. It's just really embedded into Teams now and included in your Teams license too. So we really have that same building experience as well. And then to publish it out, it's really fast. Within a few clicks, you can deploy the bot for your organization or for a particular team to use. Here is an example of what it looks like if you're using it in Teams. So it's kind of like, just talking to a colleague, how you might start a chat with them. It's kind of like having like a friend in the office you can talk to. Like starting with a chat with someone, people can go ahead and access it like this. All right, so that was really the end of the session, but to finish us off, I'll just give us a bit of a guide on ways that you can go and try this out.
So like I said, trying it in Microsoft Teams is a good way to discover it and get started. If you want to create like your own personal team and play around with it, or maybe you might already have a use case for it, you can start building it out there. And if you're looking for more step-by-step instructions, I have some exercises I'm putting on my blog here that you can try out. So I did this earlier today. I published one out to build your own space theme bot, which I think is quite exciting. I'm putting some exercises on there, which will be like a step-by-step guide on how you can build your virtual agent. And I've gone with the space Mars theme there. So I'll bring it up what I've done there. There's an exercise I'll put on there probably in a few days if you want to check back, which shows you how you can build one that's going to calculate your weight in Mars, on Mars, that is. So yeah, if you just go over to the blog and you will see it there. I'll zoom in here. This is one that I've done, which in a few days, I'll put up some instructions on how to build it. It's one where you can put in your weights, and then there's a Power Automate flow to do like some calculation for you. So put in a number and it can then return that value to you. So build your own space theme bot, go and try it out. Let me know if you're giving it a go. So this is a good way if you want to get some proper step-by-step instruction on how to build it. All right, and we are now at the end of the session. So I'll just like to thank everyone. If you're watching live, hopefully you enjoyed it and you're excited to go and try this out on your own. And once again, thanks for coming here today. I had quite a lot of fun showing this to you guys and keen to see what you all go and build after this. I think you're on mute, by the way. I can see you talking. Might be having some technical difficulties there. That's okay. Yeah. Thank you so much, Rishona. Really appreciate that. Was very informative, really helpful. I wish when I started learning about PBA, I would have attended a session like this. It was really helpful. Thanks. And Rishona, a couple of small questions. Uh, do you, do you know if we can move our team-based PVA bot to another environment? Is it possible? Any idea about that? I know these sort of things are more specific to scenarios, but if you have, experience or know something, please. So you mean like if you can build the bot in Teams, then move it elsewhere? Yeah, just like in for if you built bot in your tenant and I want same bot, so will I need to build it again from the scratch in my Nope. environment? Good news is that you don't. So there is the ability to just export it. So what you can do is, yeah, just in your bot, if you go over to here, I think it's general settings. Yep. Here you go, export and import. What it does, it just gives you like a zip file you can download, go over to your other tenant or whatever it is. You can then import it into solutions from there. So quite easy if you want to be able to move your bot from one place to another. And will it work with team as well? Any thoughts Yep, so yeah, it's built the same way, so it will work with Teams as well. Yeah. And can we transfer, I know there is a feature which allows us to transfer to human. I'm not sure if you are across. I'm not aware. Like if something further has been happen on this, can we still transfer it to any other backend other than Dynamics 365, or that's the only area where we can transfer to human agent? You sure can. I didn't cover it today, but with the transfer to agent, there's the Dynamics 365 omni-channel, which is already pre-built out of the box for you. So that's an easy connection, but you can bring your own
customer service system that you might be using. There is a bit more setup with that. It would probably be your IT team setting that up for you. But yep, you can bring your own engagement hub, like you can see here. So you're not just limited to just Dynamics 365 for it. You can really choose whichever one you might be using. And thanks for letting everyone know about website, and you have designed some starting exercises. Do you want to suggest anything additional, any resources, if someone wants to explore or learn the basics? What can be like one source we have learned, you have created your resources on? Other than that, Definitely. anything? Power Virtual Agents in a Day. Let me see if I can bring it up. If you just look for that, for Power Virtual Agents in a Day. This is like the Microsoft training, introductory training into virtual agents for a day. I run them at Barhead. This is actually my favorite training that's there. Step by step, it takes you through some different exercises on building your own chatbot, introductory stuff. So definitely recommend this one as well if you're looking for that kind of guided learning around it. So if you just sort of do a Google of it, stream. Yes, that is Google of it. You can download the instructions there and work your way through it. There's also one, if you just look for Power Virtual Agents, Microsoft Teams, there's an example on the Microsoft Docs site, which takes you through how you can build your own HR chatbot as well. So plenty of resources out there if you're looking to try it out and work through an example of one to build. Yep. And Rishona, are there any like community boards or boards pre-built available, which, for example, if I want to learn, I can use them as a sample? Is there anything which, if you can recommend something? Yes, so if I can bring it up, there is the Power Virtual Agents community. Yep. Should have had these prepared up. So the other Power Platform sites, really all of the tools, Power Apps, they all have their own community sites. There is a Power Virtual Agents one, so you can just do what I did to find it. And yeah, from here, people do their like questions and answers, and you can also see there is a place where you can browse a gallery of bots people have created as well. Yeah. Rishona, we have got a couple of questions from LinkedIn. Do you want to take those, or I know we are. Yeah. Just Do we have time? Just let me read out, and if you feel they can be briefly, you can answer. First one is Uzair has asked, can I integrate this bot in my custom developed app? Yep, it is possible. I couldn't tell you how to do it, but one of the channels is a mobile app that you would have noticed when you go into the channels area. So yes, that is possible. Yeah, absolutely. Thank you so much. Yeah, that was all, Rishona. Thank you so much. Really appreciate. It was great to have you and learn from your experience. Thank you so much for sharing. Really love being a part of it. Thank you so much for having me, and thank you everyone for watching along too. Thank you. Take care. Bye. Thank you. Thank you so much, everyone. That was Rishona, and Rishona was presenting basics of Power Virtual Agent. Next, before going to our next session, we have a break, and I can quickly see it is a 10 minutes break. So yeah, I will also take a break and hope to see you back after 10 minutes. Please stay with us. Thank you so much.
Hi again. Thank you so much, everyone. Just by chance, the last session we finished a little earlier, and we still have to wait for around 10 minutes to start our next session. And speaker, they will be arriving on time. So please feel free to grab a cup of tea or coffee, or just if you want to relax yourself. We will be live again, and our next speaker will be available in around 10 minutes. Thank you so much. Stay with us, and thanks for joining. Thank you.
Hello again. Thank you so much, everyone who has joined us. My name is Yavar Iqbal. I have joined from Melbourne, Australia. This is our second day of Urdu Hindi Bootcamp. We are expecting our next speaker, Hashim Niaz, and Hashim will be presenting Power BI for sales managers. Uh, as per plan, Hashim should be here now. My team, they are just following it up, and I hope in a few minutes we will have Hashim. And in case if we are skipping this, I will just update here on this channel. But please stay tuned and stay with us. And I hope in a couple of minutes we will have Hashim with us. And meanwhile, please enjoy the music. And if you are interested to know, that is the music being played is Rubab. I'm also trying to learn Rubab. I have Rubab with me. Very nice music. And yeah, Hashim has joined. We will have Hashim in a few minutes. Thank you so much and stay with us. Thank you. Okay, everyone, thanks for being patient. We have Hashim. Hashim has joined us from Dubai. And Hashim, if you wanna share your screen, I will confirm you. Okay. Hashim is presenting Power BI for sales managers. Please use our comments box for asking any questions if you want to ask something. Yes, that is great, Hashim. I have your live, your screen is shared. Over to you now, and I will be Okay. here in helping you after session for questions. Thanks, Hashim. Okay. Okay. Thank you, everyone. Thanks for inviting me. Thanks for our community. Sorry, Hi. Good morning. Good afternoon. Good evening. From wherever you are, which part of the world. So our today's session is for Power BI for Sales Manager. I'll be delivering the session in English. If you have any question, please use the chat box, and we can take your question in between as well. So here is my brief introduction. I have been running Power BI consultancies for more than 15 years. I have won different Power BI awards, community awards in 2018-19. I have awarded MIE Expert Award as well. And then if you want to connect, you can connect me on LinkedIn and on Twitter as well. So for today's, we will be using Power BI Desktop, which is a free version. You can download this free Power BI Desktop from this URL, and the sample data is actually available here. Let's start. How do we actually progress this session? So we have 4 parts to our session.
and each word is timed to 10 minutes. So we can finish up this exercise, all those 4 exercises in the next 40 minutes. So our first part is actually going to be data loading, data modeling, data quality. Second part, we need to create some basic chart. Third part, we'll need to create some more advanced chart. And the final part, we will try to format our report. And we will try to format report in between as well, so we can not let me. So after our today's session, what you will be able to do, you will be able to actually have this kind of a dashboard where you can actually compare your sales, your year over year increase, and then product line. So you can have those things. So we will get this ready. So for this, I have made a very simple file here, which is a blank file. I have already loaded the data just to save the time, so we can actually pace up with all the exercises. So currently my data looks like this. Let me show my screen here. So this is the data looks like. It is a supermarket sales data which we have collected from different UAE stores. So you can see city information, customer type, gender, product line, and the most important thing is number of orders and the number of sales we have generated, right? So you'll be using those. I have uploaded this into my SharePoint online drive, and to get this into Power BI, what I did, I simply connect with the Power BI SharePoint connector, SharePoint folder connection, and I fetch all the data using that connection. So this part is simple. Now, since we have loaded the data, now the second part is start with the data quality and data transformation. So we can go to the transform data tab, and we can see if we have some. Okay, let's go here. Let me turn off the cam. So this is saying that, okay, there is some issue with our production data. So I will try to see what this issue is. I will try to resolve, okay, what is. So first of all, we have this data source. These are the files available. This is hidden filter, anything else. This is working fine. This is actually saying that it does not actually find the sample file here, right? So what I'm saying here is, okay, let's go back because I have this test directory as well. So let's try to go back and change this filter, because I use this parameter called, you can have these parameter, manage parameter, go to edit parameter. And let's say I want to change this to a test directory for now, just to see if this is working fine. So once I click this one, and then you see everything starts rendering correct. I just do apply and close. So this is fine. So it will actually take a few minutes to load the data from SharePoint online directory to my local drive. So this is actually downloading. Power BI is actually downloading that copy of the data. So now let's see what we have. We can see we have different things. So let's place the sales here. Let's place it to a card visual. So this is showing me 4.64 million sales. So if I want to drag and drop, slice and dice between, like, okay, what is my sales? If I can click, so I can see each year by year sales as well by clicking on this dimension. Okay, but now if I want to compare year over year comparison and month over month, year to date comparison, things like that. So to do this, I need a date dimension or a calendar dimension, you could say. And to be able to create this calendar dimension, I can simply go here. I have this calendar function here. So I can click on the modeling tab. I can create a new table, and then I need to define the date table here, which is I say, okay, this is my calendar table, and I will be using the calendar function. And I will be providing a start and end date here. So let me say my start date is 2018 01 January 01. This is my start date, and then my end date is 2021 12 31. So I created a date, very basic date dimension here, and I'll be using this date dimension to slice and dice. So if I click on this here and I change this to a slicer visual and I click, you see this is not working. So these dimensions are, this calendar dimension or date dimension is not linked with my sales table. So to do that, I need to create a relationship between those tables. So I go to the modeling tab. I can create on manage relationship. I create a new relationship between my calendar table and my sales table based on which key field. So my key field is date, and I set cardinality to one to many and cross filter direction to
single, and always make sure that the relationship is active. Once I do that, click OK. So if I go back here, and you can see now I can filter this based on my selection. So this is the first part. Now if I want this one, currently I'm using the sales field and I'm using the aggregation as sales. So this is called implicit measure, which Power BI creates it for me, but these are not extended or these are not reusable. So I will go here and create a new measure called sales, which actually will show me the sales of my overall sales. So I will simply write a DAX expression called sales, and I'm doing the sum of sales. So I have the column called sales here, and I'm doing the sum. I will apply some formatting here. I'll say this is decimal number, and when I choose this measure, so this is actually showing me the same result as well. So advantage of this is, like this calculation, I can refer this sales calculation or sales DAX measure anywhere else in my exercise as well. So let's save this for now, because it's always a key step that you save all those your experiments here. If I want to look, see, I have all these tables available here. If I want to change from one directory to another, so I have this directory, and then I have this prod directory as well. So if I want to change this from sales to prod, so what I can do, I can simply change this prod, and I click OK, and I apply the changes. So now this will reflect the data from my other directory. So you can see 2018 it does not have any data, but 2019, 20, 21 I have seeing the data as well. So this is like how you can actually switch between your data sources. So it's good that you actually parameterize your data sources. To parameterize your data source, you go to data source settings, and then you can actually click, and you can click on to change source, and here you can actually define the parameter here, right? So these are some easy steps. Now moving to the visualization part, because we will be focusing more on to our visualization, so which is here. So this is our, we need to focus that we need to design something like this, right? So to do that, what we will do, we need some kind of a sales measure which we have already created. Now we need few more measures. So to organize my measures, I will create a new table called measures. So I will always organize all my measures into my measure tables. So I will just load this one, and this sales measure, I can actually move it between different tables as well. So I can right click on this sales measure. I just need to hold on while this is loading. So I right click on this sales measure, and then I can choose the home table. I can actually select that which table I need to move. And you can see this table is now being moved from one part to the other table, right? Okay, so this is it, and we save this one for now. Now we need, if we go to this exercise, like we need to have the sales chart, we need to have sales year over year, and then we need to have this product line. So how we can go about this? So first, try to have this one simple. So if I need to create this sales chart, what I can do, I already have this one. So I change this to a line. And then rather than having this, what if I plot this against my month? So let's say I have this here. So now this time, so I have these things which is quite similar to my first chart, right? We'll just try to make some adjustments there as well. So this is my first chart, which is actually showing me sales here. This is actually too much for me. So I will change the title here. I will turn off, I will customize the title. So I will go to the title, and I will say, okay, only show me sales. The title is sales. And then I can actually have this one aligned, something like this, which is very much aligned with what I'm seeing right now. And then I need some more spacing. So I don't need sales here, because this title here is self-explanatory that this is showing the sales. So I can go to my y-axis, and then I can turn off the title. So if I go here, I can turn off the title. So I have more space. Always make sure when you go to the x-axis, when you are plotting the date chart, so your dates are continuous. So
sorry, your dates are categorical. So I have now these dates are categorical. So these are sorted based on this one. And one more thing you can do here is either you can actually remove this title here as well, just to get more space. And also one more thing I want to do here is, like, you see this gray, this is not very much readable. So what I can do, I can go quickly go to the view tab and I can customize my theme to be more precise, just to use the black color for all the labeling. So I will say, okay, whatever the name is, leave it at this. I will just use this black color to be all my labels. So I have done that. And also for the text, I just need to increase this text size to this, and the title size should be 16. And for cards, I would say 22, right? I click and apply this one, and you can see now this is much more formatted. So I am closer enough for the first part, which is my this. And if I want, I can go back here, because I saw I have some bordering there as well. So I can define currently from here. If I go to the visual, I can check the background border. I can say, okay, background is fine, black color, and then the radius is 10. So once I apply, you can see I have borders across all my visuals. So which is pretty much fine. Now let's try to have save this file, and let's remove this for now. And we will try to have this visual more aligned here. So I will say, okay, X position is 10, Y is 140, something like that. X is 200, of width is 420, something like this. So I have made the visual size here. And one more thing I might need to decrease this one thing here, which is called my height. So I will adjust my height here. Again, 200 for me is too much, so I will leave it as like 160, something like that. And if I want some more spacing, I can just turn off the X. So when I hover here, I can see the sales, I can see the month name as well, which is fine. I don't need the scroll, so I will put some filters here. So what I will do, I will create this year. I will change this to a slicer visual. And then rather than having all the hierarchical labels, I will just have this as year. And then I go here, I turn off the title and turn on the title here. And I will say, okay, make this as a year. Everything else I will just do the alignment. So I have this year thing here. Now if I want to format this one, I can go here and I will just check these boxes. So 230, 10, 160, something like this. Height is going to be 80, 80 is too slow, 90, something like that. And then I just set it out, and here I can see selection control. I want turn this as a drop down, and I can turn it back. So I have this one available here as well. I can save this one for now, and then I need one for the month filter. So let's suppose we select 2020. So you can see only 2020 sales here, so which is fine. And then if I click here, I want one more. So this time I remove all other labels and leave only month. And this time I'll leave it as I have this position called 420, something here, 280, 10. And I will have the height as similar with the last one, which is 90. So I have this one as well. One thing I want to do here is, like, I want to change the orientation. So currently I don't have, sorry, I go to the slicer, and then I can change the orientation to horizontal. So I have now changed the orientation to horizontal. And then if I want, I can just turn off the slicer header like the previous one, and I can make the title aligned. If you want the title alignment to be the same, so I can do this, and I can click on this one. I can click on the format painter, and then I can do it like click on this one.
right? This and then this. So it has appeared this, but the disadvantage of this is actually this changes my orientation, so I can change it back, right? So I have this one, two things available here. And if I want to select few months, so I can select these 4 months here. These are here, and I can go here. I can turn on the shapes. If you want, you can turn on the data labels, so you can see what the actual sales is. And you can turn the shape here as well, show marker. So you can have this marker available here as well to just showcase the, so you can make it big or small as well. Also, sometimes some people don't like this line, so they can have this kind of a step chart, which is fine as well. So if it's always possible, like you can have this one, whatever you feel is comfortable. So I have done some kind of there. I just need to provide some title to this chart. So I can go here, provide the text box, and I say, this is my sales dashboard, kind of a thing. And I can simply say sales dashboard. I can say this to be 18. I can align, make this alignment more bold. And I can say this background color, I would choose the same, right? Now this time I need to have this width up here. So I will go here, do X tan, Y tan, and then this should be 200 should be more than enough. And this should be 90, right? Oh, so I have something same what is available here on my charts. So I have done something like this, which is close enough. And I think I have some more spacing, so I can move these two closer. So this is my sales dashboard, which is actually going 200. So I can start this from 220. And same here, which is I can open the calculator just to make the x as y 220 plus 160, 380, 390. So I can start it from 390, right? So I have made the equal spacing. Now just to have some more kind, if you could say, so I can click insert some lines here. Let's say I need to insert a line here, and I can just say start position this, y is 110 for now, and then 1270. This is my line, and the height should be only 40, which is workable. And then I can change the line color here as dark black. One thing, I can turn off the border for this one for now. And you can see this is much clearer, and maybe I can move it a bit up. Right. So I can see different kind of things here. Like, okay, I can see here, I need some more spacing. So this is like, so I save this one. Now to move to the second part of the exercise where we describe we need to have year over year sales increase. So we need to create some year over year measure as well. So to create a year over year measure, what we do, we will use the quick measure thing. So Power BI lets you define the quick measures, and you can have click on the quick measure thing, and you need what calculation. So we need a year over year calculation, so I can choose. So there are like 25 built-in calculations there you can use from the drop down time intelligence. So I am choosing year over year, and then year over year calculation based on what sales I have sales, and then I can use the calendar dimension here. So this is the date key. So once I click OK, this actually creates a year over year measure here. Now again, I want to change the home table, and I can place this year over year increase again. So let's to do this, I just copy paste this one visual, and then I can realign it here somewhere down here. And I can simply, rather than this time placing this sales measure, I can choose this year over year measure. So I can see this year over year measure increase. So I can see this is 8% increase, this is 4.7, this is 2.6, this is 54% increase here. So if I remove any of the month filter, I can see all the months from Jan to, and then again I need to adjust the title for this chart as well.
So I need to go here and go to the titles, and this is my sales YOY percentage. So with this quickly, I have actually done the two parts of the exercises, and I'm almost trying to cover up what we can have, what we can achieve with the Power BI. So usually the third part of the exercise is like where I need to have this. Let's go back here and see what we need. We need the average sales percentage increase measure, and then this is by product line. So we need something like this, which is we are going to use by product line. So how I'm going to use this one? So let's try to copy paste this one for now and place it here just for the purpose of ease. So I'm placing it up here, and rather than this time making it based on my date dimension, I choose change the chart type to matrix, and I could say this time I use plot. I want to plot this against my product line. So I have choose this product line. So I have this something similar, which is close but not close enough. So how do I go about it? So what is this chart? So this, anyone guess what chart this is I'm using? So anyone can guess like what is this chart? So I'm using a matrix or which other visual I'm using. So I'm using this chart actually, cluster bar chart you could choose, or maybe you can choose a stack bar chart. So I'm using a cluster bar chart here. And then this time, rather than having a sales year over year increase, I am plotting this as sales measure, just a simple sales measure. And because we have turned off our y-axis label, so I have this y-axis. Now my labels are there in my y-axis, and I can go here in my y-axis and I can try to increase this to 50%. So you see now this become more readable for me. So all the charts are there available here. Any question? And if I want to increase, I can increase the title here as well. So we can fit it into the size, right? And obviously I can rename this to the title to just reflect what it is showing. So this is showing product line sales or sales by product line. You can So this is very much self-explanatory. Now, if you want to change this number, because this is all showing in million. So if I want to change this, so I can go to data labels and I can change this from auto to thousands. So now these are showing, and then position, I can always say, select this as outside. So everything is outside. So this is more readable. I can save this for now. And let's see what we can have from now. And here, what I think I can get some more space here if I remove this label. So if I remove the y-axis here, so I can see I generate more space, and same for here as well. If I remove y-axis, I can generate more space, right? So with this, I almost finished up the first part of the exercise, like where we have this one, and we can simply have the others as well. We can create some other as well. So let's save this for now. And how about, so currently we are generating this using this cluster bar chart, but how about, let me show you, since we have some time, how about if we create this using the matrix visual? So I have this matrix visual available with me, and this time what I want to do, I click here and I go to the styling option and I say apply none, and then I can go on my subtotals to just turn off the subtotal, and I can click on the grid and I can try to have some spaces among my, or maybe just 5 is enough, right? So I have some spaces up here, and then, sorry, again, I need to go back here. For my conditional formatting, I can insert the data bars, and this time I want this data bars, which is fine. I can expand these data bars here. And for the field formatting, I can go and I can
I can show this sales to the, so which is quite similar to the one which we have created, right? And then if I want, I can rename those labels here up here. So I can select this one, and just to format this one, I go here and go to my column headers, and I can say my column headers to white and background color to the same, and I can rename this as sales, which is fine. And one more thing you can do here is go to the field formatting, and you can say the alignment of the field should be center. Should be center, and then to apply to headers, things like that. So I have done this one, which is fine. And then I go to the conditional formatting, and I could choose like, okay, what I want to see. So this is, and you can do the turn the sorting based on whatever you want. So I'm sorting currently based on my sales. So with this, we have created almost the first part and other part. So I need some kind of so I can again go insert some line here, and this time I do a rotation here on my line. So I go here on my line, and I will do the rotation as 90. And this time I would say choose the light shade of gray, and I can extend my line from 430, and width should be 40, which is good enough. Even this is more. Wow. And same, I can turn off the border for this one. And if you want, you can actually squeeze this out as much as you want. So I would usually prefer it to be 30, somewhere around 30. So I have this line, I just save this one, and then if you want, you want some title like this, Abu Dhabi sales and thing like that, you can simply change it. So I can simply copy this for now, this visual. So I have copied and pasted this one for now, and then I can actually change the title to Abu Dhabi. And then I can adjust the sizing here from the journal tab as well. So I can say, okay, this should be somewhere around Y position should be somewhere around 120, 10, 120. And then this should be 200 width or 400, 420, which is my width. The total width size and the height should be pretty much smaller. So I only need 60 or maybe 40. If I can say I can fit this. And then if I select, I need to minimize something called here 14. Let's say 50 would do it. Right. So I have this one now. I need some more spacing because of the line. So I need some this to be 130, which is good. And this one, this chart title, I need to move it a bit down. So I can move it down by somewhere around 170 or 190 would be enough. 180. Right, and then I can maybe decrease the height to 120. Just cool. And I can do the same for here as well. I can do the same here, like this is 10, and this should be 300 and 120. So I have this one, and now I maybe increase the height of this one. So if I go here, I can see what is the height I use, 300 plus 120. So I can start this from maybe from 420 this time. Or 440 is fine. And then I can have this to 280. Or actually this is going back to the bottom, so I would maybe suggest it to be only 260. Okay, which is fine. And I can move these a bit down, so they have similar kind of
Okay, so we have adjusted this one. Now, since this is showing Abu Dhabi and we want to choose only Abu Dhabi sales here, and I think we are just running out of time, so we can go to the filter here. And for all these charts, I will say, okay, select the filter on this, on these visuals, like city. So the city should be Abu Dhabi. So if I select this one, so this now only showing me Abu Dhabi. And you can see when I put this same filter here as well, this 8.07 will change. So now this is 7.34. And if I change this again here on, sorry, on my third chart, so I can simply have this one here, right? So I have this, all this saved at Abu Dhabi, right? So if I want to have this as duplicate, so what I can do, I can simply select all these visuals, and Power BI lets you create all the copy paste things. So I copy all these and then I paste, and I can simply move all these together. So let's say, so I have this one thing. So I have this one available here, and this time I can just rename this to Dubai. And for these charts, I can change the filters here to from Abu Dhabi, this time to Dubai. So this will show me Dubai sales. This will show me Dubai sales, right? And this will again show me Dubai sales. So this is how you actually copy paste things, extend on those calculations. So I have this one available. So this is, now we are pretty much similar what we have here, which is similar to the one which we have here. So if somebody wants, like I select this Fab, so it will only show me Fab data. If I select Fab, March, April, so if I control select these three, so this will now start showing me this data, right? And this is based on these cities, right? How about this reset filter button? So how can, if I want to reset my slicer, so let's say I want this to be selected all the months. So I can go here, I can add the button called reset button. You can add, I usually go by blank button. So I use a blank button here, and I say, okay, enable the text, and this should be reset filter. And then I say the font color to be white, and I will just try to adjust some of the things here. Padding, and then I can say outline, icon, which is fine, background. So I set the background to be this, which is fine. So now I need to adjust this button to some kind of a place where it could, so I would say X position should be somewhere around 1040. Y should be 10. Width, height, I can make this 100. Just, so I can turn on the outline. I can turn off the icons. For the text, just to make it more readable, I can change this to 18, just somewhere, or 16 to just make it more readable. So I have this filter available here. I have this button. Now I need to define some actions. So to define some actions, I need to create a bookmark kind of thing. Usually I would rather prefer to have reset filter button like this, just a single line. So I will need to create some bookmarks. So to create a bookmark, you go here, home tab, view tab, and then you click on bookmarks. So I will say this is my default state, and I'll set this as reset, which is my default state. And when I click view, this is showing me this is the default state. I click exit. Now on reset filter, I will choose the action, and action, I would say go to the bookmark, and the bookmark name is reset. And then I can also have the tooltip available. This will reset the filter. So when you hover over, this will show you this will reset filter. So let's try to click some of the visuals. So I have this 3 visuals here, and when I click on reset filter, actually this resets me the filter. Now just to complete this chart, so how about if we choose all those 3 things here, and we make this available for another city as well. So I can simply
extend on this same UI which we have created earlier, and see if we can actually have this one available. We might need some more space, so we will adjust the spacing later on. So we have the same Sharjah available, and we'll go here, and this time we will choose the city as Sharjah for all those 3 charts. So I'll go up here and I will choose Sharjah. I'll go up here and I will choose Sharjah. Right. So if you want to see how this chart does look like, so this is my full view. Okay. So we can publish this to our Power BI service. So I can publish this one out. We can always adjust the labels out here, like this are overlapping, so we can create some more space. So this is published, so it shows me, okay, if you want to open this chart, so I will just copy paste. I'll go here into my Power BI and I will choose, because this I have published this in the workspace. So I can see this is data ready. This is the file name. So I click on this report and I can see, okay, I can see what these are all about. So with this, these are important analysis a manager can do, and the reset filter thing, you can see this is working fine. Any question till this point? With this, we'll just wrap up this section and we will open the floor for the Q&A. So any question? I'm just turning my cam on to see if you have any question. Okay. Hey Hashim. No, not for now. Abhi, no questions. But I find really interesting one question, like Power BI जैसे आ रहा है, तो इसमें क्या हम pivoting concepts को use कर सकते हैं? Like Excel के concept में बहुत से लोग they are used to those using, right? But can we do that same pivoting here in Power BI? I know आप थोड़ा सा different Yes, language I can. No, एक okay, generic fine. question users Okay, के साथ है. no, okay. So usually what people do is like people ask like, okay, can we use extend on the pivot table, or can we do the same kind of pivot? So pivot transformation. So the pivot transformation is available here. If you go to the transform tab and you click, this is, let's suppose this is my data set. So I can go to the transformation and then I have the pivot and unpivot columns transformation. So I can do pivot and then I can do the unpivot transformation as well. So if I click on those number of columns, so those 2 transformations are available here as well. So if you want, somebody wants to see, okay, can I do the pivot kind of thing? So they can choose the pivot or unpivot transformation depending on their requirement. Hope this answers. Yes, definitely. And okay. One last question from my side. What do you think is the better way to, with the business application, jitni aapke samne hai, you can see that. Okay. Right? Okay. So the thing is like always keep your data organized into rows form. Don't go for the columnar format. Exactly. Because when I say the columnar format, like what most Excel people like to do is like they align all their sales in, like one column is showing 2020 sales, the other column is showing 2021 sales, and the third column is showing 2022 sales. The problem with this is like when you do time intelligence, year over year intelligence, this will not work. So when I put those into the rows, I can compare those side by side. I can even compare those within the same year. I can actually go and select, and I can do all kind of time intelligence function just to keep them in the row format. So when I mean the row format is the same, like I'm here, you can see the dates here. These are 2022 sales, and then if I scroll it down, you will see some 2019 sales, and you can see some 2021 sales as well. So this is how you leave those data into the row format rather than pivoting it and changing it to the columnar format. This is specifically with Power BI, because then you will be able to have this power of time intelligence function. You can easily utilize those powerful functions. Perfect. Thank you, Shahab. Sorry, Hasham. We don't see any more questions here, but thank you again for your time. And okay, thank you. Have a nice day. Thank you. Thanks for soon. inviting. Bye-bye. Thank you.
So, hello everyone. New face. I will be taking on behalf of Yawer now, and we will be waiting for our next speaker. That is Shakir Maseed, and soon he will be joining this next session. So, unfortunately, Shakir will be joining us soon. Towards technical difficulties, but he will be joining us soon. So, please let us wait. Thank you.
आवाज नहीं आ रही मुझे. So here we have Shakir Majid with us now. So over to you, Shakir. I'm sharing your screen as well. Can you hear और us? Please? आवाज आ रही है आपको सर? आ रही है मुस्तजाब, मुझे आ रही है, आवाज आ रही है आपकी. Perfect. Thank you, Mustajab. Thanks a lot. Thank you. All right. Okay. So, thank you all for inviting me in this Urdu Hindi Bootcamp 2021. So, wow, very good. Welcome to all. खुशामदीद. Thank you. और आप लोगों को अब मेरे इस सेशन में वेलकम हो, और hopefully I can transfer as much as I have learned to you. So जो भी मैंने कुछ पढ़ा है या फिर मैंने कुछ उसको ट्राई किया है, तो मैं आपको ट्रांसफर कर पाऊंगा इस सेशन में. तो अब मैं ये अपने बारे में है. मेरा नाम शाकिर मजीद खान है. SMK भी शॉर्ट फॉर्म है, और मैं एक सीनियर टेक्निकल लीड के रोल पे काम कर रहा हूँ आजकल. और मैं एक माइक्रोसॉफ्ट MVP हूँ, मोस्ट वैल्यूएबल प्रोफेशन हूँ, और बिजनेस एप्लीकेशन में पावर एप्स, पावर BI, पावर ऑटोमेट एंड पावर वर्चुअल एजेंट जो बिजनेस एप्लीकेशंस के अंदर आता है, प्लस डायनामिक्स भी आता है. तो मैं इस बिजनेस एप्लीकेशन का MVP हूँ. मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड ट्रेनर भी हूँ. मैं माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट हूँ. ये कुछ आपको एग्जाम पास करने के बाद आप माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट बन जाते हैं. तो मैं ऑफिस 365 में सोल्यूशन एक्सपर्ट हूँ. और आजकल मैं अपना एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ जिसका नाम SMK गीक स्पीक है, जो आप भी जाके देख सकते हैं. यूजुअली मैं शेयर पॉइंट प्लस पावर प्लेटफॉर्म को कवर करता हूँ. पावर प्लेटफॉर्म ज़्यादा है, शेयर पॉइंट थोड़ी सी कम हो रही है आहिस्ता, और ऑफिस 365 है. तो डिफरेंट टॉपिक्स को मैं कवर करता हूँ, मगर मेजरली मैं पावर प्लेटफॉर्म को कवर करता हूँ. और इसके बाद मेरा ये ट्विटर हैंडल है मीट SMK. सो आप मुझे को फॉलो कर सकते हैं, और मैं आपको फॉलो कर लूँगा. और ये मेरा साइट है, एड्रेस है जो नीचे नज़र आ रहा होगा आपको, shakirmajid.com. तो shakirmajid.com पे आप जाएं तो यहाँ पे मैं अपने ब्लॉग्स को अपडेट करता हूँ, और कुछ भी अगर न्यू लर्निंग होती है तो उसके बारे में मैं रेगुलरली पोस्ट करता हूँ. तो आप इसको जा सकते हैं, और आप मुझे लिंक्डइन पे भी ऐड कर सकते हैं. शाकिर मजिद खान को आप टाइप करेंगे, सर्च करेंगे, तो आपको मेरा नाम फर्स्ट रिजल्ट में ही दिखेगा. ओके. सो पहला जो इस सेशन का जो टॉपिक है वो मेरा लेट्स एक्सप्लोर पावर वर्चुअल एजेंट एडवांस फीचर्स. सो आइडिया ये है कि मैंने काफ़ी डिफरेंट सेशन में पावर वर्चुअल एजेंट के बारे में बात की है. तो आइडिया ये है कि मैं पावर वर्चुअल एजेंट और प्लस उसके थोड़े से एडवांस फीचर के बारे में बात करूंगा. शुरू में अगर मैं बेसिक फीचर को लेके ही चलूँगा, और उससे फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ एडवांस फीचर के साथ पावर वर्चुअल एजेंट को आप यूज कर सकते हैं. ओके. अब मैं दूसरी स्लाइड पे जाता हूँ. ओके. सो ये मेरी कुछ स्टोरी है इवेंजलिज्म के बारे में. बैक इन थोड़ा मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बताऊं तो मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया, और फिर उसके बाद मैंने कराची में काम किया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में. फिर उसके बाद मैंने मिडिल ईस्ट में काम किया 5-6 साल, और उसके बाद मैं अभी ऑस्ट्रेलिया में आ गया हूँ. तो अब जैसे कि मैंने
मैं काफ़ी मैंने कराची में और मिडिल ईस्ट में काफ़ी सेशन किए इन पर्सन, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे होंगे, और इवन के मैंने माइक्रोसॉफ्ट इनोवेशन सेंटर कराची में के साथ काफ़ी सेशंस किए। फिर कराची यूनिवर्सिटी, फास्ट, माजू और पीएफ कीट के अंदर बहुत सेशंस किए मैंने बैक इन 2008, 2009, 2010, 2011। तो उस वक्त मैं फोकस्ड ओनली शेयर पॉइंट पे था, और ऑन प्रेम और शेयर पॉइंट 2010 उस वक्त काफ़ी हॉट था। अभी भी काफ़ी अच्छा है, मगर शेयर पॉइंट उस वक्त रियली रियली हॉट था। तो उसके बारे में मैं काफ़ी टेक टेक टॉक करता था। और फिर मैं एक जैसा जो लोग कराची में हैं या पे कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको पता होगा कि सर सैयद में संडे को सेशन वो होते थे, ट्रेनिंग क्लासेस होती थी। तो फिर मैं वहाँ पे शेयर पॉइंट की ट्रेनिंग देता था, और उसके बाद फिर मैं अपना यूज़र ग्रुप चलाता था, और काफ़ी यानी फिर मैं काफ़ी सेशंस किया। और उसके बाद अब जो है पैंडेमिक के दौर में अब सिर्फ सारे वर्चुअल सेशंस हैं। तो होपफुली जैसे ही पैंडेमिक ख़त्म होगा तो फिर मैं दोबारा से कोई इन पर्सन सेशन कर पाएंगे, देखते हैं क्या होता है। ऑलराइट, सो ये मेरे वेयर अबाउट्स हैं। तो मैं जैसे मैंने बताया, मैं आजकल ऑस्ट्रेलिया में हूँ पिछले 4-5 साल से, और ऑस्ट्रेलिया में मैं सिडनी में हूँ। और सिडनी काफ़ी अच्छी जगह है, और या इट्स ऑल गुड, इट्स ऑल गुड। ओके, सो लेट्स कम्स टू आवर टॉपिक, पावर वर्चुअल एजेंट। यस, सो पावर वर्चुअल एजेंट क्या है? अगर हम इसको पावर वर्चुअल एजेंट को एक बहुत ही आसान और सादा सी ज़बान में या फिर शब्दों में बताएं, तो उसमें ये ऐसा है कि पावर वर्चुअल एजेंट एक बिजनेस यूजर्स को और लो कोड इन्वायरमेंट के थ्रू आप एज अ डेवलपर और इवन एज अ बिजनेस यूजर्स वो बॉट को आसानी से क्रिएट कर पाए। इट्स ऑल अबाउट द इजीनेस टू क्रिएट द बॉट। तो अगर हम उसके 4 फायदों को देखें, तो फर्स्ट उसमें एलिमिनेट है। तो एलिमिनेट के बारे में ये कहा जा सकता है कि जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है, जैसे कि आपके पास कोई बोर्ड बनाना चाह रहा है फाइनेंस की टीम में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, और आप चाहते हैं कि यार मैं जो हूँ वो क्या कहते हैं वो फाइनेंस का बंदा बोर्ड बनाए, तो वो सिंपल सा वो जाके अपने डेवलपमेंट टीम को जो बोर्ड को बनाती है, या पे जो आईटी की टीम जो पावर वर्चुअल एजेंट को मेंटेन करती है, वो उससे जाके बात करे और उनसे जाके वो आपस में कनेक्ट हो जाओ। और सिंपल सा ग्राफिकल इंटरफेस है, तो आप जाके डायरेक्ट बोर्ड बना सकते हैं। उसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। सेकंड जो पॉइंट है वो रिड्यूस है, कि जो पूरा जो हम अगर हम बॉट की बात करें और अजूर, और हम उस बॉट की बात करें कि जो हम सी शार्प से बनाते हैं या फिर डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बनाते हैं, उसके अंडरलेइंग काफ़ी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज होती है, लोइस हो गया, क्यूएनए मेकर हो गया, और डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो उसमें काफ़ी टाइम ज़ाया होता है। तो टाइम ज़ाया नहीं होता कि उसमें आपको क्या कहते हैं उसकी हेल्प चाहिए होती है। मगर इस टाइम में जैसे कि ये ग्राफिकल इंटरफेस है और मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वेरी इजी टू मेक। तो आपका जो टाइम होता है बोर्ड बिल्ड, ये सारा इसमें टाइम खत्म हो जाता है। अगेन जैसे मैंने बताया कि आपको सारी एआई बेस कॉम्प्लेक्सिटी और मेथोलॉजी और अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज जो होती हैं बॉट के बनाने के लिए, वो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पता हो। तो आप उसके बगैर भी आप पूरा फुल फंक्शनल बॉट बना सकते हैं। सिंप्लीफाई चौथा पॉइंट है, और इसमें यही है कि आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स कोड की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जाके उसमें डिफरेंट ट्रिगर फ्रेजेस बताते हैं, टॉपिक बनाते हैं, और वो वेरी इजी होता जाता है।
फिफ्थ पॉइंट है कि इसकी एक आईटी एफर्ट जो है वो बहुत ही मिनिमम है। आप डायरेक्ट बना के डिप्लॉय कर सकते हैं और आपको मेंटेनेंस बहुत ही कम चाहिए, ऑलमोस्ट कि ना होने के बराबर चाहिए। तो यूजुअली आपको ज़रूरी नहीं होता कि बहुत ज़्यादा आईटी टीम से आप इंगेज हों और आप बनाएं। अगर आप बिजनेस यूजर थे और आप बनाना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ 1 or 2 IT people you can create your own bot and you can maintain yourself, so you won't require IT guys help and effort to maintain this bot. Okay, so let's go to my this slide. What you can do. Okay, so which is very important कि आप इससे कर क्या सकते हैं। पावर वर्चुअल एजेंट मेरे पास है, मेरे पास पावर वर्चुअल है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैं इससे कर क्या सकता हूँ। तो इससे आप अपनी जो टीम को एम्पावर कर सकते हैं। आप उनको आराम से आप अपना बॉट बना सकते हैं, उसको विदाउट के बहुत सारे लोगों को इंगेज करें, और आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती और एआई एक्सपर्टीज की ज़रूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया। सेकेंडली, रिड्यूस कॉस्ट। ऑब्वियसली बात है कि जब आपके बाद लोग कम लोग आपने एंगेज हो रहे हैं, उसके बाद आप जो सारी जो कॉमन क्यूरीज हैं वो आप बॉट से मेंटेन करवा रहे हैं, और आप जो ह्यूमन टाइम जो है उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं। तो मैं एक मिसाल के तौर पे, अगर आपको कोई डेटा दिखाना है थर्ड पार्टी सिस्टम से, शेयर पॉइंट से, डेटा वर्ड से, तो आप थ्रू पावर वर्चुअल एजेंट वो डेटा दिखा सकते हैं और यूज़र को एक इनरिच फील दे सकते हैं कि यार उसका डेटा डिफरेंट सिस्टम से उठ को उसको प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड हो रही हैं। एंड इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि अगर आपके पास आपको पता है कि यार मेरे कौन से क्वेश्चन जो है वो मिस हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन का जवाब हो रहा है, तो आप उसमें सब आपके पास ये पूरी एनालिटिक्स आ जाती है, उसमें आपको पता लग जाता है कि आपके पास क्या क्या टॉपिक्स आपके क्या क्या आपके क्वेश्चंस हैं वो आंसर्स हुए हैं, और आपके पूरे पास एनालिटिक्स आ जाती है। ऑलराइट, ओके, सो मैं आपको दूसरी स्लाइड पे ले जाऊंगा। अच्छा, अब हम इसके बारे में बात करते हैं टॉपिक्स। अब हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं, पावर वर्चुअल एजेंट के कंपोनेंट्स के बारे में। तो मेनली 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला टॉपिक्स है, फिर एंटिटीज है, फिर प्री बिल्ड एंटिटीज हैं, फिर कस्टम एंड टॉपिक्स है, एंटिटीज है, एक्शंस है, पब्लिशिंग है। तो 4 मेजर टॉपिक्स हैं, 4 मेजर्स हैं। और तो हम पहले टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि टॉपिक जो है, तो टॉपिक्स को आप इस तरह से देखें कि आपके पास ट्रिगरिंग, आपके पास एक ग्रीटिंग्स है, ठीक है। आप इसको ग्रीटिंग्स का, अगर मैं एग्जांपल दे दूं, ग्रीटिंग्स, तो ग्रीटिंग्स को आपको ट्रिगर करने के लिए मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, ठीक है। कि हो सकता है कि आप हाउ आर यू, व्हाट्सअप, हाउ आर यू डूइंग, को सारे जो फेजेस हैं उनका एक मेन टॉपिक बन जाएगा, जिससे जो उन सारे ट्रिगरिंग फ्रेजेस पे इन्वोक हो जाएगा। तो क्या करते हैं, तो क्या होता है कि इसका आइडिया ये है कि आप उन सारे ट्रिगरिंग फ्रेजेस को कंबाइन करते हैं और उनको एक टॉपिक के साथ अटैच करते हैं। तो जब भी कोई उन ट्रिगर फ्रेजेस को पूछता है आपके बॉट से, तो वो टॉपिक के अंदर जाएगा और फिर आप अपने सारे स्टेप बता देंगे कि आपको जब ये सवाल आएगा बॉट के पास, तो आपने उसको क्या रिस्पॉन्स देना है, और उसके बेसिस पे आपने कैसे उसकी फ्लोर मूवमेंट करानी है। सेकेंड बॉट जो है वो एंटिटीज है। एंटिटीज जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है चैटबॉट का, और अगर हम इसको देखें तो ये नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग है। जो आपको एआई, जो यूजर की इंटेंट है, यूजर कहना चाह रहा है, उसको नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के थ्रू किस तरह से वो उसको ट्रांसलेट करता है। सो मिसाल के तौर पे, अगर आप कहते हैं कि यार मुझे यूज़र की एज पता करनी है, और आप कहते हैं कि यार
आप कहते हैं कि मैं इसको कैसे पता करूंगा, तो इसके अंदर प्री बिल्ट एंटिटी होती है जिसको हम एज कहते हैं। तो अगर आप उसको यूज करेंगे और इसको अटैच कर देंगे और यूजर कहता है माई एज इज 19 ईयर ओल्ड और आई एम 19 ईयर ओल्ड, तो वो उसको समझ जाएगा कि आप 19 ईयर्स की एज है और उसको 19 ईयर्स को वेरिएबल में सेव कर लेगा। अगर अगर आपके पास जो प्रीबिल्ट एंटिटीज हैं वो से आपका काम पूरा नहीं हो रहा, जैसे कि कलर्स हो गए, नंबर्स हो गए, नेम्स हो गए, एज हो गया, सिटी हो गई, कंट्री हो गई, तो उससे आपका एंटिटी या फिर आपका काम नहीं हो रहा था, आप फिर कस्टम एंटिटी बना सकते हैं। कस्टम एंटिटी का फायदा ये होता है कि आप जो है उसको डिफरेंट ऑप्शन दे सकते हैं यूजर को कि वो उन ऑप्शंस को चूज करते हुए आप क्या वो अपना बता सके, वो अपना रिप्लाई दे सके। तो ये भी काफी यूजफुल है। ओके, तो थर्डली है उसको हम एक्शंस कहते हैं। एक्शंस जो है वो आप जो है वो अपने बॉट के अंदर अपने टॉपिक के अंदर एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। एक्शन इन द फॉर्म ऑफ के आप कोई दूसरा मिसाल आप जो है वो बैकएंड सिस्टम से डेटा उठाना है, तो आप उसको फ्लो के जरिए से डेटा उठा सकते हैं और डेटा को आप शो करवा सकते हैं। ये मैं आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से मैं फ्लो को डेटा उठा रहा हूँ और वो मैं डेटा फिर दिखा रहा हूँ। और जो लास्ट पॉइंट है वो है पब्लिशिंग। सबसे जो मेन पार्ट है मेरे लिहाज से, उसमें चलिए कि हमने बना लिया और आप कह सकते हैं कि यार ऐसे टूल्स हैं जो बना सकते हैं, मगर इसमें जो पब्लिशिंग है, जितने आप इजीली पब्लिश कर सकते हैं बॉट को on different channels or on the teams, which is quite good, कि आप बस जस्ट सीरीज ऑफ क्लिक्स के जरिए आप इसको अपने टीम्स में डिप्लॉय कर सकते हैं और अपने डिफरेंट चैनल्स में डिप्लॉय कर सकते हैं, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म में डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक हो गया और व्हाट्सएप हो गया। तो आप डिफरेंट चैनल्स में इसको अपने डिप्लॉय कर सकते हैं। ऑलराइट, अब हम थोड़े से एडवांस टॉपिक के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि वो एडवांस क्या इसमें है और क्या इन्होंने कुछ चीज़ें अभी प्रीव्यू में है, कुछ चीज़ें आ गई हैं, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब जैसे कि टॉपिक सजेशन फ्रॉम द चैट ट्रांसक्रिप्ट, टॉपिक ओवरलैप डिटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो इसमें मिसाल के तौर पे आपके पास डिफरेंट टॉपिक हैं और कुछ टॉपिक्स के ट्रिगर फ्रेजेस आपस में ओवरलैप होते हैं, तो आपको ये बताएगा कि कौन से टॉपिक के ट्रिगर फ्रेजेस हैं वो आपस में ओवरलैप हो गए, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि यार अच्छा ये ओवरलैप हो रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, क्या वो ट्रिगर फ्रेजेस को आगे को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर नया कोई टॉपिक बना सकते हैं। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाता हूं। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूं। ओके, सो ये जो है ये जो स्लाइड है वो है कि टॉपिक सजेशन फ्रॉम चैट ट्रांसक्रिप्ट। सो लेट्स सपोज दैट कि आपके पास आपने सवाल पूछ रहे हैं, ठीक है, और वो आपके पास वो टॉपिक नहीं है और यूज़र जो है वो सवाल पूछ रहा है और यूज़र के पास और आपने कोई टॉपिक नहीं बनाया हुआ और उसके पास कोई जवाब नहीं पहुंच रहा, तो वो क्या करेगा कि वो टॉपिक सजेशन अपने पास मेंटेन करेगा और फिर आपको वो बताएगा कि ये कन्वर्सेशन हुई है और जो है इसमें ये सवाल ये उसके लिहाज से ये टॉपिक्स होने चाहिए थे या फिर ये टॉपिक सजेशन होनी चाहिए थे, तो आप फिर उसके बाद वो टॉपिक बना सकते हैं जो बहुत अच्छा
मैं बहुत अच्छा फीचर है। एक लिहाज से देखें कि आपको एज अ बॉट मैनेजर आप बॉट मैनेज करते हैं और आपको नहीं पता चल रहा है कि कौन से जो क्यूरीज है वो मिस हो रही हैं, यहाँ पे बॉट जवाब नहीं दे पा रहा। तो ये बहुत अच्छा है कि अगर आपको पता लग जाए कि क्यूरीज कौन सी मिस हो रही हैं और आपको इंटेलिजेंटली सबसे बड़ी बात है वो इंटेलिजेंटली आपको बता रहे हैं कि यार ये जो बॉट है वो ये जो टॉपिक्स हैं या पे ये जो क्यूरीज हैं ये टॉपिक बहुत बन सकते हैं, तो आप वो टॉपिक अपने पास बना सकते हैं। ओके, ऑलराइट, सो again this is quite important. Automatic triggering improvement. तो जिस मिसाल के तौर पे अगर आपके पास टॉपिक्स हैं वो कुछ बहुत ज़्यादा आपस में रिलेटेड हैं और बॉट उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि वो कौन सा टॉपिक, कौन सा ट्रिगर फ्रेजेस कौन से टॉपिक में जाएगा, तो वो यूजुअली आपसे पूछता है कि आपका कहने का क्या मकसद है, आप कौन सी चीज़ को पूछना चाह रहे हैं। जैसे कि ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बिफोर ऑटो ट्रिगरिंग इम्प्रूवमेंट, अगर आपने इसको ऑन कर लिया ऑटोमेटिक ट्रिगरिंग इम्प्रूवमेंट को, तो जो ये बॉट ये करेगा कि बॉट नोट कर लेगा कि आपकी लास्ट प्रेफरेंस क्या थी। तो मिसाल के तौर पे आपने सेम सवाल दोबारा पूछा और तो वो बॉट ये अज्यूम कर लेगा कि आपका मतलब वही है जो आपने पहले से चूज किया था। तो वो आपको बता देगा कि आप जो है वो बाय सर्विस करना चाह रहे हैं या फिर बाय आइटम करना चाह रहे हैं। सो विच इज़ क्वाइट गुड। अगर आप एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहे हैं तो आपको वो ले जाएगा डायरेक्ट उसी जवाब पे। ऑलराइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगेन सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इसकी जो सबसे खास बात यह है कि ये कन्वर्जेशन पर्सनलाइजेशन करता है और उसका उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप ऑफिस 365 डोमेन में हैं और आप कहते हैं यार कि मेरी सब इंफॉर्मेशन ऑफिस 365 के अंदर है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर है, जैसे मेरा नाम है और डेट ऑफ बर्थ है और इस तरह की चीज़ें हैं, तो वाई के मैं जब यूज़र बॉट से बात कर रहा है, उनसे उससे क्यूरी कर रहा है, तो अगर बॉट पूछे कि व्हाट इज़ योर फर्स्ट नेम और व्हाट इज़ योर लास्ट नेम, तो वो कुछ कुछ सेंसिटिव बनाता है, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास है, सिस्टम को पता होनी चाहिए। तो क्या होता है कि वो आपका जो बॉट है वो ये इंफॉर्मेशन आपकी माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ और अजूर एक्टिव डायरेक्टरी से उठा लेता है और आपको वो कन्वर्जेशन के थ्रू बताता रहता है कि अब आपने ये यूज आपकी ये डिटेल है। तो और इवन ये भी है कि अगर आपने कुछ चीज़ें पहले से बताई हुई हैं तो वो चीज़ें आपके पास सेव कर लेगा, वो आपको दोबारा से आपको चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं होगी। ऑलराइट, सो अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूँगा और हम थोड़ा सा इन जो मैंने चीज़ें अभी बताई हैं उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे और थोड़ा मैं आपको शो करूँगा, बताऊँगा, दिखाऊँगा कि यार ये कैसी चीज़ें चलती है, कैसी चीज़ें यूज़र को नज़र आती। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड।
ऑलराइट, ओके, सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब मैंने स्क्रीन शेयर करना शुरू कर दी है। ऑलराइट, ओके, सो जब भी आप पावर वर्चुअल एजेंट को खोलना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे कि आप अपने पास अपनी स्क्रीन पे जाएंगे और ब्राउज़र पे जाएंगे अपने ऑफिस 365 के अकाउंट की। अगर आपने ब्राउज़र बनाया हुआ, अगर आपने उसकी प्रोफाइल बनाई हुई है, मैंने जैसे कि क्रोम में प्रोफाइल्स बनाई हुई है काफ़ी, तो मैं इसको पावर वेब डॉट पी वेब की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप pv पावर डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम पे जाएंगे तो आपको डायरेक्ट वेब डॉट पावर डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट कॉम। अच्छा, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने काफ़ी इसमें बॉट बनाए हुए पहले से, तो आपको नज़र आ रहा होगा कि पावर वर्चुअल एजेंट PVA 365। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने काफ़ी बॉट बनाए हुए हैं। नए बॉट भी बना सकते हैं, तो हम नया बॉट बना लेते हैं। उसको मैं उर्दू हिंदी PVA कर लेते हैं और मैं इसको इंग्लिश कर देता हूँ और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, उससे पहले मैं जो मेरे पास पहले से बना हुआ है मैं उसी को दिखा देता हूँ अभी फिलहाल। तो जब भी आप बॉट में जाएंगे तो आपको बता देगा कि कौन सा बॉट आपके पास एक्टिव है। जैसे कि यहाँ पे आपको टिक मार्क नज़र आ रहा होगा, और फिर जब आप जाएंगे अपने मेन स्क्रीन में तो आपको डिफरेंट पैनल नज़र आएंगे आपको लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा कि अब मैं आपको इसके बारे में दिखाऊंगा, थोड़ा सा आपको मैं फैमिलियर करवाऊंगा, फिर इसके बाद हम अपने फिर हम इसको देखेंगे किस तरह हम इसको नए टॉपिक बना सकते हैं और डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास टॉपिक्स आ जाते हैं। तो ये आपके सारे टॉपिक्स हैं, और जैसे मैंने बताया कि कुछ टॉपिक जो है वो प्री बिल्ड होते हैं, कुछ टॉपिक जो है वो कुछ टॉपिक प्री बिल्ड आते हैं, और कुछ टॉपिक जो है वो आपके यूजर टॉपिक होते हैं। तो ये कुछ सिस्टम टॉपिक होता है, कुछ यूजर टॉपिक्स होते हैं। जब भी आप सिस्टम टॉपिक बनाते हैं, जब भी आप बनाते हैं नया बोर्ड, तो आपको कुछ टॉपिक वो बना के देता है। जैसे कि ये सारे टॉपिक जो आपको रेंच के लोगो में नज़र आ रही होंगी, वो सारे आपके सिस्टम टॉपिक्स हैं, और ये आपके यूज़र टॉपिक्स है जो आ रहे हैं। या जब आप नया बोर्ड बनाते हैं तो जो बोर्ड तो आपको लिए वो चार और पाँच तकरीबन वो आपको यूज़र टॉपिक बना के देता है, और आप बाकी आप कुछ अलग से टॉपिक बना सकते हैं। ये जो टॉपिक आपको नज़र आ रहा है ऊपर, ये मैंने बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के थ्रू बनाया हुआ है, जो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने बनाया, कैसे इसका क्या काम है, और हम इसको क्यों हम बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर को यूज़ करते हैं विद इन द पावर वर्चुअल एजेंट। ओके, सो अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको एक नया टॉपिक बना के दिखाता हूँ यहाँ से, और हम कहते हैं कि भाई द इवेंट डेट्स, ठीक है, और इवेंट टाइमिंग्स। सो अगर मैं इसको ऑथरिंग कैनवस में जाऊँ, तो ये कैनवस है जहाँ पे आप अपने सारे आप अपने एक्शन लिख सकते हैं, कंडीशन डाल सकते हैं, रिस्पॉन्स दे सकते हैं। तो ये पूरा कैनवस बना देता है आपके पास। तो अगर आप कहेंगे कि यार dates and timings would be
9 a.m. to 5:30 EST पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, और इस तरह से बात कर सकते हैं हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी लिख सकते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई आई थिंक हाफ एन आवर का फ़र्क है हम इंडिया और पाकिस्तान में, फ़र्क तो ज़्यादा नहीं है मगर घंटों के आधे घंटे का फ़र्क है। अच्छा जी, तो ये हम कह सकते हैं, तो हम इसको मैं सेव कर लूँगा, और मैं अगर मैं इसको टेस्ट करना चाह रहा हूँ तो टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ से पूछते हैं इवेंट टाइमिंग्स, तो बता देगा कि ये इवेंट टाइमिंग्स है। तो ये क्वाइट सिंपल है, और उसके बाद आप कंडीशन भी ला सकते हैं कि आप डिफरेंट कंडीशन में ला सकते हैं। अभी हम इसको मैं इसको ज़्यादा से मैं थोड़ा सा इसके एडवांस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा टच करना चाह रहा हूँ। तकरीबन हमारे 10 मिनट बाकी हैं, तो होपफुली मैं इसको टच करूँ। अच्छा, इसमें पहले से मैंने टॉपिक्स कुछ बना के रखे हुए थे जस्ट टू सेव आवर टाइम। तो मैंने क्या किया है कि मेरे पास एक शेयर पॉइंट साइट है, और मैंने उसमें कंटूस आई थिंक ये वाली साइट है। तो यूजर तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक सिनेरियो लिया है। सिनेरियो में ये है कि हमारे पास एक मिसाल के तो सॉरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डे केयर्स हैं, और उसके डिफरेंट ऑफिसेज हैं। सो लेट्स सपोज के अगर हम सिडनी की बात करते हैं कि उसके तीन तीन जगह ऑफिसेज हैं, और तीनों जगह डे केयर्स हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मैं अपने बच्चे को कौन सा डे केयर, मतलब डे केयर्स की टाइमिंग क्या है, और अगर मेरा बच्चा उस डे केयर में जाता है तो वो भी बच्चा मेरा क्या कर रहा है। तो उसकी जो भी जो डे केयर की मैनेजमेंट है वो अपने सिस्टम मेंटेन करती है, जो सिस्टम शेयर पॉइंट में डेटा एंटर करता है, और मैं उस डेटा को यूज कर रहा हूँ यूजर को दिखाने के लिए कि यूजर का जो भी सन है, डॉटर है, और जो भी है बच्चे हैं, वो क्या उस वक्त क्या 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 एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, और डिफरेंट मैथ से सवाल भी पूछ सकता हूँ। तो ये मेरे एक अपनी एक मैंने सिनेरियो बनाया। तो आई थिंक यही है। लेट मी जस्ट गो टू साइट कंटेंट, आई थिंक सो। मैं आपको बस no, that's not the thing. Yes, child information. So yeah, तो मेरे पास दो शेयर पॉइंट्स की साइट्स हैं, सॉरी लिस्ट है। एक में मैं मेरे सारे बच्चों की इंफॉर्मेशन उनके पेरेंट्स की ईमेल के साथ मैंने लिंक कर दिया है, और सेकेंडली मैं एक एक्टिविटी बताता हूँ कि वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं। तो अगर मैं इससे टॉपिक से मैं पूछूँ हाय एंड और फिर उसके बाद मैं पूछूँ what is my child doing, तो ये मुझसे पूछेगा बच्चे का। तो हो सकता है कि मेरे एक से दो बच्चे जाते हों उस डे केयर में, तो मैं उनको बताऊंगा कि अहमद नाम है, तो वो जाके सिस्टम से देख लेगा अहमद, और कैन यू प्लीज, ओके सो अहमद का नाम मैं बताता हूँ। अहमद, व्हाट प्लीज कैन यू प्लीज नेम योर चाइल्ड। ओके, सो उसका नाम अहमद है, और अहमद इज प्लेइंग इन द सैंडपिट्स। तो अगर आप देख रहे हैं तो अहमद जो है वो सैंडपिट्स में खेल रहा है। तो अगर मैं इसकी करंट एक्टिविटी को स्लीपिंग पे कर दूंगा तो वो स्लीपिंग पे आ जाएगा। अच्छा, ये चीज़ खुद ब खुद नहीं हो रही। तो उसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एक पीछे इसका एक फ्लो लिखा हुआ है। तो अगर मैं इधर जाऊँ और आपको देखें तो चाइल्ड एक्टिविटी के अंदर ऑथरिंग कैनवस के अंदर जाऊँ, तो ऑथरिंग कैनवस में आप ये देखेंगे कि मैंने एक फ्लो लिखे हुए हैं। फ्लो के ज़रिए जो है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको पता लग जाती है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। अगर मैं लेट्स सी, मैं आपको अगर दिखाता हूँ,
Okay, so I'll just use this one, no worries. So ये मेरी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है. अच्छा, तो एक तो ये चीज़ होगी कि जो भी मैं अगर मुझे कोई डेटा दिखाना है यूज़र को, और डेटा किसी भी कोई और डेटा सोर्स के अंदर है, शेयर पॉइंट के अंदर है, इवन के डेटा वर्ड्स के अंदर है, सीक्वल के अंदर है, तो आप जो है वो अपना पावर ऑटोमेट को यूज़ करते हुए इसको सारे डेटा को उसमें शो करवा सकते हैं. और यूज़र के पास एक इनरिच इंफॉर्मेशन आती है डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्सेज से. अच्छा, अच्छा, अगर हम मैं इसमें एक और भी काम कर सकते हैं. इसमें हम जो है कि अगर आपके पास कोई Q&A की साइट है, और आप उस Q&A की साइट को अपने पास एज अ टॉपिक लेके आना चाहते हैं. आप कहते हैं कि यार मैं Q&A मेकर अलग से क्यों लिखूं, उसमें मैं अलग अलग से टॉपिक बनाऊं, तो उसका क्या फ़ायदा है. तो आप एक अपनी Q&A की साइट बना सकते हैं, और Q&A की साइट को जो है वो अपने पास का लिंक दे सकते हैं, और लिंक से वो सारे सजेस्टेड टॉपिक आपके पास लेकर आ जाएगा. सो विच इज़ क्वाइट सिंपल. और अगर आप और ये काफ़ी रिच भी कर देता है आपके पूरा बॉट के ओवरऑल एक्सपीरियंस को, बिकॉज के आपने सारे टॉपिक्स अपनी वैलिड साइट से उठाए हैं, और आप उसमें उसकी चेंज भी कर सकते हैं, उनको ऑन ऑफ भी कर सकते हो. ऑल डिपेंड ऑन यू. ओके, एंड थर्ड पॉइंट है अच्छा, अब मैं थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा आपको बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के बारे में बताना चाहता हूँ. अच्छा, इशू ये होता है कि जो भी ग्राफिक इंटरफेस की जो भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो यूजुअली उनकी एक लिमिट होती है. दो कि एक ये बहुत पावरफुल एप्लीकेशंस है, और इसमें ऑलमोस्ट आप सब कुछ कर सकते हैं. मगर मगर आपको एक रिक्वायरमेंट होती है कि यार मुझे जो है ना मुझे जो है ना इसकी बाउंड्री से कुछ आगे काम करना है. तो आप उस चीज़ को अवेल करने के लिए आप जो है वो ओपन इन बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर यूज़ कर सकते हैं. अब बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर का फ़ायदा ये है कि ये आपको पूरा एक टूल प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू आप जिसके थ्रू आप जो है टॉपिक बना सकते हैं, और आप जो है अपने डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा. इसका आपका जो एक जो पूरा कैनवस होता है वो फैला देता है. डिफरेंट आप अपने जो है वो डिफरेंट चीज़ों के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं. तो अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैंने एक एग्जांपल बनाई है, जिसका ऑप्शन है कि जब आप मिसाल के तौर पे मुझे ये मालूम करना है कि जो मेरा बॉट है, सॉरी, मिसाल मुझे ये मालूम करना है कि आज के मील ऑप्शन क्या है मेरे डे इस डे केयर के अंदर. ठीक है, तो मैं ये सब पूछ सकता हूँ कि व्हाट आर द मील ऑप्शन. Okay, just give me a second. Meal option, and then meals, and yep. So अगर मैं इसको so मुझसे पूछेगा कि मैं ये सिंपल से मैंने अपनी लॉजिक लगाई हुई है, इसकी ज़रूरी नहीं है कि आप उसको इन्फॉर्मेशन, इट्स ऑल अप टू यू. तो मैंने अगर सिडनी लिखा और उसको मैंने एंटर किया, तो ये मुझे बता देगा कि ये ऑप्शन है. अच्छा, ये जो चीज़ आ रही है, ये जो एडेप्टिव कार्ड्स आ रहे हैं, तो ये मैं अपने बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के थ्रू बना रहा हूँ. तो इसके अंदर पूरा आपके पास मैं रिस्पॉन्स जेसन में लिख के भेजता हूँ, और वो रिस्पॉन्स आपके पास आ जाता है. ओके, सो मैं इसको बंद कर देता हूँ. हाँ, ऑलराइट. ओके, सो इसी तरह इसी तरह जो है मैं फॉर्म
मिसाल के तौर पे मुझे कोई फॉर्म फिल करवाना है यूज़र से, ठीक है, तो मैं यूज़र को यूज़र कहता है कि यार मुझे कुछ मिसाल के तौर पे यूज़र कहता है कि यार मुझे ट्राई करना है, यूज़र कहता है कि मुझे इन मील्स को ट्राई करना है, तो आप मील्स को ट्राई करवा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि यार स्टार्ट ट्रायल, और कह सकते हैं would say can I let's see ये ट्रायल है। तो अच्छा, अब ये कि ये जो चीज़ है ये आपके पास एआई के बगैर नहीं आती, जिससे आपको ये मुख्तलिफ आपको टॉपिक नज़र आ रहे हैं। तो यूजुअली जब आप एआई ओपन करते हैं तो फिर आपको पूछता है कि आपके पास कौन से टॉपिक है। तो आप ये इसको स्टार्ट ट्रायल में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक फॉर्म दिखाएगा। अच्छा, ये जो फॉर्म है, अगेन ये भी मैंने बताया कि ये फॉर्म मैंने अपने बॉट फ्रेमवर्क कंपोजर के थ्रू बनाया। तो मैं अब बस मेरे पास 1 मिनट बाकी है, तो मैं आपको जल्दी से लिखता हूँ और 4 वीक्स के लिए सबमिट करता हूँ। तो ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है, थैंक्स फॉर स्टार्टिंग अ 4 वीक ट्रायल विद अस। सो अब ये है कि जैसे कि अगर आपने देख लिया कि इसमें नॉट इवन कि ओनली टेक्स्ट से रिस्पॉन्स आ रहा है, ग्राफिकल भी फॉर्म आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है, और आप इसको एज अ उसमें भी यूज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ इन काइंड ऑफ फॉर्म के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, जो आप डेटा का इनपुट भी ले सकते हैं यूजर से। और मैं लास्टली बस आपको दिखाऊंगा कि मैं इसको टीम्स में कैसे मुझे नजर आ रहा है, तो टीम्स में भी देख लेते हैं इसको। अब मैं थोड़ा सा पूछते हैं इसको। ये सो लाइकवाइज मैं सेम सवाल पूछूंगा जो मैंने पूछे, और मैं ये पूछता हूँ कि my child doing, मुझसे नाम पूछेगा तो मैं बता दूंगा, अहमद है नाम उसका, बता देगा जैसे पहले भी बताई। और मेन ऑप्शंस ये मील्स सिडनी, तो सिंपल सेम आपके रिप्लाई जो है वो आपको बता दिया। जैसे ये चीज़ आई, ये चीज़ मेरी बूट फ्रेमवर्क कंपोजर के थ्रू आ रही है। और फिर इसके बाद मैं इससे थर्ड बताता हूँ कि स्टार्ट ट्रायल में कर लूँगा, और ये मुझसे पूछ लेगा ताकि, और मैं इसको 4 दे देता हूँ, सबमिट। So just like without writing any code, without knowing the C# or any other graphic or any coding language, ये सब पॉसिबल है, इससे ज़्यादा पॉसिबल है। सो आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको यूज़ करें और देखें किसका काम कर सकता है। अभी मैंने सारे ऑप्शंस को टच बेस भी नहीं किया, मगर ये कि काफ़ी इनरिच है पावर वर्चुअल एजेंट, और आई वुड रिकमेंड कि एटलीस्ट आप इसको यूज़ करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, पिच करें, देखिए रिस्पांस क्या है यूज़र्स का। मैंने जितने भी कस्टमर से बात की है, दे रियली लविंग इट, और बहुत से लोगों ने अपने पास्ट टीम्स में इसको इम्प्लीमेंट भी किया हुआ है, तो विच इज़ फैंटास्टिक।
So, all right. And thank you. Thank you, Shakir, for an interesting session. एक Thank you, Mr. Job. Yep. तो एक स्मॉल सा सवाल था लोग के, यानी अगर आप जाने से पहले आंसर करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ बिजनेस डेवलपर एंड ट्रेडिशनल डेवलपर, एक क्वेश्चन आया मुस्तफा हुसैन की तरफ से। तो बिजनेस डेवलपर और ट्रेडिशनल डेवलपर है कि जो हमारे पास पुराने जो डेवलपर हैं, जो मेरे जैसे डेवलपर हैं वो ट्रेडिशनल डेवलपर हैं, जो पुराने हैं सी सिटीजन शार्प से वाले आ जी, रहे हैं। हाँ सिटीजन बिल्कुल है बिल्कुल। जो बोलेंगे यार मैं सब कुछ सी शार्प पे लिखूंगा और कुछ और नहीं करूंगा। मगर जो बिजनेस डेवलपर है वो बोलेंगे अच्छा यार मुझे थोड़ा बहुत लॉजिक का पता है, मैंने एक्सेल पे थोड़े फॉर्मूलेस लिखे हुए हैं, तो मैं आपको ही कर। और मैंने बहुत मुस्तफ़ा ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप ये देखो, मैंने क्लाइंट के साथ काम किया, वहाँ पे एक बंदी थी, वो लॉयर थी और उसने इतने अच्छे वर्क फ्लो बनाए हुए थे शेयर पॉइंट डिजाइनर्स पे, कि हम लोग तो हैरान रह गए कि उसने इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाए हुए हैं। और अगर वो लेडी ये टूल को यूज करे तो वो बहुत बेहतरीन सोल्यूशन बना सकती है विदाउट रिक्वायरिंग अवर आईटी, और हमसे हमसे यानी कि उसकी हेल्प लिए बगैर वो बहुत अच्छे सोल्यूशन बना सकती है। और अब मैंने देखा, अगर आप लोगों को देखें तो वो खुद ही बना रहे हैं और वो अच्छे खासे। आपको डेवलपमेंट की क्या जरूरत है जब आपके पास एक इतना अच्छा टूल है। एग्जैक्टली लो कोड नो कोड पे जब तक एक पॉसिबिलिटी। So thank you again, Shakir, for your time and यार सो मच, थैंक मतलब यू, थैंक यू ऑल। और अगर कोई भी मैंने डेविएट हो गया या फिर मैंने कुछ गलत कह दिया है, सो सॉरी फॉर इट। एंड थैंक यू मुस्तजा, थैंक यू ऑल यू गाइस हु आर मैनेजिंग दिस इवेंट। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय। thank you, Shakir. Bye. तो हमारे अगले स्पीकर भी अवेलेबल हैं एंड ही इज रेडी, हावर खान, एंड I'm adding him to the screen. How can you hear us? Yeah, I can hear you. Can you hear me? Yeah, बिल्कुल। All right. So please, the floor is all yours. अगर आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं और Sure. start off. Okay. Let me know. Please let me know once you're able to see my screen. Can you see my screen now? Oh, hello. Am I audible? I'm adding your Okay. So. आज मैंने ऐड कर Mhm. Sorry. You're saying something? Yes, Mr. Rabi, you're saying something? Okay, shall I start or like you want me to wait for some time? बिल्कुल बिल्कुल। All right, thank you. Awesome. Thank you. Good morning, everyone. Good evening. Good afternoon. Wherever you. बिल्कुल floor is all yours. I'm sorry. Hello. Right. So, okay. Right. Hello, everyone. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are located. So, on behalf of Pakistan User Group, I would like to welcome you to this session, where we're all gathered to learn and share under the umbrella of this exciting community to make the most of our experiences. So, the topic that I'll be covering today is Microsoft Dataverse batch processing via bulk API, and the agenda is to give you an introduction about what is data migration. We'll talk about what are the real world challenges that we face. What is Microsoft Dataverse batch processing?
and then I'll also discuss one real-time scenario that I believe it could be one possible application of this feature. We'll also have a look at some of the advantages and limitations which we should keep in mind before proposing this as one possible best fit solution. I've also prepared a demo to show you the preliminary steps, how to create a, a basic utility, what are the fundamental design constraints, and how to consume and perform bulk operations. And at the end, yes, we'll have a question and answer sessions. Talking about myself, so yeah, this is Khabar Khan. I am working as a solution architect, Microsoft Power Platform Dynamics 365 at Guru Group. I am located in Karachi, Pakistan. I have overall 15 years of hands-on experience, 10 years hands-on experience on Microsoft Power Platform, Microsoft Dynamics 365 customer engagement, and Dynamics CRM. I worked in multiple industries, financial services, healthcare, to name a few. I'm also certified on Microsoft Power Platform, Dynamics 365 customer engagement, Dynamics CRM, and .NET. So yeah, during my free time, I like music and sports. So right, so without further ado, let's get started. Right, so the brief introduction about data migration. Well, I know that we are aware what data migration is, but then yes, just to set the context, I have added this slide. So the data migration is the process of selecting, preparing, extracting, and transferring data from one system to another. Not only that, we also do the analysis like, what is the source system, what is the destination system, if it's if talking about the source system, whether it's a database, and if it's a database, is it Oracle, SQL Server, Sybase, if it's talking about the destination, whether it's a Dataverse, Microsoft Dataverse, or is it Azure SQL database, or it could be on-premise. So yeah, and the list goes on. So sitting between in these two systems is the mechanism which we develop using some of the renowned utilities out there in the market, which could be SSIS, SQL Server integration services. It could be either Microsoft Azure Data Factory, Scribe. So yeah, not only that, data validation for completeness. It's something which is more inclined towards technical, from more inclined towards the technical audience. So the data validation for completeness means it's all the required fields must be there, it must be tagged in properly, the field level validations, the I should say the quality of the data to an extent. So we can think of in this way. And then decommissioning of legacy system, meaning I would like to get rid of the older system which is currently in place, and I would like to replace it altogether with a new system, which in this case could be Microsoft Dataverse, is part of the data migration process. Typically, well, data migration in most of the cases is performed or developed in an automated way as much as we can. The objective is to free up human resources from the tedious task, like, I have to place a file over there, I have to extract the data, I will email you, this is the source shared location, it's not accessible, things like that. So from the high level, that's what data migration is, and that's why we do data migration to an extent. Moving on to the next slide. Right, so here are some of the stingy questions that we come across day in, day out while involved, as part of the data migration activity. What if one of the question is, well, I do have the liberty if I have the required licenses, meaning if the client is willing, has purchased an SSIS or SQL Server Integration Services license, or Azure SQL data, Azure Data Factory, or Microsoft Azure Data Factory related licenses. So in that case, I do have the liberty where I can go and use these renowned tools to facilitate myself and to come up with a solution by consuming least amount of time, which will be more efficient also, because they are well renowned, and they have a purpose to fulfill.
Now, but there are cases where I, as a client, I cannot, or I'm not willing to purchase those licenses because I don't want to incur any additional costs. So that's a very interesting scenario where we don't have the required tools courtesy of licenses, but at the same time we have to go and satisfy the business requirements. Now, how we can go and fulfill, or what best we can do to achieve or to hit the milestone, to hit the milestone. There is another scenario in something similar to this which I faced during my professional career. Is one of my client, he asked me to upload a list of prospects which he provided me in the form of an Excel file, and the idea is to, once the data has been uploaded to Dataverse, then it will be propagated or transferred all the way to marketing tool so that they can run email campaigns on as per the requirement. Similarly, one of the asks that I came across was to perform data cleansing. By data cleansing, I mean to say the data cleanup or tagging the data in a way so that it can be segmented on logical grounds, so that the marketing team again they can go and run targeted email campaigns. What if the client has not provided us direct access to their source system? In most of the cases we do have, but then there are scenarios like if we talk about financial services, over there, yes, most of the time, in fact, it's almost everywhere where we don't have the access to the source system. So in that case, the ultimate deliverable which we receive in the form of source is the Excel file in itself, which we already discussed, at the top. So, and last but not the least, the one of the biggest challenges to satisfy the client in terms of whatever we are providing will definitely satisfy the client in terms of the performance. So when performance is a top priority, we also, we have to be very careful, and we should come up with a neat and clean solution. Moving on to the next slide. Right. So this is where, per my experience, Microsoft Dataverse batch processing via bulk API comes into play. So the question is, what is Microsoft Dataverse batch processing? So as part of Dataverse, Microsoft has introduced, there's something called execute multiple requests as a message to support higher throughput bulk message, where internet latency can be the largest limiting factor. So in this modern era, we know that all the system they're mostly cloud based. So if the internet latency is one of the concerns, then yes, we can always go and opt in for batch processing. Similarly, one of the area that which batch processing covers is the transactional manner. Well, if we go with the orthodox approach, even if anyone of us who has the experience or got a chance to work on dynamic CRM on premises back for 5-6 years back, then at that time, yeah, whenever we are migrating the data, we write the code in a way to push every record one at a time. So if we are talking about 500 records, it's 500 times we are consuming the API of Dataverse or Dynamics CRM at that time. But now, since we have execute multiple requests at our disposal, all we have to do is to prepare and club all our requests in a single execute multiple requests that will allow us to transfer the data in a single go as a transactional. So it's either all or it's none. And also, one of the area which this execute multiple request covers or offers is the resubmission. What does that mean? So when, say for example, if there is a certain batch size which we cannot exceed by default, so if for any reason we exceed, or our code or our utility exceeds that batch size, so we always have a chance to go and revisit and fix that and resubmit our request so it can be processed as per the requirement. Doing also above 3 points definitely involves a smaller number of API calls, meaning which we have already discussed that, yeah, if we go with the orthodox approach, then it's one record, one call. But ever since this execute multiple requests comes into play,
or it's been originated. So yeah, it definitely involves smaller number of API calls. Well, last but not the least, at the end we'll have a deliverable which will be more efficient in terms of performance, the maintenance, and the overall design. All right. At this point, I would like to share one of the real-time scenario which I faced, which I encountered in my professional experience. So I was working for one of the client who had one legacy system developed on top of developed on top of SharePoint, and the idea, it was the objective of the application was to maintain project management, change control related documents. So yeah, so they would like to get rid of that system and would like to replace that all the way all together with the Microsoft Dataverse, with Canvas app developed on top of Microsoft Dataverse. So there was a definite requirement of transporting their existing legacy record all the way from source SharePoint environment to destination Microsoft Dataverse environment, and the record base was around 75,000 K, and the time frame which they gave us was around 2.5 weeks. So it was a challenging kind of a situation. So the most interesting part was, we asked that, okay, what if we go and develop a solution using SQL Server integration services? If that's possible, it could be Azure SQL, Azure Data Factory. But then they said that we don't have enough license. We are not willing to. We cannot provide you those licenses. So it should be then it was on us to come up with a solution. Right. So after spending some time, we found an approach, and this is where we opted for Microsoft Dataverse batch processing feature. So what we did was, on one side there was a SharePoint environment, and we exported the record by creating a legacy or the conventional Microsoft.NET Windows based application. And yeah, so the first thing that what it did was, it exported the record from SharePoint in the form of an XML. So by consuming the SharePoint client object model, so whoever got a chance to work with SharePoint client object model, we are aware that whenever we request for a record, we always receive an XML file. So that the other challenge was that we also agreed with the client that, okay, once the data has been exported, we'll hand it over to them so that they can review it and give us the sign off. So once so that once we have the sign off, we'll then import that data to the destination Microsoft Dataverse environment. Right. So in order to do that, we again developed a mechanism to convert that XML file or XML data, raw XML data, into a CSV, and then we stored it to a secure location, which was then in this case it'll be hard drive. So once we have exported the data, all the data, we then gave it to the business for their review and sign off. Once we received the sign off, we then started working on the import leg, which is on the right hand side. So first step was it's bottom up in this case. So first thing which we did was, the mechanism started to read the data, those exported CSV file first. Then it created the batches, and then it started to import those CSV batches into the destination Microsoft Dataverse environment. So it kind of a complex kind of a thingy. It was all manual. It was all code based. There was no tool. So yeah, but somehow we were able to achieve the goal in quite in comprehensively by consuming reasonable amount of time. So yeah. Okay, let's have a look at some of the advantages and limitations. Right, so advantages, yeah. So we'll have a reduced network traffic and latency if we are using batch processing feature. The code will be more efficient,
And definitely it will be the ultimate the one of the key advantage in my opinion is the reduced number of API calls, which every now and here and there all the published article and all the published articles by Microsoft is the pressing area where which we should always keep in our mind. In terms of limitations, yeah, so there is no recursions are allowed, which means you cannot invoke execute multiple requests in within another execute multiple requests. Second thing is the maximum batch size. A typical batch size for a Dataverse is 1000, but then that is something we can always go and increase. So that is something also we can always go and do some adjustments. And as we discussed earlier, it also allows us to resubmit our this feature to also allows us to resubmit our input collection in case if we exceed that request. So there is no point. So there are very few chances or zero occurrences we can think of. If there is in case of failure, we don't have to restart the process. We can always continue where we face this issue. For more information, we can always go and refer to service protection API limits. So if you search for this bold part, service protection API limits, you will see an article published by Microsoft, and it'll give you more insight that what are other possible limitations or considerations that we should keep in our mind. With that being said, it's show time. It's a demo. Okay, I'm going to share. Okay, so the first thing first that I'm going to share with you is the utility which we created specifically for our client. So that's the conventional C# based Windows application. As you can see, on one hand we have SharePoint, on the other hand we have Microsoft Dataverse. At the top, we are asking for the credentials and other details for the SharePoint, and on the bottom we have the panel. So if you look at it down here, we have categorized these panels into two parts. First one is the data. This is all form related data. So the first thing, and then the next aspect is the attachment. So at that time, the requirement was to export the data, but then later on we identified that okay, it's not just the data, it's the attachment also. So creating the relationship, exporting those attachments, creating a relationship between the attachment and the record itself, and then to export also is something which we took care of. So that's how the overall form look like. Talking about the Dataverse part of this utility, again, it's more or less the same. At the top, we are asking for Dataverse related configuration, and at the bottom, again, it's the data and the related attachments. If I show you the code briefly, if I go back and say view, oops, view code. Yep. So that's, well, it's a long piece of code, long list of code. There's a method and everything. Though, if I just open one piece of code, which is this one, say for example, if I go to the definition of the source code, so as we can see, it's all manual. You don't. It's all code based by manual, I meant to say. So the first thing first, yeah, we're reading the CSV file, and then after reading the CSV file, it's all about creating the batches. Yeah, establish the connection. Then we created the batch, and then we are looping through the batch collection, and then yeah, we started to push the record down to the destination Dataverse environment. So it's a bit tedious, but then yes, that's how it is. All right. Now to give you a brief walkthrough how it works, I've prepared another one simple application just to give an idea how we can go and set up a basic utility. So the first thing first, I've created a C# based Windows application. I've just set up the basic credential related part over here, and I've just surfaced another the area from where we can go and upload the file and just perform the import operation in a nutshell. Right. After creating this application, the second step which I did was I added two NuGet packages. So I simply right clicked on it and I clicked on manage NuGet packages, and then under browse tab, simply I search for two packages. First one is, if I say XRM tooling,
Here we go. This is the one which I've added. I'll tell you the reason why later. And then the second piece which I added was CSV helper, so that we can speed up the processing of process of manipulating or reading the source CSV file in the form of an object, and then we can later on we can push it uh, to the destination environment. So these are the two references which I've added or packages from NuGet. Once we have everything in place, the next step is that I simply click on the import button. Again, over here we are reading the CSV file or from this location, what all we have selected over here. Once we have read the file, we have started to push the record into this CSV object or the model, which looks something similar to this. If I open this for just for a quick reference, so that's one of the C# simple C# class which we are using, which we'll be using later on. So after reading all the records and pushing it to this list, what we have done is we over here we are just preparing the connection string, and then we are setting the max connection timeout 1 hour, say for example. We can do that. And then the next piece is that we are creating a CRM service client. Now, as per the latest practices, or I think it's about almost close to a 6 to 10 months, where Microsoft announced that they have deprecated the direct creation of organization service in such scenarios, the one which we are looking at. So what's the other alternate? The other alternate, what Microsoft says, that we should go and start using XRM tooling connector, this piece, as a reference, and then start instantiating the reference of CRM service client. Once we have this, it will allow us to go and pick the organization service proxy, which is what we are doing over in here. So that is one thing. So this is one piece. And the other thing is, the other enhancement that we can think of is, right now since it's a demo, so that's why I'm just doing it in this way. But then also we can enhance it in a way so that we can, so the moment user clicks on connect, say for example, you can, and if you would like to have an experience something similar to what we have in case of plugin registration tool, or at the time when we are creating or setting up a connection in XRM toolbox, that is something also which is possible. But that definitely requires more code and everything. But just to keep it simple, I'm doing it in this way. You can also go and do it the way I just mentioned. So once we have the CRM service client instantiated, the next thing we are checking, is it null or is it ready. If it is not ready, or for some reason you will receive a false over in here. And then once you have the organization service proxy, boom, we are good. The next piece which we are doing is we are creating the upload batches. So I've just, to facilitate myself, I've created a simple class which is just for creating the batches, and this is what the batch number is. I'm creating a batches of 5 records per each batch. So for example, if you have around 50 records, say for example, you can think of as if we are talking about having 10 batches. So this class, it will give me 10 batches of record. So second last piece is that we have started to iterate through these batch collection. We are picking up a single batch, and then we are calling this method. If I go to the definition, yeah. So the first thing was we are initiating a bulk create request, and then we are assigning the values of some execute multiple settings related values. So continue on error. If we are saying that if we are setting it to false, which means we are telling the platform that if there is any kind of an error we encounter, do not stop and continue processing the error. If we set it to false, it will stop processing. And the other piece is return responses, which means if there is any kind of a failure, please return me those error records. Well, one of the application in my mind that comes in such scenarios, that if, say for example, we would like to create a log file which should contain all the error records, so that is something which we can think of as one possible application to have those error records. So we can always go and create a log file kind of a thing which we can easily share or email it to the client for their corrective actions. So right. So
After creating this bulk request, second thing which we are the next thing which that we are doing is that we are iterating through the batch which we pass from here, and that batch has, yeah, so that batch has all the source records, so 5 in this case, say for example. So we are looping through this batch, we are creating an object of an account entity account for an account entity. In this case, we are now then creating a single create request account, and then we are adding it to this collection, execute multiple requests. So if there are 5 requests, we are creating it one individual one at a time, and then we are adding it to this collection. And once we have all everything in place, the next thing which we are doing is that we are executing this collection of requests via organization service proxy. So the batch, first thing first, read all the records, create batches, pass it to this form method. It will then start iterating through the source batch, creates a request, add it to the collection, and then run or create those records in a single go in the form of a transaction based on these settings. Right. So if I show you the source file, which hold on. So if let me just bring that source file also. Right. So this is the source file which I've created for the sake of demonstration. So this CSV file has 25 records. So account number and name is something which which I took into consideration. Just the 2 fields. So if I close it, and then if I run this utility debug, start debug. Let's run it in a debug mode just to show you. Right, so it is asking for an endpoint address, how from where we can get it. So if I go to the tenant, so this is the demo environment or the demo tenant which I've created, set up. So what we have to do is that we have to go to the advanced settings, and then from advanced settings you go to settings, customizations. Take some time. Yeah, let's wait for some time. Just close it and open it again. So advanced settings. Okay. Then from here you go to customizations. From customizations, there's an option called developer resources. Go to developer resources, copy this endpoint. Copy this and paste it in here. I am providing my username and then the password. And let's click on this browse button. It's asking me to choose the file. Select this demo file, which just now I showed you, and hit import button. Right. So after reading the file, we are over here. We are reading the source file, and we are pushing it into this list. So as we can see, the count is increasing, increasing, and increasing. So if I go all the way over here, we have now 25 records in our hand, and that's how it looks like. So these are all just a collection of plain and simple collection of 25 records. Once we have these 25 records, the next step is to set up the connection. So this is the CRM service client. Let's wait for a while. Okay, so if I go to the next step, CRM service client, okay, we do have an instance, and if I click on this, so it's false. It's ready is false. Okay, so it's not running, as you can see. So that's one of the preliminary check that you should always keep in mind. Now, if I go in here, okay,
just run it again. I'm just running it again to see if that works. I provided a password and this one. That's okay. Let me just quickly come to this point. Run to cursor. With F10. It should actually. Okay, here you go. So CI service client is ready, it's ready. The next step is to get the reference of organization service from the CRM service client. So here you go, you have the organization service client reference, the rest is all same. So the next step is that after reading the CSV file, pushing it into, and after creating a list, we are setting up a connection of Dataverse. We are now creating a batches of 5. So if everything goes well, this 25 list of 25 records should be split it into a batches of 5 batches. So if I go over here, as we can see, now we have 5 batches. If I expand it further, so excuse me. So this is batch number 1, and if I go further one level down, you see it contains those 5 records. If I go to batch number 2, again 5 records. So now we have 5 batches, and per each batch we have 5 records. So the next step is to loop through this batches collection, get the first batch, pass to this method. If I go to this method, here we are creating an instance of bulk create request. Now the next step is to loop through the sample account that data batch, create an instance of type entity, start populating the values, create an instance of create request, that is that's a single create request, right? And then add it to this collection, which will further be which is the final ultimate thing which will be passed, which we will process later over here. Right, so after processing this batch, let's quickly run it. Okay, now the next thing is we are checking that is if this collection has the request count greater than 0, which is 5 in our case, then simply just go and run it. Now, if everything goes well, I can see on here, see, is faulted is false. So if our batch or execute multiple requests, if it's been processed successfully, you will receive this is faulted value as false. If it is true, in case if it is true, which means there is an error. And if there is an error, I can easily go and loop through and see what could loop through this responses collection to get the error records, right? So since we have processed the first batch, now we are processing the second one. Meanwhile, if I go to the tenant, which is this one, so 35 it is now. I should have cleaned it before. Let me just, okay. So if I minimize it again, with F5, again, if I go to the tenant, it's 40 now. 35, it's okay. And then if I say 30, okay, now what is the count? 40 it is. And then if I go over here, again, if I process this, done. So now if I go to the environment, if I click on refresh, so that's how it looks like. So 50 records we have now, although it's 25, but then yeah, I forgot to remove the previous record base. So yep, that's how your record looks like. And that's how that's how we can go and set up a preliminary, a very basic kind of a utility which we can easily go and enhance later on, if and when required. With that, I would like to that's pretty much it from my side in terms of demo and everything. And let me just rerun the PowerPoint again.
Yep. Uh, that's pretty much it from my side in terms of the demo, in terms of covering this session, and I'm opening the floor to answer your questions. Any questions? Anything else you would like to ask? Any questions? I think not, however, but thank you for your Mhm. time and session. It was really Okay. helpful to understand that. I don't see for now any sessions, sorry, any questions, Mm-hmm. but thanks for your time. All right, pleasure. Thank you so much, Mustarab, and thank you so much, Pakistan User Group, for providing me this opportunity so I can come and showcase and share some of my experiences. Thank you so much once again. Stay safe, stay blessed. Have a nice day ahead. Bye for now. You too. Take Yeah, care. yeah. Bye. Bye. Hey, Julie, you can join the URL that I shared over the private chat, and you can skip from here. Thank you. Hey, everyone. We have Julie available. I'm adding her to the. Hey, Julie, can you hear us? Yes, can you hear me? Yeah, I can hear you. Thank you. The stage is all yours. I'm going on mute. Thank you so much. Good morning, everyone. I have been checking social media this morning and see that the event has been going great. So thanks for everyone who is participating either as an organizer, presenter, participant. It takes a village to make these events, and this one seems to be going off pretty well. So let's jump right in. So as I said, my name is Julie Yap. I have been working in business solutions / dynamics for better than 15 years now, and I've been involved in several different aspects of this world that we live in. I'm an author, trainer, I do mentoring and consulting, and in my free time, I love to travel the world and take photographs. Obviously, we've not been doing a lot of travel these days, but still something I'm very interested in. So our agenda is quite simple. Let's talk about the Power Platform. Let's give you enough background information so that you have a bit of a foundation to explore more and find what interests you. So maybe you're coming here straight from another career path, out of school, you've been off work for a while, you're looking for a new career, or maybe you're already interested in things like Power BI and you want to learn more about the other parts of the platform. So let's go ahead and jump right in. So what is included in the Power Platform and what is a platform? So for me, a platform is a collection of tools, collection of assets, things that are available to me to be able to build full end-to-end solutions. And with the Power Platform, in addition to being able to build end-to-end solutions just using what's in the Power Platform, we have the ability to talk and communicate with other services and other products so that we're not limited by the Power Platform. So the Power Platform contains Power BI for business analytics, Power Apps for application development, Power Automate, which will allow you to do workflow automation, Power Virtual Agents, which is intelligent virtual agents. And then supporting that are additional items. One is Dataverse, which is a relational database, Data Connectors, which is what allows us to communicate with practically any other data source that there could possibly be, and AI Builder, which gives you the chance to get some more additional insights and predictive insights for the data that you're using.
So Power BI allows you to make sense of your data quickly and easily, and it's very visually appealing. It's quite basic to get started, but it can be very complex if that's what you need. So we've got the ability to have all of these combined data sources and combined visualizations in a single location. So because we have Power BI available, you're not spending as much time doing the preparing of the data and things of that nature. You're able to spend your time making sure that you're representing your data in a way that's visually appealing to the people who need to consume that data. So what is part of a Power BI dashboard? Let's go through a few of those things. Power BI is connecting to any data. And I say any data, and I'm pretty sure it's any data. I've not yet heard of anyone who's had a stumbling block unable to connect any data source to be consumed within Power BI. Power BI allows you to share your insights with just about anyone. So you can share them with a licensed user in your organization. You can share them in some capacity with unlicensed users in or out of your organization. And you can do things like send PDFs of reports and information like that to anyone in the world. Seamless integration with the rest of the Power Platform and other Microsoft products. Like just about everything on the Power Platform, we've got an extensibility model where you've got no limits. You can continue to build out your Power BI using whatever data you have available. We have the what you see is what you get design experience. As they were building this out, they were targeting the same audience who can be proficient in PowerPoint. And so if you can make a good PowerPoint presentation and you understand the data that you're using, then you are perfectly qualified to be using Power BI to build out dashboards to evaluate and share that data. The data visualizations are constantly evolving. So you can see here on my screen, I've got a few different types of data visualizations. There's hundreds more, and the team keeps releasing more and more of them. So if there's a visualization that you have in your mind's eye that's not available, there's a decent chance it's on the roadmap. And if it's not a roadmap, you can build your own to be integrated with Power BI. This is one of my favorite features of Power BI, and it's been in the product for a long time, is you can use natural language to ask Power BI questions about your data, and it will return those results for you. So you can type in a sentence that says, what were year-over-year sales for my stores in the Southwest region? And Power BI will return those results to you in the form of a report so that you can use that natural language and not have to worry about how do I build a query to get this information to me. And in addition to supporting Dataverse and other common databases, we can do that big data as well. It doesn't have to be small data. It doesn't have to be just big data. It can be a mixture of all of those. With Power Apps, you can build web apps, mobile apps with low code and no code development. And this allows business users who best understand the business needs to solve their own problems and to participate in the process. So even if there's a team of people who are out there building the apps, then they can still be consulted and understand the process. In addition to that business user level of building capabilities, we can continue past that into the pro developer world. So a lot of hype has been put around that no code, low code experience, but developers certainly have a home on Power Platform. It's not just for the no code, low code people like me. We have 3 different types of Power Apps, and we'll go into each of them now. The Canvas app is your pixel perfect application that you control 100% of the visual appearance, where you can determine exactly the layout,
in addition to the data and the functionality, but this is more targeted toward a user experience. And so this will work on Android, this will work on iOS, this will work in all common web browsers. It works on phones, tablets, full-size PCs, and so on. This also allows us to have access to the device. So I can build an application that uses the camera. I can build an application that captures signatures and so on. When it comes to sharing Canvas apps, it really is as easy as click, click, click. It's pushed out then to users nearly immediately. Again, Power Platform is all about integrating the best products together, and this allows you to have direct integration with Power Automate, with other aspects of the Power Platform like Power BI. We can build apps directly in Teams, and we can use this with Office and Dynamics and so on. The extensibility model exists here as well. So in addition to that no-code, low-code experience for building out apps, there are times where you're going to need to call in a developer to get some more of that advanced functionality, and Canvas apps certainly allow that and make that pretty straightforward to do. Again, that WYSIWYG design experience targeted at that business user. So if you understand what you're trying to build out, and you understand how to use basic Microsoft products, including things like PowerPoint, then you are qualified to be building Canvas apps. The data connectivity is the big draw for me. So I can build a Canvas app that can talk to anything from my own connector for 365.training to Zendesk to just about everything in between. We've got the built-in platform using Dataverse. So Dataverse is a relational database. We're going to talk about that here in a few minutes, but that gives you right off the bat an easy data point so that you can have your data and build your apps. And then we've got that logic that comes in here. So as part of that building of an app, you need data, you need screen/user experience, and you need logic. What is this app going to do? And that logic is everything from building out your screen navigation to go forward and backward in your process, to submitting data forms as your users go through and add a new record, to having automation be triggered so that once that record is saved, then these other automation things can happen behind the scenes, and then your user experience is complete. A model-driven app is actually where I got my start, and we've been calling it XRM for a long time, building out these model-driven apps based on the CRM experience from the Dynamics CRM days. And so it's an application where you have a visual representation through a model-driven app of your data. This is where your app is definitely more data-centric, but as you can see here on the screen, it's still a very easy to understand application with some common elements. So when you're building out model-driven apps, you're building your apps around entities/tables and forms, business processes, and so on. You've got that responsive client experience so that regardless of the means in which your users are consuming the application, it's responsive to them. So I'm going to automatically resize and reflow based on the space available. So if that's a phone, it will be pleasant to consume on a phone. If that's tablet, that's a browser, all of those will automatically resize and reflow so that it's optimized for the user experience. Seamless integration, again, with the automation option. So with Power Automate, we can do things like a business process flow that we see here on the screen. We can trigger approval notifications. We can perform heavier data transformations with Power Automate. Pro developers absolutely have a home here in model-driven applications, building out both the user experience and the
automation that happens from those users' actions. You can quickly design these forms. So it's a drag and drop visual designer. It is pretty straightforward. You've got several different types of items you can put on these forms, including the steps that you see here on the screen, collapsible sections, many different tabs, and so on. You can easily reuse across multiple applications. So if I have a large collection of related data and then I want to extract out smaller workloads, I can do that and just make a smaller application that's targeted to a certain department or a certain smaller collection of users. We've got the Dataverse is built in. So this is the relational database. This is what we used to call XRM, where it's anything relationship management. So Dataverse has the ability for us to bring in items from the common data model as well as our own custom tables and entities so that we can use that to build out our model-driven application. And you can have this one Dataverse to serve model-driven applications and Canvas applications, and it's the same data that users are interacting with. And then automation. We want to make it easy for the users, right? So we need to build out an intuitive user experience that's pleasant to work with, as well as make the things happen behind the scenes. So we want to have the users be comfortable with the application and to understand that the automation is going to be reliable and happen as they expect. And now we have a portal application. This is a public-facing website based on your Dataverse data. So it's completely customizable so that you can build out your own website. This that you're seeing right here is just your starter page. You can completely change this however you'd like to change it. So this gives you the ability to have a public-facing site available 24 hours a day, 7 days a week, and you can let people self-service and engage with that data in real time. So you can have publicly available information that anyone can see, your public-facing website, and you have the ability to include authentication options to hide some things behind a login to allow users to have some self-service capabilities. For example, to manage their account, put in a change of address, request a support ticket, or so on. The WYSIWYG design experience is back, and here it's even a little bit more helpful. I think that to be able to see that experience as you're building that public-facing website is really important because we are very concerned with the public image, right? So we want to make sure that we can see how it's feeling, how it's coming out as we're building it. Another thing with the portal applications is it supports automatically the ability to have a multilingual responsive web page that you can easily add more pages and components to. As I said, this starts with Dataverse. So all of the data that comes into the portal is from Dataverse. All of the details on the page come from records that are in Dataverse. You are using some of the assets that you've built in Dataverse so that it's quicker for you to do development. I can use the drag and drop form builder. I can use the views that I've built out all within this portal so that it's reuse of components. It makes a better use of your time. So we've got web roles and permissions available so that portal users only view what they're supposed to view. They can only interact with whatever we've given them permission to interact with. So it's completely secure, so I don't have to worry about someone else seeing my private information. Authentication options include a straight up local authentication where I can create that login information that's directly related to this portal, but I can also use additional authentication providers such as Azure B2C services that would help manage that so I don't have to.
and our extensibility model. There are tons of places for extensibility, including things like HTML and CSS. So that's in addition to some of the other automation items we talked about with model-driven apps and Canvas apps, we've got additional professional developer needs within the portals. Now, Power Automate. You may have heard this. This used to be Microsoft Flow, and then it was rebranded as Power Automate, but not just rebranded. There's now a lot more things that are in Power Automate. But Power Automate allows you to monitor your business processes and automate your workflows with all of your apps and services. So you can use all of those moving parts with the Power Platform, as well as those services that you can connect with, and use the best of Power Automate to do the automation that you need. The types of Power Automate flows start with the cloud flows. Here on the left-hand side, we've got automated flows that is based on actions that are happening, and then we've got instant flows and scheduled flows. Again, these are based on triggers, and they happen in the cloud. These are what we call the cloud flows, and they're all built in a similar fashion. Then we have business process flows, which we mostly think of with model-driven apps, though they can be independent of that model-driven app, which allows you to have a guided process for your users to follow. And then there are desktop flows, which is robotic process automation that we'll be discussing more here in just a minute. But when we think of flows, we're talking basically about those automated processes, whether they're based on a trigger or a schedule or something of that nature. So the details are any platform support. So this supports the ability to build these heck on your phone, or you can do that here in the browser. You can share the flows just like you share those apps. So it's click, 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 and it really is that simple. You don't have to be an owner of the flow to be a benefactor of the flow. So you can still get the use and the automation as your standard user existing in the Power Platform without having to worry about that. But you can have co-authoring experiences with the flows, seamlessly integrated with Microsoft Platform across the board. Again, extensibility model that we've been talking about. That WYSIWYG design experience where it's pretty straightforward, where you can see your different steps, you can visualize it as you go. Connect to those hundreds of services. Built-in integration with Dataverse, and again, that's the common data model as well as our own custom ones that we're making. And we can build flows with all kinds of logic and automation. It's everything from using AI Builder to monitoring and executing of actions and more. Desktop flows, robotic process automation, RPA. Most organizations are experiencing some kind of digital transformation, and every organization has their own pace. So in some cases, you may want to keep some of your older systems, and so that's okay, because digital transformation is ultimately allowing you as an organization to be as nimble and efficient as you need to be. Sometimes you have to keep those older systems. So with Power Automate's robotic process automation, the desktop flows, we can further empower non-technical users by offering automation for older applications which don't have those APIs. So with desktop flows, you can now apply the efficiencies of automation to some of your older systems. And now we have Power Virtual Agents, chatbots. And as an end user, I have a love-hate relationship with chatbots. I had an experience yesterday with a chatbot from my bank. It's a bank that I use for both personal and business, and I needed to change an address for my business, but the chat agent, the bot,
got stuck and wouldn't let me change it from my business. They only wanted me to change it from my personal because that was my primary account. So we need to build intelligent bots that can handle those things, or build that backup so that we can transfer to an agent whenever necessary. So like all things Power Platform, this is extremely available and accessible to business users. You don't have to have advanced knowledge of automation or of artificial intelligence. And so you can build out that bot experience connected to your websites and other data sources so that your end users can be the benefactors of those Power Virtual Agents. So the virtual agent can be available 24/7 for self-help. You can quickly build out that bot, so it's a lot less expensive than some other options. You can meet your audience anywhere, so you can publish these bots several different places. You can publish it on the web, you can publish it to Facebook, and so on. The design interface is pretty darn intuitive. It's pretty straightforward, and when we teach Power Virtual Agent in a class, we've got people building bots in half an hour. So yes, it's a very simple bot, but if you need that more detailed, more depth of knowledge, that's certainly available as well. We've got natural language conversations that happen here. So remember, I talked about that with Power BI. We can take into account the way that people are going to ask questions of our bots to present to them the best possible answer. We can then take action based on the experience that happens in the bot. We can have Power Automate flows be triggered on things that are happening within that bot conversation. We're going to get behind the scenes analytics so that as an administrator, I can best understand where my bots are doing well, where my bots may not be performing very well. Do I have a certain pattern of questions that have to be transferred to a human operator? What kind of things can I do to analyze and make that experience better? And again, we've got insights available to us within things like Dynamics customer service. So a lot of things happening here. So we've got the Power Apps, we have Power BI, we have Power Virtual Agent, and we have Power Automate. Each of these things are strong on their own, but they work better together. We're going to dig now into our Dataverse. We've talked about that a lot, but let's jump into learning a little bit more about Dataverse. So Dataverse is a relational database. So I would assume that everyone has a basic understanding of what is a database. It is pieces of information that we need to capture. So you have a table, say it's a contact. You need information about that contact, first name, last name, email address, perhaps phone numbers, perhaps gender, perhaps birth date, and so on. So that contact database would hold information in fields about that individual, single pieces of information in those fields. But that contact might be related to something. So that contact might be part of an account. That contact might be part of a family. And with that, we have a relational database. Because if I am part of a family, then maybe there's additional members of the family. Maybe there's certain automations that need to be triggered at the family level based on behavior of the contact and so on. So we have a relational database. Dataverse gives us that relational database that we can use, and it's very attainable. And so we've got stored data in standard and custom entities. And you'll hear myself and others go interchangeable with entities and tables. And so tables are the current vocabulary, but the common data model, as well as historically within the Power Platform, we've called them entities.
So Dataverse allows you to securely store and manage that data that you're using in your apps. You can build the apps against that data model. You can build your workflows against that data that's stored in Dataverse. You've got business rules. You have form validation, data validation, and role-based security that are all available to you straight out of the box with Microsoft Dataverse. When you want to connect to the additional apps and services, you can do so. We've got built-in connectors that bring you to hundreds of different systems. There are standard ones that you'll see that come out from Microsoft, so that you've got built-in connection to Office products, built-in connections to competing products even. And then you've got the ability to build your own connectors. You can, as an individual organization, build your connector and have it presented by Microsoft as a premium connector. There is a process to go through to vet and confirm that you've got a good working connector as well as good support documentation. And you can build your own as needed. So you can build your own to just use internally. You don't have to publish that for others to use. And then the final piece of the Power Platform that we have not yet discussed is AI Builder. So AI Builder allows you to quickly and easily take advantage of artificial intelligence. So I can build out an object detection model. So for example, I can tag and analyze photos of my pets. I have 3 dogs. I can feed it and let it analyze hundreds of pictures, because who doesn't have all these pictures of their dogs? And then when I use that another photo within my object detection model, it can identify my dogs versus other dogs. It can identify my dog Xena against my dog Charlie, and so on. And I don't need to be able to write code to use that artificial intelligence. Okay, Power Platform. Are you guys overwhelmed yet? We still have a little bit more to go. We're going to talk a little bit more now about the Power Apps more specifically. So we talked about the apps in general. So Canvas apps start with that user experience, that pixel perfect control, and we can mash up data however we need to. So we can make an app that uses data from several different sources. The model-driven app leverages that data model. So we start with data in mind and then build the app using the model-driven user experience. And then portals are those public-facing web pages that allow internal and external folks to benefit from our Dataverse. So we can have that public-facing website, we can have items secured behind a login, and more. So where do I start? How do I know if I need a Canvas app? How do I know if I need a portal? Let's give you a little bit there and see if we can help you decide what it is that you might want to be building. So if we're going to start with Canvas, it uses Dataverse, but it's not data-driven. It's user experience-driven. So we've got the hundreds of connectors, and you want these to be task-focused applications. So I have seen Canvas apps that have many, many, many screens, and that's just fine. And that is absolutely available to us as app makers, but it's not required. You can make simple task-focused 1 or 2 screen apps with Canvas apps. You're going to have a visually appealing presentation of that information. You're going to have custom user interface. You've got to build out all of those pieces. And you've got the option for building out in SharePoint or embedding in Teams. And this automatically works with the common devices. So it's automatically going to work on your Android or your iOS device.
When you are thinking about model-driven apps, it is absolutely driven by your data model, hence the name, model-driven application. So if you know that you've got a clearly defined data model and you want to quickly get an app, you can build this out. A lot of people say this is back office type application. I disagree. I think that you can build and design these apps in such a way that anyone in your organization can consume a model-driven application. There are certain fundamental experiences we expect from Microsoft apps, and we get that here. And so I don't think that there's a high barrier to entry for users that are using model-driven applications. You've got personalization options for your users. They can control a little bit about how they're seeing things on the screen. They can move things around a little bit to see what's important to them. We've got tooling available, such as integration with Excel Online. We can import, export data records, and so on. We have the starter apps with the Dynamics products, where we can then customize those applications to meet our needs. We have relationship navigation, where we can see those related items, those records. We can go back and forth between them. And back to my example of a contact within a family, I can visualize that relationship and move around within that data to accomplish what I need to accomplish. With the security that we've got in place with model-driven applications, the users are only going to see the data and experience that they're supposed to see with that assigned security role. And model-driven applications give us end-to-end business applications. They can handle the entire business user scenario. Now, portals, we are also Dataverse driven, internal or external user focused. This is a web application. We're going to use some of our tools from our model-driven apps as a framework so that we can reuse those assets within our portal, and we can customize it. So if you're looking here at the screen, this portal page looks nothing like the last example that I showed you. So we've got the standard navigation, we've got a great hero image, we have additional options, and you'll see that this is here in French. So this is being supported in more than one language. So when you're thinking about solving your business problems, your solution architecture can use any or all of these Power Platform options. So what you should look for is common patterns. So you only want to have to administer the data that you have to administer. You don't want to have a bunch of additional data sources. So if you can identify patterns within your data model, then perhaps you're going to build that single Dataverse and use that single collection of data to then extract out those workloads, make Canvas apps for those who best use Canvas apps with their user experience, make model apps for those that can be consuming it within the model apps. Those Canvas apps can solve some maybe smaller problems. So if you've got a large collection of users that are using a large model-driven application and a subset of users that really only use 3 or 4 pages of information, maybe you should make them a custom Canvas app that talks to that data so that they have a more pleasant experience, so they're not getting lost in the extra stuff. And you can have a happy combination. You can embed Canvas apps into other places. You can embed a Canvas app into a Power BI dashboard. You can embed a Canvas app into a model-driven app. And we've got some exciting new things coming up that we'll talk about here in just a minute. So the road ahead. And why do you care about the road ahead? Well, you care about the road ahead because it should help you in your planning. Because if there's an item on the roadmap that you could use and it's going to be coming out in the next 3, 4, 5 months, you and your team should not be spending time building that yourself.
It also might help you define your own vision with your apps. If you recognize that a new feature is coming up and then it sparks an idea and suddenly your apps are so much better for your users. So let's talk about that road ahead. So we talk about low code, no code, and most of the formulas that we're using in things like Canvas apps and in Power Automate flows, then we've got this Excel-like language that we are using. And it can get fairly complicated. I have seen plenty of formulas that are a couple hundred lines, which to me feels not low code. There's a lot of moving parts, but we've got that PowerFX language that we're calling it that will then be able to be implemented in more places. And we've got some cool items that are coming over the next several months, such as natural language options like we're seeing in other places. And then that authoring experience. It's great that we can make a great experience for our users. Without users, we don't have jobs. So, but when it comes to the authoring experience, how can we make it a better experience for making the applications? So today, we have a Canvas app designer, we have a Canvas app designer for Teams, and we have that model-driven app designer. We are evolving. So we have a new modern app designer for the model-driven apps that is currently in preview. It's quite slick. It gives you great preview of what's happening while you're building it so that you can see what that user experience is going to be. We are reducing the Canvas designer to a single experience so that that Canvas designer will be effectively the same regardless of whether you're building an independent Canvas app or you're building it within Teams. We have the new command bar designer that's working with PowerFX that is in preview as of this week. So the command bar is in the model-driven applications, the bar across the top of the form as well as the app, so that you can, without code, be able to customize that. Previously, you had to work directly with the XML. And also in public preview as of this week is one of my favorite new features, which is the Canvas pages in a model-driven application. So instead of simply embedding a Canvas app, I can, right here within this model-driven app authoring experience, build out that custom Canvas page to be included on my model-driven form for my users. I encourage you all to reach out to me with any questions you may have. I would love to answer them on LinkedIn, follow me up on Twitter and ask me those questions, and I would love to be able to help you work on your Power Platform journey. Thanks to everyone for being here today. Thanks to all of our sponsors. I know firsthand how challenging it can be to get one of these events together, and sponsors and organizers really do play a huge role in making these events happen. Thanks, Julie, for the kind words. Yeah, we have some questions available over our chat, and I'll be asking like one of the questions by Mustafa Hussain, and it's a valid question. Like, do we think and foresee, because in a no code low code, that anyone can come in and can join in as a no code logic experience? What do you think? How you think that it can be done? So I think that everyone can quickly have value building with the Power Platform, because when you come into the Power Platform, you came from somewhere. So you may have some experience in a veterinarian's office. So you may not be the person who's going to be building those formulas on day one,
but you certainly are the person who can help define business requirements for an app that's going to help in a veterinarian's clinic, for example. And then from there, you're designing screens. And then from designing the screens, you're designing the logic. And sooner or later, you're going to be building out your own data models. And so I think that it's the barrier to entry is quite low, so that anyone can come in and get started and then explore and find their home on Power Platform. Dip their toe in the water, find out a few cool things that they like, and then find their path. Maybe they're a data nerd and they really like Power BI and data models. Maybe they really like the UI aspect of it, and CSS has been their enemy, so they can make Canvas apps without having to worry about CSS. Exactly. And I think I agree here that, you know, anyone having some business background, and I have seen in the past that people having no experience of coding are, you know, adding a lot of value to the using the Power Platform. And I think this makes sense that, you know, anyone can come in and can start using Power Platform from a low code perspective. Absolutely. I have zero interest in writing code. There are people who are good at that. There are people who enjoy that. That's not me. But I have made what I would like to think is a successful career with the Power Platform and not writing code at all. Exactly. Uh, One more question here. Like, okay, for tablets, and I think this is a basic question that how the Canvas app support compatibility is possible from a perspective of on the multiple interfaces like tablets, mobile, on the, you know, on our desktop. How your experience has been around it? Okay, so when we're building Canvas apps, we are used to having to make a choice. Are we going to build a Canvas app that's targeted to a phone experience or a Canvas app that's targeted toward a tablet experience? So effectively, do we want it to be horizontal or do we want it to be vertical? We've recently seen some functionality come out called containers, and those containers will allow your app to size as necessary for the device that is being used to consume the application. So yes, you can create a Canvas app for a tablet, but that app would also then work on a phone so that you don't have to worry about whether your users are using a tablet or a phone. And so those containers will allow that reflow to happen automatically. And they're fairly straightforward to use. It's a very intuitive name. It's a container. It holds the things. So your container is going to hold the assets for you, and then that container will resize as necessary. Okay, that's good. That's a good insight. And I think similar question that you just answered is the, you know, the capability of resizing and, you know, adjusting it to the as per the respective platforms where we are trying to use that. I Right. think this So question, if I start and say I'm making a phone app or I'm making a tablet app, no, I cannot change from one to the other after I've made that decision. So if you have an app that was made previously with one or the other, I don't know of any supported way to make that change. If you're starting new apps today forward, use a container so you don't have to worry about that problem. makes sense. Makes sense. So thank you, Ji. These are the pretty much all the questions that we had, and it was nice hearing out your session. And thank you for taking out time over, especially over your weekend. Oh, sure, no problem. Hope you guys continue to have a great event, and thank you for having me. Thank you. Stay safe. Bye. Bye bye. So everyone, we are unfortunately we don't have the participant for the next session. So most probably we will take a small break, and, you know, we'll be back again after 45 minutes. So have some coffee.
Hello, everyone. We are back, and our next speaker is ready. His name is Kamal, and hey, Kamal, can you hear me? Hi, Mr. Job. I can hear you. That's good. That's good. Can you share your screen, please? Yes. It should be shared now. Yep, I can. Yep, perfect. So the stage is Super. yours. I'm muting myself. Thanks a lot. um, वेलकम टू एवरीबॉडी। मैं ये सेशन हिंदी में प्रेजेंट करूँगा, और सेशन शुरू करने से पहले सारे ऑर्गेनाइजेशन कमिटी को और स्पॉन्सर्स को बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये इवेंट बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ है इस साल, और होप ये नेक्स्ट साल भी ऐसे ही कंटिन्यू होगा। मैं लास्ट ईयर भी प्रेजेंट किया था, और ये साल भी, सो इट्स वेरी नाइस फीलिंग फॉर मी। आप सब लोगों को मेरे सेशन में स्वागत है। मैं आज माइक्रोसॉफ्ट के मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस के बारे में बात करूंगा। और एक छोटा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में। मेरा नाम कमल है और मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ, बट ओरिजिनली इंडिया से हूँ। मैं एक डच रिटेल कंपनी में एचआर सोल्यूशन आर्किटेक्ट के रोल में काम करता हूँ अभी। और माइक्रोसॉफ्ट डायनामिक्स 365 के बारे में बहुत पैशनेट हूँ, एंड रिसेंटली मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस के बारे में बहुत इंटरेस्टेड हूँ और उसके बारे में सीख रहा हूँ। सो मैं भी ये डोमेन में नया हूँ, और द प्रोडक्ट्स भी एवॉल्व हो रहा है। सो सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा डिस्क्लेमर मेरे तरफ से। और आज के सेशन में बेसिक्स ऑफ मिक्स्ड रियलिटी के ऊपर बात करूंगा मैं, और ये मेरा कोशिश है अपना लर्निंग जर्नी अबाउट मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस के बारे में शेयर करने का। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ये फील्ड में, और उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। सो जो भी मैं ट्राई किया हूँ और सीखने का रिसोर्सेस है उसको शेयर करना चाहता हूँ ये सेशन में। और सिंस ये बहुत नया और एक्साइटिंग टॉपिक है, ये सेशन से मैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड रियलिटी को शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। और जो भी माइक्रोसॉफ्ट के लर्निंग रिसोर्सेस अवेलेबल है उसके बारे में बताऊंगा, और जो भी अदर कम्युनिटी मेंबर्स है जो ये टॉपिक में इंटरेस्टेड है, तो वो भी शेयर करूंगा एंड ऑफ द सेशन में। सो पहले हम लोग शुरू करते हैं क्या है ये मिक्स्ड रियलिटी क्या होता है। सो जब हम लोग एक स्पेक्ट्रम को कंसिडर करते हैं, एक साइड होगा फिजिकल वर्ल्ड जहाँ पे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली, एंड वो एक साइड में रहेगा, और टोटली डिजिटल वर्ल्ड जो है वो दूसरा साइड में रहेगा। सो वो जैसा यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। और पहले बिफोर मिक्स्ड रियलिटी समझने से हम लोग दो और कॉन्सेप्ट समझने का जरूरत पड़ेगा। सो एक है ऑगमेंटेड रियलिटी, और दूसरा है वर्चुअल रियलिटी। तो जब हम लोग कोई भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट को फिजिकल वर्ल्ड में सुपर इम्पोज करते हैं, देन उसको ऑगमेंटेड रियलिटी कह सकते हैं। सो जैसा ये स्क्रीनशॉट है, बट वेरी बेसिक एग्जांपल है गूगल मैप्स राउटिंग के लिए हम लोग जब कैमरा यूज करके जो एक्चुअल वर्ल्ड का द इमेज पे नेविगेशन इंस्ट्रक्शन को सुपर इम्पोज करते हैं। सो द बेसिक यूज ऑफ दैट, वो ऑगमेंटेड रियलिटी का एक एग्जांपल है।
बट ऑन द अदर हैंड जब हम लोग एक VR हेडसेट पहनते हैं और एक VR गेम खेलते हैं, देन हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड में इमर्सिव एक्सपीरियंस में डूब जाएंगे. सो इट्स जैसा ये है, सो एक आदमी कार का गेम खेल रहा है, बट वो पूरा ओपेक हेडसेट पहन के एक वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीटली डूब गया है. सो वो टोटल वर्चुअल रियलिटी होता है. और मिक्स्ड रियलिटी जो है वो ये दो एक्सट्रीम्स के बीच में आता है. सो फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड के बीच में जो आता है वो मिक्स्ड रियलिटी है. सो जहाँ पे हम लोग एक वर्चुअल इमर्सिव एक्सपीरियंस को एक फिजिकल वर्ल्ड में ला सकते हैं. सो जैसे डिवाइसेस यूज करके, जैसे होलोलेंस या कोई और मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस यूज करके, सो जब हम लोग एक वर्चुअल वर्ल्ड को सुपर इम्पोज ऑन अ फिजिकल वर्ल्ड, देन वो मिक्स्ड रियलिटी है. सो बेसिकली इट्स बिटवीन फिजिकल वर्ल्ड और डिजिटल वर्ल्ड है. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिक्स्ड रियलिटी का जरूरत क्या है, और हम लोग इसको कैसे यूज कर सकते हैं रियल लाइफ सिनारियो में. सो ऑलरेडी मिक्स्ड रियलिटी बहुत सालों से गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, और अभी एंटरप्राइज लेवल में एम्बेड होने के लिए शुरू हो रहा है, और उसका बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस भी है. और आज का सेशन में मैं 3 यूज केस को शेयर कर रहा हूँ. सो एक है, पहला वाला यूज केस है कोलैबोरेशन का. कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे जब हम लोग फिजिकली डिस्टेंस्ड है, अपने टीम से या जो भी ट्रेनिंग और कोलैबोरेशन के हिसाब से, सो अभी फिलहाल के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं टीम्स, वीडियो और ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का सॉल्यूशंस. बट हम लोग जब मिक्स्ड रियलिटी को यूज करके एक कोलैबोरेशन का एक्सपीरियंस जो है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं. जैसा एक वर्चुअल स्पेस में हम लोग एक मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, और वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं. सो ये इस तरफ का जो सॉल्यूशन है वो मिशन क्रिटिकल जॉब्स में बहुत हेल्पफुल होता है. जैसे एक यूज केस प्रेजेंट किया था माइक्रोसॉफ्ट ने, जिसमें बहुत सारे सर्जन्स हु वर प्रेजेंट, मतलब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ग्लोब में जो सर्जन्स थे, एक मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन को यूज करके एक फिजिकल लोकेशन में सर्जरी किया था, बट सारे एक्सपर्ट्स could actually be part of that surgery, just like how it will be physically possible. So ये collaboration का use case है. और ऐसा ही बहुत सारा यूजेस हो सकता है जहाँ पे एक वर्चुअल 3D ड्राइंग को हम लोग डिफरेंट लोकेशन से एक्सेस करके कॉमन अंडरस्टैंडिंग और कोलैबोरेटिव मोड में प्रेजेंट कर सकते हैं. सो वो भी कोलैबोरेशन का यूज केस है. और नेक्स्ट यूज केस है ट्रेनिंग का, जहाँ पे फॉर एग्जांपल डायनामिक्स 365 गाइड्स का सॉल्यूशन जो है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. और एक एग्जांपल होगा जब भी एक नया एम्प्लॉई फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ज्वाइन करते हैं, तब उनको इन पर्सन ट्रेनिंग के बदले मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन यूज करके ट्रेनिंग भी दे सकते हैं. और सपोज वो नए एम्प्लॉय को कुछ क्वेश्चंस है जो एक एक्सपर्ट जो सेम फिजिकल लोकेशन में नहीं है साथ में, उसके साथ डिस्कस करने का जरूरत है. देन मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस को यूज करके द एंटायर फिजिकल लोकेशन को शेयर कर सकते हैं इन अ वर्चुअल वे. और जो एक्सपर्ट है वो भी इजीली इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं. सो ऑन द जॉब ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है वो बहुत फ्लेक्सिबल बन जाएगा मिक्स्ड रियलिटी के साथ. और नंबर ऑफ एरर्स जो भी है वो
कम होता जाएगा, बिकॉज द इंस्ट्रक्शंस जो है वो एक्चुअल फिजिकल ऑब्जेक्ट में जो मशीनरी हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, उसके एक्चुअल मशीन पे सुपर इम्पोज हो जाता है जो इंस्ट्रक्शंस और ट्रेनिंग मटेरियल. सो ऑपरेटर्स और न्यू एम्प्लॉइज को बहुत इजीली समझने में आता है और एक्चुअली करेक्टली भी फॉलो भी कर सकते हैं. सो वो एक सेकंड यूज केस है जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आज. और लास्ट यूज केस जो है वो जियोस्पेशियल प्लानिंग का है. सो बेसिकली एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं. सपोज एक नया वेयर हाउस बना रहे हैं कोई भी लॉजिस्टिक्स कंपनी, और वो वेयर हाउस का पूरा डिजाइन बिफोर एक्चुअली गेटिंग एवरीथिंग डन एक होलोलेंस का और कोई भी मिक्स्ड रियलिटी डिवाइस यूज करके पूरा वर्चुअली इमेजिन करके यू कैन एक्चुअली प्लेस द डिजाइन इन द वेयर हाउस, और उसको रीअरेंज कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं. सो जो भी फिजिकल वर्ल्ड में यू कैन एक्चुअली सी हाउ एवरीथिंग इज गोइंग टू कम अप जब पूरा डिजाइन बन जाएगा. सो वो जियोस्पेशियल प्लानिंग का यूज केस है. एंड ये भी मतलब the amount of mistakes जो बन सकता है in scenarios like warehouse management or warehouse का design, or it can be simple like a manufacturing facilities में अगर हम लोग कुछ नए मशीनरी खरीद रहे हैं, so उसका layout कैसा बन सकता है अपना facility में, या जो भी वैसा scenarios है, वो पूरा amount of mistakes in those planning could be reduced drastically mixed reality use करके. और भी बहुत सारे यूजेस है मिक्स्ड रियलिटी का रियल वर्ल्ड सिनारियोस में, और आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं. जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है और माइक्रोसॉफ्ट का वेबसाइट में भी क्लियर इंफॉर्मेशन है, और कस्टमर स्टोरीज भी शेयर हुआ है मिक्स्ड रियलिटी के बारे में, और जैसा ये सोल्यूशन अभी फिलहाल के लिए यूज हो रहा है. बट फ्यूचर में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हो सकता है ये सॉल्यूशंस यूज करके जब हम लोग एंटरप्राइजेस में अडॉप्ट करते हैं. सो ये एक रीजनिंग स्लाइड और रीजनिंग थॉट था, इन टर्म्स ऑफ हम लोगों को मिक्स्ड रियलिटी का जरूरत क्या है और फ्यूचर क्या है मिक्स्ड रियलिटी को यूज करने का. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का एंटरप्राइज लेवल मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस क्या है, और हाउ वो कैसे इंटरेक्ट कर सकता है टू द वर्ल्ड ऑफ डायनामिक्स. सो मैं शेयर कर रहा हूँ दो सॉल्यूशंस का ओवरव्यू. सो एक है डायनामिक्स 365 गाइड्स. सो जो ट्रेनिंग पर्पस और न्यू एम्प्लॉई ऑनबोर्डिंग पर्पस में यूज कर सकते हैं हम लोग. सो मिक्स्ड रियलिटी ट्रेनिंग को यूज करके हम लोग the amount of time we need to get a new employee up to speed on a job उसको कम कर सकते हैं. So वो Dynamics 365 guides का solution है, और ये it integrates seamlessly with Dynamics and also with Teams, for example. So ये एक solution है, और दूसरा solution जो है वो Dynamics 365 Remote Assist है. ये solution basically क्या करता है, so एक expertise यूज करने का जो जियोग्राफिकल बैरियर है उसको रिमूव कर सकता है. प्रैक्टिकल सिनारियोस हम लोग सोच सकते हैं, समझो फील्ड सर्विस ऑटोमेशन, जहाँ पे आपका लेबर वर्कफोर्स like hundreds of people are working on, let's say, managing or maintaining let's say customer का just very basic scenario. जैसा मेरे घर में एक वाटर हीटर है. So field service agents जो है every 2 years वो लोग आके सर्विस करते हैं मेरा वाटर हीटर को. अगर समझो एक एक्सपर्ट है और hundreds of regular employees है जो समझो नॉर्मल वाटर हीटर का टेक्नोलॉजी समझ सकते हैं, वो hundreds of people है, और
एक एक्सपर्ट है जो 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 एक्सपर्टीज है एक कंपनी का वाटर हीटर में। अगर समझो एक बंदा आता है जो सर्विस करने के लिए मेरे घर में, और वो देखता है कुछ प्रॉब्लम है, और उसको वो प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग नहीं है, क्योंकि ये डिफरेंट मॉडल हो सकता है या डिफरेंट कंपनी का प्रोडक्ट हो सकता है, देन रादर देन कैंसिलिंग द अपॉइंटमेंट और किसी और को बेचने से, रिमोट असिस्ट यूज करके एक एक्सपर्ट को एंगेज कर सकता है, वो जो भी फील्ड टेक्नीशियन ऑन द स्पॉट है, और एक्सपर्ट जो भी है, he can be anywhere, so he can be in the same country or in a different country or anything like that, but remote assist will give the possibility to share the physical location and the problem at hand using a phone, and scanning or opening the camera and showing what is going on, and the expert can kind of put instructions on the screen to say okay what he needs to do. So वो रिमोट असिस्ट का सोल्यूशन है। अगेन ये भी टीम से इंटीग्रेटेड है, डायनामिक्स 365 स्टैक से इंटीग्रेटेड है। so these are the two solutions जो मैं शुरू किया एक्सप्लोर करने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए। so ये एक बेसिक स्टेपिंग स्टोन था मेरे लिए जब मैं मिक्स्ड रियलिटी के बारे में सोच रहा था, और जैसे माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट्स क्या है और कैसे वर्क होता है। सो बेसिकली ऑन द एंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट स्टैक, ये जो दो प्रोडक्ट है, ये in combination with Teams and Dynamics 365 as an overall solution, and physical devices like HoloLens, and any mobile devices and mobile apps kind of combine करके एक overall mixed reality real बन जाता है। और जैसे हम लोग कब और कैसे यूज कर सकते हैं डिपेंड्स ऑन कस्टमर सिनारियोस, और कितना एडवांटेज आ सकता है एक कॉम्बिनेशन में यूज करने का। बट अभी के लिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत इनिशियल स्टेजेस ऑफ अडॉप्शन में है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप and also a lot of learning to be done in this area, and जैसे मैं बोला, मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ ये फील्ड में, बट बहुत इंटरेस्टेड हूँ और आई एम ट्राइंग टू लर्न। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है सीखने के लिए मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस के बारे में, और हम लोग कैसे देख सकते हैं। सो अगर आप लोग अब तक ऑब्जर्व किया है, एक क्यूआर कोड है हर एक स्लाइड में। सो इफ यू स्कैन द क्यूआर कोड, वो आपको एक पाथ में ले जाएगा। सो बेसिकली जब मैं सीखने का शुरू किया था अबाउट मिक्स्ड रियलिटी, सो पहले मैं बेसिक समझा और इंफॉर्मेशन सर्च किया माइक्रोसॉफ्ट लर्न में जो भी अवेलेबल है, और उसके बाद एक ब्लॉग लिखा जिसमें मैं अपना लर्निंग जर्नी शेयर किया था। So वो blog है Zero to Hero, Dynamics 365 and Mixed Reality. So basically जो learning journey है वो हम लोग एक introduction से शुरू करते हैं, और दो paths है which is linked, जो दो products है उसके ऊपर linked है। So the पहला वाला path है Dynamics 365 guides का, जहाँ पे हम लोग समझते हैं ये गाइड्स क्या है फ्रॉम एडमिन पर्सपेक्टिव, और एक ऑथर कैसे करेंगे। सो हाउ कैन वी राइट अ ट्रेनिंग मैनुअल इन अ मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन, और हम लोग ऑपरेट कैसे कर सकते हैं, और उसका फीडबैक दे के कैसे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। सो ये एक लर्निंग पाथ है, और सारा इंफॉर्मेशन माइक्रोसॉफ्ट लर्न में अवेलेबल है। It's totally free, and you can do it at the self-paced method. So बहुत interesting learning path था मुझे when I went through the learning, and उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं है। So पूरा the entire learning path can be done, let's say at a easy mode, maybe in a week's time with the slow and easy learning. But if you're extremely passionate and wants to learn everything,
You can also do it in a day. But if you take the time, then it will also help kind of process the information लगा मुझे. But the other learning path जो है वो field service और remote assist solution का learning path है. But before, like I said, this is more applicable field service के scenarios में. So basically हम लोग मिक्स्ड रियलिटी का इंट्रोडक्शन लेके फिर हम लोग एक थोड़ा फील्ड सर्विस का मतलब क्या है और हम लोग कैसे फील्ड सर्विस को मिक्स्ड रियलिटी कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं फील्ड सर्विस डायमेंशन में समझने के लिए एक बैकग्राउंड मिलेगा फील्ड सर्विस का इंट्रोडक्शन से. और जो 2 लर्निंग मॉड्यूल्स है जस्ट टू अंडरस्टैंड हम लोग कैसे रिमोट असिस्ट कॉल्स कर सकते हैं, फील्ड टेक्नीशियंस कैसे हम रिमोट असिस्ट का कॉल्स कर सकते हैं. और द अदर लर्निंग मॉड्यूल वाज फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव. जो इंटीग्रेशन है डायनामिक्स 365 रिमोट असिस्ट और डायनामिक्स 365 फील्ड सर्विस का एप्लीकेशन से, तो वो कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं so that the data flow is seamless in the sense अगर कस्टमर ने एक टिकट लॉक किया और एक टेक्नीशियन वो टिकट को अटेंड कर रहा है और वो टिकट को लिंक करके एक रिमोट असिस्ट कॉल कैसे एस्टैब्लिश हो सकता है और सारा डेटा कैसे यू कैन सेव इन अ सीमलेस मैनर. So वो दूसरा लर्निंग पाथ है. So ये एक ब्लॉग लिखा हूँ और एक कलेक्शन भी बनाया हूँ माइक्रोसॉफ्ट लर्न में. So आप लोग यू कैन स्कैन द QR कोड और डायरेक्टली ये कलेक्शन को लेके जाएगा आपको. But it's interesting. Or the next step is of course to be more practical and have a HoloLens use करके एक guide को author करना and experience of mixed reality itself. But अभी मैं वो लेवल पे नहीं गया हूँ. But I know people जो जिसके पास एक HoloLens है और गाइड्स कैसे ऑर्डर कर सकते हैं. बट मेरा प्लान है टू विजिट माइक्रोसॉफ्ट एक्सपीरियंस सेंटर इन नेदरलैंड्स सम टाइम टू गेट अ एक्सपीरियंस ऑफ HoloLens and try some of this. But that's something I'm still trying to understand how to go about. So ये एक लर्निंग पाथ है जो मैं शेयर करना चाहता था. And आप ब्लॉग भी पढ़ सकते हैं. So you can also find the information there. So next जो है जैसे मैं बोला I know Katarina who's जो mixed reality solutions पे बहुत enthusiastic है, a lot more than me. And Katarina works for Microsoft also, and she's been in the world of mixed reality for a long time now, and she knows a lot about it. So वो भी 2 वीडियोस पब्लिश किए थे I think in a few months before. So वो भी आप लोग देख सकते हैं. You can find Katarina on LinkedIn. She's active with mixed reality and human resources domain specifically. But बहुत interesting videos है. एक में डायनामिक्स 365 गाइड्स यूज करने का और गाइड को ऑथर करने का वीडियो है. और दूसरा भी डायनामिक्स 365 गाइड्स का ही है, बट इट हैज अ डिफरेंट एक्सप्लेनेशन ऑफ कैसे यूज कर सकते हैं मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशन और वो HoloLens एंड द डिवाइस इंटरेक्शन का वीडियो है. Both interesting videos है. So आप you can search for Katarina and have a look at the videos. So जैसे मैं बोला एक पहला अटेम्प्ट है मेरे से टू शेयर व्हाट आई हैव लर्नड सो फार मिक्स्ड रियलिटी सॉल्यूशंस के बारे में. और मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ ये डोमेन में एंड मैं थोड़ा और रिसर्च कंटिन्यू करता हूँ और लर्निंग भी कंटिन्यू करता हूँ. एंड जैसे भी ये प्रोग्रेस होता है एंड व्हेन आई हैव अपॉर्चुनिटी टू एक्चुअली गेट अ डिवाइस एंड हैव
more hands-on experience मैं इसके बारे में blogs भी लिखने का interested हूँ और more information share करने का. So I have to work a bit more on this. But I wanted to share this क्योंकि ये बहुत interesting domain है at the moment, and I feel there's a lot of things that are going to happen in this domain, and it's important for all of us to know about this क्योंकि बहुत सारा customer scenarios होता है जिसमें बहुत problems को हम लोग mixed reality use करके solve कर सकते हैं, and having a basic understanding of the possibilities from Microsoft products like Dynamics 365 guides or remote assist or anything else, बहुत helpful होता है, and बहुत innovative solutions भी ला सकता है to customers, which are very easy to adopt, and also very effective, so to say. So ये मेरा last slide था और ये session में. But I'm very curious and passionate and interested to discuss or connect ये topic पे. So you can reach out to me on my blog or LinkedIn. So I have a YouTube channel, but it's focused on Dynamics 365 HR at the moment. And hopefully at some point in time, I want to do a video or something about mixed reality when I have the physical experience of HoloLens. So keeping my fingers crossed for it, and let's see how that goes with all the COVID restrictions being released. But otherwise, मैं Twitter पे भी थोड़ा बहुत active हूँ, so you can reach out to me on Twitter, or you can send me an email also, which is kamal@nocodehr.com. So thanks a lot. So मेरा सेशन ज्वाइन करने के लिए बहुत धन्यवाद, एंड मेरा हिंदी is not perfect, but hopefully I tried to manage, but I wanted to present in Hindi because I did it last time and I want to continue doing it also. So That's great. No, that's good, and I think we were able to understand it. I think it's relatively a new topic, so I don't see कि बहुत ज़्यादा questions को available है, but obviously as mentioned, people can coordinate with you over the Twitter and ask you again. But again, from a virtual reality perspective, I know people are more interested, and I think एक जो चीज़ बहुत common ही हमें future में नजर आती है वो collaboration पे आएगी. Virtual true. reality में जो collaboration में जो सबसे बड़ी चीज़ हमें और आपको नजर आएगी कि how people will be interacting, just like पहले Star Trek में हम देखते थे. Now Star Wars Yeah, type, like it will be like facing each other and talking, and we can see a whole our body and true. maybe experiencing that as well. But Yeah, let's I see. always compare this with Iron Man all the time. So Iron Man में जो भी present किया था, like how things work. So that was always my interesting factor for me. I'm a big fan of Iron Man movies, and this kind Good, of good. brings that to life. I feel always. Exactly. Yeah, That's good. That's good. So I think thank you again, Kamal, for your time. And see you again in future. And thank you again yeah, for especially over weekend spending some time with us. It was really helpful and definitely. informative. Definitely. Thanks a lot, Mr. Job. Amazing work on the organization and all the work that all of you are doing. Thanks for the opportunity. And when I compare it with last time, this is a totally different experience this year with the tools that you're using for the Exactly. event. And it's totally amazing this time. So thanks a lot for the Thank you. opportunity again. Thank you. Thank you, Kamal. Thank you, everyone. Yeah. So, Bye. bye. Bye bye. So that was Kamal, who was trying to explain about virtual reality and its future. Uh, with this, we come to an end to our Power Platform track. Like still, some of our finance and operation tracks are still live. वहाँ पे cut sessions are in progress हैं, so please feel free to join there. And tomorrow we will come back again 11:15 a.m. Pakistan time to proceed with the rest of the Power Platform session. So take care, good care of yourself, everyone, and stay safe. Bye.